तो मेरा ट्रिक था आपको डिस करवाने की। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य इधर ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पीड्य श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब आप भगवत धाम जाएंगे ना तो मेरे को भी याद करना। पहले कृष्णा प्रभु ने मेरे को जब करवाया था एक्स्ट्रा। आज वैष्णव कैलेंडर के अनुसार बहुत स्पेशल दिन है। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर शिष्य रहे श्री जयानंद ठाकुर, आज उनका तिरोभाव दिवस है। आपने नाम सुना है जयानंद ठाकुर का? कितने भक्तों ने सुना उनके बारे में? हरि बोल बोलिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ, तो जयानंद ठाकुर जो है ये वो भक्त हैं जिन्होंने जो इस्कॉन का पहला रथ ऑर्गेनाइज किया, रथ यात्रा का। उन्होंने जगन्नाथ जी को पॉपुलर किया पूरे भारत में नहीं, पूरे अमेरिका में भी। सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा में दिखते हैं ना, बहुत फेमस डांस कर रहे हैं कीर्तन में, तो उसका रथ जयानंद ठाकुर ने डिजाइन किया। तो उनके बारे में थोड़ा मैं लास्ट में आधा घंटा बोलूंगा। शुरुआत करेंगे भागवत के जो हम 7वां स्कंद पढ़ रहे थे, 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का आज 32वां श्लोक है, 32। ये आप इनके साथ शेयर करेंगे। क्या करते हैं, पहले श्लोक गाते हैं फिर ट्रांसलेशन पर। एवं सॉरी कौन सा 32 है 33? 32 हरि बोलो। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्ते ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामे साधु मान्ये सर्वेषु भूतेषु भगवानस्त ईश्वरः भूतानि मनसा कामयस्त साधु मानये। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को उनके अंतर्यामी स्वरूप में
परमात्मा की तरह सदैव स्मरण करें जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। इस प्रकार उस जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, भगवान को कौन से रूप को याद करना है? अंतर्यामी परमात्मा, परमात्मा जैसे। और भगवान कहाँ रहते हैं, किसके हृदय में? मानव के, पशु किसके हृदय में रहते हैं? प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। हाँ, इस प्रकार सबका आदर करना चाहिए। ये कौन सा गीता में कौन सा श्लोक है? भगवान बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूपाणि मायया। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं कि सबके हृदय भगवान रहते हैं। और एक और श्लोक में भगवान बोलते हैं अपने आप के बारे में, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, बोलो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत वेद विवेद चाहम। अनुवाद है कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ और मैं इस वेदों का रचयिता मैं हूँ, वेदों का अंतिम लक्ष्य मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, रचयिता भी मैं हूँ। तो सबके हृदय में भगवान है और सबको आदर देना चाहिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। आपको ना भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया है, शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक, हर एक श्लोक के ऊपर 3-3 भजन लिखे। चैतो दर्पण मार्जनों पे 2-3 लिखे, फिर न धनम न जन्म पे 2-3 श्लोक लिखे। न धनम न जन्म पे कौन सा श्लोक लिखा मालूम है? श्लोक नहीं, सॉरी, श्लोक के ऊपर भजन लिखा। उसमें एक भजन है, वो बोलते हैं प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागे देह सुख विद्या धन जन, स्वर्ग न मागे, स्वर्ग न मागे, निज निज गुण दोषे जे जे जन्म पाया, जन्म जन्म तव नाम गुण गाया। बोलने की प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे को न मांगे देह सुख, देह सुख नहीं चाहिए। हाँ, मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि रूम में एसी होना ही चाहिए। हाँ, देह सुख नहीं चाहिए, या मुझे एकदम कारपेट, रेड कारपेट वेलकम होना चाहिए, या मेरे पास क्या बोलते हैं उसको 5 करोड़ का बंगला होना चाहिए। तो कुछ भी मिल जाए, या 1 BHK या 2 HK 2 BHK, HK होना चाहिए। HK मतलब हरे कृष्ण। एक डिवोटी मजाक बोलते हैं 1 BHK में 16 माला, 2 BHK में 32 माला। तो भक्त को क्या चाहिए? बस रहने के लिए छोटी जगह मिल जाए, प्रसाद मिल जाए और हरे कृष्णा मंत्र। एक भक्त है वो स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, सब बराबर है। तो एक और श्लोक है, त्रिनादपि सुनीचेन, बोलिए सरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इससे ये जो आपने पहले भजन गाया ना, प्रभु तव पद युगे, ये किसके ऊपर लिखा गया? कौन से शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों में से किसी एक के ऊपर तात्पर्य समझाने के लिखा गया? कौन से भजन, कौन से श्लोक पे हो सकता है? न धनम न जनम, न धनम न जनम न सुंदरी कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे सुखी त्वयि। कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तो ऐसे त्रिनादपि सुनीचेन का भी एक भजन लिखे, आप मेरे पीछे बोलिए। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहारा, श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तोहारा, आगे क्या?
परम यतन ताहे लाभ अधिकार। बोल रहे हैं श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस त्योहार, क्या मतलब हुआ इसका? फिलहाल तो गणेश प्रभु क्या मीनिंग हुआ? श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस त्योहार, यदि अगर आपके मन में कृष्ण कीर्तन करने की इच्छा है, परम यतन ताहे लाभ अधिकार, मतलब परम यतन से वो लाभ मिलता है। जैसे स्टूडेंट मेहनत करता है, एमबीए ना, आपको कौन सा एमबीए? महाप्रभु भक्त एसोसिएट, एमबीए करने को ना महाप्रभु भक्त। अगर जपा करते हो साथ में, और जपा नहीं करते, भक्ति नहीं करते, एमबीए करते, महाभयानक असुर। दो मीनिंग है, डिपेंड करते हैं। कोई अगर एमबीए भक्त बन जाए तो महाप्रभु का एसोसिएट बन जाता है, भक्त नहीं बने तो प्यूटिन और ये सब जो आजकल के बदमाश है, चाहे वो सब देश में, ऐसा नहीं मैं किसी देश का साइड ले। तो कृष्ण का जो भक्त नहीं है, कितना भी क्वालिफाइड हो, उसको असुर बोला जाता है, कृष्ण की सत्ता को नहीं स्वीकार। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये श्लोक में बोलते हैं, त्रिनादपि सुनी चेना, बोलिए, गरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा। अभी इस श्लोक के ऊपर उन्होंने एक भजन लिखा है, वो बोलते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस त्योहार, परम यतन ताहे लाभ अधिकार। अगर आप कृष्ण कीर्तन करना चाहते हैं तो प्रयास से आपको मिल सकता है। तो कैसे? सर्व हृदय कृष्ण जानी, ये जानते हो कि कृष्ण सबके हृदय में है, सबको आदर देना। अगर प्रश्न उठता है, मैं नए सीनियर डिवोटी को आदर करता हूँ, महाराज को आदर करता हूँ, प्रॉपर डिसेबल करता हूँ, इनको क्यों करूँ? गणेश जी को, ये तो भक्ति में 1 ही साल हुआ, या राग जगन्नाथ प्रभु है, इनको हो गए 15 साल हुआ आके, तो भी मेरे बेटे के छोटे भाई के समान है, उनको मुझे प्रणाम करना चाहिए। क्या क्या करेक्ट है? तो सीनियर ने जूनियर को करना चाहिए, जूनियर ने सीनियर को करना चाहिए, क्या करेक्ट है? हाँ, लेकिन सीनियर ने भी बदले में करना चाहिए, फिजिकली नहीं तो मन में। अगर सीनियर सोचता है कि मैं सीनियर हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिक्षा गुरु हूँ, इसका पतन हो जाता है। तो खाली सिंसियर हो गया, सीनियर और सिंसियर बहुत साल से। तो एक्चुअली कनेक्टेड रहना भगवान से, और रियल सीनियरिटी भगवान के साथ अपनी चेतना को जोड़ दे। तो बोलते हैं ठाकुर नेक्स्ट में बोलते हैं, सर्वे सर्वे जीवे कृष्णेराधिष्ठाने, बोलिए, सर्वे जीवे जानी, सर्वे जीवे जानी। हाँ, ये जान लेना कि कृष्ण अधिष्ठान, ये जो हृदय है वो कृष्ण का निवास है, सबसे मित्रता हो सकती है अगर ये पता चल जाए कि कृष्ण सबके हृदय। तो अभी मैं कैसे सीनियर को प्रणाम करता हूँ, मैं आपको, यहाँ 15 साल हुए, फिर कुणाल को प्रणाम क्यों नहीं करता? अरे वो तो मेरे बच्चे के समान। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि कृष्ण दोनों के हृदय में। जब किसी को आदर कर रहे होते हैं तो आदर किसको जाता है? कृष्ण। कृष्ण 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 जब प्रसन्न हो जाते हैं, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। यही बात रूपा तात्पर्य बता रहे। हमारे राज जगन्नाथ प्रभु, आप तात्पर्य पढ़ेंगे थोड़ा, 2-3 लाइन। चश्मा नहीं है, 1-2 लाइन आवाज थोड़ा सही हो, पढ़ेंगे एक पहले तात्पर्य। हरि सर्वेषु, कभी इनको भी दिखाई, हरि सर्वेषु भूतेषु। कभी कभी ढोंगी लोग इस कथन को ठीक से नहीं समझने के कारण झूठा निष्कर्ष निकालते हैं कि चूंकि भगवान प्रत्येक जीव में स्थित है, अतः प्रत्येक जीव हरि है। ये क्या मीनिंग हुआ, ऐसा समझ में आया? यस, कौन बताएगा? नरेश क्या है? नाथ प्राण प्रभु, नरेश प्रभु पहले आप बताइए, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि भगवान जो 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 सच्चे भक्त नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि सब जीव भगवान के बराबर है। हाँ, सब जीव भगवान, क्यों? भगवान सबके अंदर है, अब तो सब वो भगवान है। के अंदर भगवान है, लेकिन ये सोचना ब्रह्मांड ही भगवान है, वो गलत।
नेक्स्ट लाइन, ऐसे मूर्ख लोग प्रत्येक शरीर में स्थित और परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं पाते। आत्मा तो जीव है और परमात्मा भगवान है। ये तो जीव परमात्मा है या परमेश्वर से भिन्न है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैं जीव और भगवान एक ही शरीर में से दोनों एक ही हो गए नहीं? जीव और भगवान एक हैं कि अलग है? अलग अलग। गुण में समान है तो मात्रा में भिन्न। हाँ, यस, राग जगन्नाथ प्रभु और नंद प्राण प्रभु सेम पॉइंट बता रहे हैं कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, एक खट्टा मीठा फल खाता है ना, क्रैक जैक की तरह। अच्छा था, क्रैक जैक बिस्किट खाते हैं कभी? कभी नहीं, देखा भी नहीं। अरे देखा और जीत के रखा, खाया नहीं। तो वो हम ये मटीरियल वर्ल्ड में एंजॉय कर रहे हैं मीठे फल, और कभी दुख आ रहा है, विपत्ति आ रही है, कड़वे फल। और परमात्मा कौन से फल खाते हैं, मीठे या कड़वे? भगवान खाली फिटनेस है, देखते हैं। तो तात्पर्य पूरा कर लेंगे। आत्मा तो जीव, आत्मा जीव है और परमात्मा भगवान है, किंतु जीव पर परमात्मा परमेश्वर से भिन्न है। बहु हरि सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है कि हरि परमात्मा के रूप में स्थित है, आत्मा के रूप में नहीं। यद्यपि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक जीव को आदर देने का अर्थ है प्रत्येक जीव में स्थित परमात्मा का आदर करना। प्रत्येक जीव को परमात्मा नहीं मानना चाहिए। कभी कभी ढोंगी लोग जीव को दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण, ये नारायण, ये नारायण जैसे नाम प्रदान करते हैं। वैसे हमें यह समझ आना चाहिए कि यद्यपि नारायण प्रत्येक जीव के हृदय विराजमान है, तो जीव कभी नारायण नहीं बन सकता। कितने साल के बाद जीव भगवान बन जाता है प्रदीप प्रभु? कितने साल के बाद? भगवान नहीं बन, कभी नहीं बनता। हाँ, कभी नहीं बन। 18 वर्ड ट्रिकी। ओके, अभी एक श्लोक हो गया और एक श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 33। हाँ, एवं मिल गया? प्रदीप प्रभु मिला आपको? श्रीधर प्रभु या श्रीराम प्रभु कोई है क्या? ओके। एवं निर्जित षड्वर्गे भक्तिरीश्वरे क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेव भगवती वासुदेवे भगवती दया संलभ्यते रति। आप पढ़ेंगे गणेश आगे आगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे। इन प्रयुक्त कार्य द्वारा मनुष्य शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह भगवान प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। हाँ, फिर उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्म। ओके, प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशयाते वेदे गाये यहाँ रचरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जानार। ये गुरु की कृपा से ज्ञान समझ में आता है। गुरु की कृपा बहुत इम्पोर्टेंट। अभी परपोर्ट पढ़ेंगे इसमें। कौन सा 34 है ना? पास में है। किताब से पढ़ लो।
जैसे कि श्लोक 30-31 में उल्लेख किया जा चुका है, मनुष्य का पहला काम है कि वह भगवान के प्रतिनिधि गुरु की सेवा प्रारंभ करने के लिए उनके पास पहुंचे। प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि छोटे बालक को कौमार आचरित प्रारंभ से ही गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करने की इच्छा दी जाती। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसना दान्तु तो गुरु हितम। भागवतम 7.12.1 यह आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात है। गुरुपादाश्रय साधु वर्तमान वर्ततम संदर्भ पृच्छ गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए शिष्य भक्ति प्राप्त करता है और संपत्ति से अनासक्त हो जाता है। उसके पास जो कुछ होता है उसे वह अपने गुरु को अर्पित कर देता है और वह उसे श्रवण कीर्तन विष्णु के प्रवृत्त करता है और शिष्य दृढ़ता पूर्वक आज्ञा पालन करके अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखता है। फिर अपनी शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करके वह धीरे धीरे भगवान का प्रेमी बन जाता है, जैसे कि श्री रूप गोस्वामी ने पृष्ठ किया था। आदर श्रद्धा तथा साधु संग, इस प्रकार मनुष्य जीवन पूर्ण बन जाता है और कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में वह आनंद को प्राप्त होता है और भाव तथा अनुभव की अनुभूति करता है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है। आवाज आ रही थी क्या नरेश्वर प्रभु? सुनाई पड़ रहा था? आ रही थी। ये हमारे होने वाले भविष्य वर्तमान कुणाल महाराज। आगे का नहीं बताऊंगा, कहाँ जाना। यस बोले आज के दिन एक्चुअली हमारा संन्यास नरसिंह चतुर्दशी के दिन लिया था, लेकिन आज सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट मतलब आज फीस्ट होगा, स्पेशल फीस्ट। मेरे को थोड़ा शायद जाना पड़ेगा, मदर का पैर का फ्रैक्चर। ओके प्रदीप प्रभु, आप श्रीधर प्रभु आप वो करेंगे ना 10 बजे के बाद महाराज का लेक्चर शुरू होगा, तो उसमें ये करेंगे ना स्पॉटलाइट यूट्यूब से शेयर करेंगे, क्योंकि आज वो जयानंद प्रभु के बारे में भी आधा घंटा बोलना है। तो मैं हम लोग दो तीन श्लोक और पढ़ लेंगे। तभी कुणाल प्रभु जी ने पढ़ा, समझ में आया सबको क्या बताया गया है? कौन से शत्रु हैं हमारे? 6 शत्रु। हाँ, इतने सालों से आए, दोस्ती हो गई उनके साथ, सबके नाम याद हो गए, जैसे कि परम दोस्त होते हैं ना। तो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर का दमन करने में समर्थ होता है और फिर भगवान की सेवा कर सकता है। तो जो तात्पर्य में मेन बात क्या बताई गई है कि गुरु और शास्त्र के आदेशों का पालन करना है। ओबीडियंस टू गुरु फर्स्ट प्रेरिक्विजिट है स्पिरिचुअल लाइफ में, गुरु की आज्ञा पालन करना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते को रिय ऐक्य आरण मने आशा। गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से वाणी निकलती है, उसको चित्त में धारण करना है और कोई आशा नहीं करना, बस। श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। से सब आशा जो है पूरी हो जाती है। तो ये दूसरी बात देखिए, लास्ट जो रूप गोस्वामी का प्रभु जी ने पढ़ा, अदो श्रद्धा ततो साधु संग, किसी को मालूम है क्या है ये? याद है प्रदीप प्रभु, आपको याद है पूरा श्लोक? हाँ यस प्रभु जी। अदो श्रद्धा तथा साधु संग तब भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम।
जो जहाँ तक पहुंचे वही स्टेज तक याद है। प्रभु मेरे को ज्यादा श्रद्धा तो साधु संग याद है, प्रभु जी को प्रेम तक याद है। आप पहुंचे कहाँ तक, प्रेम तक पहुंचे कि भाव तक पहुंचे? नहीं प्रभु जी, पहुंचा नहीं। ओके, तो यहाँ पे जब प्रभु जी ने बताया अदो श्रद्धा, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? आज जगन्नाथ प्रभु, अदो श्रद्धा का मीनिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप है श्रद्धा। तो साधु संग, इसका अर्थ क्या है गणेश प्रभु? साधु का संग करना। और इसके बाद क्या होता है? अदो श्रद्धा साधु संग ततो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? किसी को मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या है? श्लोक याद किया है कभी? अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया। नेक्स्ट क्या है? भोजन नहीं, भोजन तो हो गया, अभी लिया ना गरम गरम। हाँ, भजन, भजन क्रिया। भजन और भोजन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है राग जगन्नाथ को? ये दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर भोजन नहीं होगा तो भजन कितनी देर चलेगा? जैसे कोई मिठाई इंपॉर्टेंट है कि मिठाई का डब्बा इंपॉर्टेंट? मिठाई इंपॉर्टेंट, लेकिन डब्बा भी जरूरी है, तो हाथ में गिर जाएगा, कितना उठाओगे हाथ में? तो याद आ गया थोड़ा प्रसाद राधा गोपीनाथ टेम्पल का आया था। तो ये स्टेजेस है, अदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। उससे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या? अनर्थ निवृत्त, जब अनवांटेड हैबिट्स चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे निष्ठा, फिर भाव, महाभाव और प्रेम। ओके, कोई प्रश्न है किसी को? रुचि। अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? प्रदीप प्रभु आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन? निशम्य कर्माणि गुणान्तुल्याना वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि ताहितार्शो पुलकादृशद्गत् उद्दायति रोतिर्निष्ठति। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है, और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसे मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हो गया तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। हरि बोल, थैंक यू। आगे से ना जो पढ़े उसको स्पॉटलाइट करना चाहिए ना, तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रभु जी ने क्या बताया? ये भौतिक कलमश से मुक्त होने के बाद भक्ति के पद पर आसन होता है, मुक्त हो जाता है। भगवान के विभिन्न लीलाओं के लिए तुरंत सुनता है, उसके शरीर में रोमांच हो जाता है। यही पढ़ा ना? हरि बोल। यस प्रभु, यही पढ़ा। 34 ना? 34 का। इसमें भक्त के लक्षण बताए गए। चैतन्य चरितामृत में कौन सा श्लोक है ये चीज बताते हैं? कब वो स्टेज आएगा या मेरे आंखों में आंसू आने लगेंगे? कौन सा श्लोक है वो? नहीं। एनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर्निशितम बपू कदा। तो समय कब आएगा जब मेरे आंखों में आंसू आने लगेंगे?
उत्पन्न होने लगेगा। तो इसका तात्पर्य पढ़ा आपने? तात्पर्य भगवान के कार्यकलाप असामान्य है। कौन सा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद? देखिए, भगवान के कार्य असाधारण, उसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं? पहला, भगवान रामचंद्र ने सेतु बंद, समुद्र के पर पुल बनाने का असामान्य कार्य किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत धारण किया। वे असामान्य कार्य है, क्योंकि मूर्ख और धूर्त दिव्य पद को प्राप्त नहीं होते, अतः वे भगवान के असामान्य कार्यों को पौराणिक या काल्पनिक मानते हैं। तो जब मुक्त व्यक्ति भक्त भगवान के असामान्य कार्य को सुनते हैं, तुरंत आनंद विभोर होते हैं, नाचने लगते हैं और प्रसन्न होकर रोने लगते हैं। भक्त और अभक्त में अंतर है। जो भक्त है वो श्रद्धा की आंखों से भगवान की को देख सकते, अभक्त पढ़ते भी हैं तो सुनते भी हैं तो विश्वास नहीं करते। तो ये रामचंद्र की लीला के बारे में किसको मालूम है? एक ब्रिज बनाया था, कौन उसके आर्किटेक्ट कौन से? हाँ, वानर सेना में 2 वानर थे, नल और नील। याद है कि सेना में थे ना, वो गिलहरी थे, छोटे से। हनुमान थे, पता नहीं, हनुमान नहीं बन सकता, हनुमान के सेवक बन सकते। नंद प्राण प्रभु जी, आप कौन थे उसमें सेना में? गिलहरी। गिलहरी, यस। कम से कम आप करेक्ट साइड में थे, मैं रावण के साइड में। हनुमान जी के थप्पड़ से मर गया, फिर अगला जन्म वैष्णव परिवार में आ गया। कितना अच्छा होगा नहीं अगर हनुमान थप्पड़ मारते हैं। हनुमान किसको थप्पड़ मारते हैं? क्या रामायण में कहानी आती है, किसको थप्पड़ मारते हैं हनुमान जी? लंकिनी को मारते हैं प्रभु सीता। माता जी को पूरा रामायण याद है। लंकिनी हनुमान जी जब जा रहे थे सीता का पता लगाने के लिए, हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी वहाँ पे हमारा राज जगन्नाथ प्रभु बता रहे हैं कि उसको बताया गया था कि जब थप्पड़ मारने से वो घायल हो जाएगी, समझना कि लंका नाश हुआ। एक्चुअली हाँ, वो लंकिनी के साथ बॉडीगार्ड्स भी थे, उसमें से एक आप थे रात जगह। हम दोनों रावण के साइड, इसलिए अभी इस्कॉन में आ गए। नहीं हो सकता है मैं तो ब्रह्मचारी वेश में हूँ और भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, हो सकता है पूरे जन्म में हम क्या रहे क्या पता नहीं। एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद हमारी क्या क्वालिफिकेशन थी, हमको कैसे इस्कॉन प्रवेश मिल गया चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में? प्रभुपाद क्या बोले कि आप ब्राह्मण परिवार से थे, आप बहुत महात्मा थे। प्रभुपाद है प्रभु जी क्या बोला? कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। मैंने आपकी क्वालिफिकेशन बनाई। आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस मैंने अपने दृष्टि से कर दिया। जैसे 2 महात्मा बैठे, कुणाल प्रभु और गणेश प्रभु, हम लोग जब कर रहे थे आराम से, ये दोनों जब में इनका मन नहीं लग रहा था, नीचे घूमने गए, वहां पे महाराज के दर्शन हो गए। मैं बैठा, अच्छा नहीं हुई मुझे, इससे मालूम पड़ा कि जगह ही मदाई को ज्यादा कृपा मिलती है। आपको स्वीकार करना होगा, मैं जगह ही मदाई। कल भी नहीं, कल आप रोज जब करके बाहर निकले, आज कल महाराज मिले, परसों प्रभुपाद मिलेंगे, यहाँ टेम्पल प्रोग्राम छोड़ के कभी कभी लॉटरी लग जाती है। एक आदमी पानी में गिरा, डूबने लगा था, उसके हाथ में उसको हीरा मिल गया और बाहर आ गया। तो अगला आदमी बोला कैसे रोज डुबकी लगाएंगे? ऐसा नहीं, बाई चांस मिले, कृपा मिल जाती। तो जब हनुमान जी जा रहे थे समुद्र पार करने के लिए, समुद्र पार कर जब पहले हनुमान का पता लगाने के लिए जा रहे थे, उस समय रास्ते में 3 बाधाएं आ गई। कौन कौन सी बाधाएं थी? पहला मैनाक पर्वत आता है। हाँ, पहले तो मैनाक पर्वत आ गया। नंद प्राण प्रभु जी पर्वत के ऊपर रह रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बांदर जा रहा है, बोले हरि बोल, पर्वत को ऊंचा किया। हनुमान जी बोले मैं जल्दी में हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। तो बोले नहीं, आप थोड़ी सेवा स्वीकार करें। तो हनुमान जी आए, पैर रखा और क्या खा के गए वहां से? पैर रखते फिर वो इडली पैक करने नहीं गए थे, वो ये नहीं कि गरम मुझे खिचड़ी मिलना चाहिए। हनुमान जी ने पैर रखा, तुरंत चल गए, जस्ट रिस्पेक्ट करने। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल क्या है उनको, हनुमान जी को? सुरसा, सुरसा।
सुरसा ये सांपों की माता थी, लेकिन एक्चुअली ये अच्छे परिवार से, मतलब सांपों की माता माना गया, लेकिन वो देवताओं कैटेगरी में। तो सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आई। उसने बड़ा विशाल रूप धारण किया। कितना? 10 योजन, 10 योजन माइल, 120 किलोमीटर। यहाँ से बॉम्बे 90 है, उससे भी ज्यादा। हम सुनते हैं कि माताओं का मुंह बड़ा होता है, इतना बड़ा मुंह किसी का नहीं होगा। नहीं, अगर 120 किलोमीटर लंबा मुंह हुआ, प्रदीप प्रभु 120 किलोमीटर लंबा, यानी कितना? आपके बैंगलोर से लेकर टुमकुर तक है। हरे कृष्ण, वहाँ ट्रेवल करना आसान है। आप मुंह के अंदर जाओ और मुंह बंद कर देंगे। तो हनुमान जी, उसने बोला रुक जाओ बंदर, जो भी चीज यहाँ से गुजरती है मेरे मुंह से होके जाती है। हनुमान जी बोले माता जी, मेरी अर्जेंट सेवा में करके वापस लौट के आता। नहीं, आप नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले ठीक है, मैं भी कम नहीं हूँ। 20 योजन बन गए। सुरसा 30 योजन, हनुमान जी 40 और सुरसा 50 योजन। एक योजन कितना किलोमीटर बताया? कितना माइल? 8 माइल। 50 योजन कितना हो गया? 400 माइल, 600 किलोमीटर। फिर हनुमान जी लास्ट में क्या किए? छोटे बन के मच्छर इधर जाके अंदर जाके बाहर आ गए। बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा नहीं, हरे रामा। हनुमान जी कृष्ण के भक्त नहीं है, राम के भक्त। वो है ना कहानी, एक डिवोटी की परीक्षा ली जाती है कि अब राम को छोड़कर कृष्ण की भक्ति करो। मुरारी, कौन परीक्षा लेते हैं? मुरारी गुप्ता की। और भी एक भक्त की परीक्षा ली जाती है गौरीला। आप मत बोलिए कि आप तो सब टीचर सब जानते। यस, हमारे जूम ग्रुप में को बताएगा, एक भक्त भगवान परीक्षा लेते हैं। अनुपम का, सनातन गोस्वामी के भाई अनुपम। हाँ अनुपम, यस अनुपम। कौन? शिवजी पूजा माता जी बोल रहे हैं? हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको रामायण अच्छा है, राघव लीला में अच्छा इंटरेस्ट है। तो अनुपम की परीक्षा कौन लेते हैं? हरि बोल, इधर देखिए, उसमें लिखा हुआ आंसर। इट इज नॉट योर फोन, इट इज आई फोन, नॉट माई फोन। यस, प्रदीप प्रभु बताइए, अनुपम की परीक्षा कौन लेता है? जी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। हाँ, सनातन रूप गोस्वामी बोलते हैं चलो, हाँ रामायण छोड़ के आ जाओ, यहाँ पे जीवी में आ जाओ, अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पता नहीं क्योंकि टेम्पल में होता है, कॉम्पिटिशन होता है, एक डिवोटी को पुल करके दूसरे में ले जाते हैं ना। आप राम की भक्ति छोड़ दो, कृष्ण की भक्ति करो, तो तुरंत तो मान जाते हैं कि नहीं मानते? तो बोलते हैं ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। तो घर में आके बहुत कोशिश करते हैं कि राम को भूल जाएं, लेकिन नहीं भूल। धन्य है। अरे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। ओके, जस्ट मैंने शुरू किया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, इसमें ऐसे ऐसे कर लेते हैं। क्या प्रभुपाद के फोटो? आप इधर आ जाओ माता जी, आप इधर बैठिए, ये इधर आ जाओ, आप इधर, आप इधर, क्योंकि उधर आवाज नहीं जाएगी। आप इधर, चैतन्य प्रभु इधर आ जाओ, आप बैठ, कुणाल बैठे, आइए माता। मैं वेट ही कर रहा था, मैंने अभी एक्चुअली श्लोक शुरू नहीं किया, एक ही श्लोक गाया। तब से हमारे मेन कस्टमर तो आए नहीं। मैं समझ गया, लेकिन ये आप थोड़े भोले हो वैसे ना। 10 मतलब 11 तक सो भी, 10 हमारा भी खाली करना है। हाँ, एक्चुअली महाराज का लेक्चर 12 बजे के बाद है, बाकी लोगों का होगा। कोई बात, प्रसाद लिया आप लोगों? प्रसाद लिया? एक बार प्रसाद हो जाए और फिर हरी कथा हो जाए तो अच्छा, भजन और भोजन। आज माँ के दर्शन हुए कि नहीं? आपका भाग्य, रोज दर्शन हो जाए। ओके, तो मैं रामायण की कहानी बता रहा था। कौन किसके बारे में बता रहा था? गौर लीला में कौन भक्त थे? वो अनुपम।
अनुपम की परीक्षा लेते हैं और अनुपम को बोलते हैं कि आप कृष्ण भक्ति करो। यस कुणाल प्रभु, तो तुरंत वो कृष्ण भक्ति करने लगते हैं कि नहीं करते? हाँ, राम जगन्नाथ को आंसर देंगे। हाँ, तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो राम को भूल नहीं पाते। धन्य है वो सेवक जो प्रभु को नहीं त्यागे, और धन्य है वो प्रभु जो सेवक को नहीं त्यागे। दुर्दैव से अगर सेवक कहीं चला भी जाता है तो प्रभु उसको कैसे लाते हैं? हाँ, शिखा पकड़े। आपके है कि नहीं शिखा? देखो पीछे, हाँ शिखा होनी चाहिए, गुरु खींच कर लेके आ सकते। फिर हनुमान जी और आगे बढ़ रहे होते हैं, सुरसा को तो पार कर लिया, और नेक्स्ट ऑब्स्टेकल क्या आता है? नेक्स्ट ऑब्स्टेकल सिंह का। सिंह का। आप वो लंकिनी की साइड में थे ना, लंकिनी बार बार याद आ रही। हम लोग रामायण का बीच में डिस्कस कर रहे हैं। हनुमान जी अब जाते हैं, थोड़ी सा फोन को ना ऑफ है, फोन बजा नहीं, पर नेक्स्ट टाइम तो हिंदी में डाल देंगे हमेशा के लिए। बहुत डिस्टर्ब होता है, तो फ्लाइट मोड में डालो या साइलेंट मोड में। तो हनुमान जी सेकेंड टाइम जब हनुमान जब जा रहे, सेकेंड ऑब्स्टेकल था सिंह का, और थर्ड ऑब्स्टेकल सिंह का थर्ड था। सिंह का किस रूप में आती है? सिंह का एक राक्षसी होती है। कैसे हनुमान जी को कैसे रोकते हैं? हनुमान जी कैसे रोकते हैं? उसको क्या सिद्धि होती है सिंह के पास? बोलो जोर से बोलो। हाँ, इंग्लिश में नया शब्द आ गया, हिंदी में शैडो। तो छाया बोलिए, वो छाया पकड़ लेते हैं। जैसे अगर आप कोई टू व्हीलर पे जा रहे हैं, एक्टिवा पे, अगर सिंह ने पकड़ लिया ना, पूरा दिन करते रहेंगे, चल ही नहीं पाएगा। हनुमान जी कैसे उसका वध करते हैं? हनुमान जी पहले समझ नहीं पाते कि मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, चल ही नहीं रही गाड़ी। एक्सीलेटर दबाते जा रहे हैं, तो गाड़ी वहीं पे खड़ी है, तो गुस्सा आ जाता है उनको। फिर देखते तो नीचे राक्षसी है, तो मेरे को वरदान मिला है कि जिसकी मैं छाया पकड़ूं वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है माता जी, भी अकाउंट क्लियर करते हैं। हनुमान जी सीधा उसके अंदर जाते हैं, छोटे बन के फिर छाती के अंदर जाके छाती को फाड़ के हृदय फाड़ के शांत कर देते हैं। बोलो पवन हनुमान की जय। धीरे बोल रहे, लग रहा है कि आपको दुख हो रहा है। आप सीका के साइड हो कि हनुमान जी के साइड हो? हनुमान जी के। पवन हनुमान की जय। और फिर आपके फेवरेट लंकिनी, लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी कैसा रूप धारण करते हैं? छोटा बिल्ली की तरह, एकदम इनसिग्निफिकेंट। पता लगाते हैं क्या, इतने में एंट्री कर रहे होते हैं, वहां पे लंकिनी खड़ी होती है, देख लेते, ये बंदर, ये लंका नगरी रावण की नगरी है, मेरे अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता, चले जाओ नहीं तो मृत्यु के हवाले कर दूंगी। हनुमान जी बोलते माता जी मैं सेवा पे आया हूँ, जल्दी से जाऊंगा, वापस आता हूँ, बस टिफिन पैक करना है। बस जा रहा हूँ। नहीं कोई नहीं जा सकता। तब फिर हनुमान जी मारते हैं उसको कि वो मारती है? पहले लंकिनी मारती है, अब भूलों कर। हाँ, जैसे ब्रह्मचारी कैसे माता जी को मारते, किसी को नहीं मारना चाहिए, माताओं को तो कभी नहीं, लेकिन वो पहले आक्रमण करती। फिर हनुमान जी के जवाब में कैसे मारते हैं? फुल पावर से मारते हैं, हाफ पावर। तो माता जी 50% डिस्काउंट मिलता है। क्यों लगता है माता जी को कृपा बहुत मिलती है। रामलीला में पहले राक्षसी कौन थी? राम ने मारा स्पेशल मर्सी, आधा थप्पड़ मारा तो भी इसके मुंह से खून निकल गिर पड़ी, बोली आज मुझे खुशी हो रही है, मेरे को ब्रह्मा जी ने बताया था। क्या बताया था ब्रह्मा जी ने? कि प्रवचन मत सुनना, तो नींद आ रही है। प्रश्न क्या बताया था ब्रह्मा जी ने? हाँ, जब एक वानर के थप्पड़ खाने से आप है लोग समझना कि राक्षस कुल अंत होने वाला। जाओ, पूरा मैंने हनुमान जी का पासपोर्ट लिया, वीजा स्टैम्प किया, एंट्री टू लंका, इन्फिनिट एंट्रीज। फिर हनुमान जी सीता का पता लगा। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज प्रभुपाद तात्पर्य में कौन सा बता रहे हैं लाइन? कैसे आगे हम लोग तो इसके बारे में बता रहे हैं?
समुद्र पर पुल बनाने की लीला है। जब हनुमान जी पता लगा लेते हैं सीता का, ये भी इंटरेस्टिंग है, हनुमान जी कैसे पता लगाते हैं। हनुमान जी जाके बोलेंगे मैं हनुमान हूँ, सीता को डाउट आएगा। हनुमान जी कैसे सीता का विश्वास जीतते हैं? हाँ, पहले वो कुछ रामायण की कथा बताना शुरू करते और फिर हनुमान जी अपने को इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो रिंग भी प्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद अशोक वाटिका को ध्वंस, अशोक वाटिका फ्रूट खाने लगते हैं। रावण ने एक एक करके कई लोगों को भेजते हैं, हनुमान जी को बिना टिकट भगवत धाम भेज देते हैं। एक्चुअली लिखा है परपोर्ट में, हनुमान जी जो गेट का जो आयरन का रॉड ही हाथ में लेके खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, पकड़ा जाए तो पहले कोर्ट में जाता है, ट्रायल होता है, पैसे देके निकल जाते हैं। ये बोले कोर्ट में जाने की जरूरत है, यहीं से आपको बिना टिकट ही भगवत धाम भेजे। इतना ऐसा नहीं हनुमान जी के हाथ मरना भी। फिर अंत में हनुमान जी गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? हनुमान जी क्या शक्तिहीन थे? हाँ, रावण से मिलना था और साथ साथ हाँ ब्रह्मास्त्र का आदर करना था। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी से मिलते हैं, ब्रह्मा जी से नहीं सॉरी रावण से मिलते हैं ब्रह्मा के वरदान से। और रावण को बोलते हैं तू कुत्ते की तरह है, घर का मालिक नहीं होने पे घी चुराया जाता है, वैसे तुमने सीता का हरण किया। और लंबी कहानी है, लेकिन अंत में हनुमान जी पूरे लंका नगरी जला देते और जलाने का खर्चा रावण के अकाउंट से, क्योंकि पूंछ पे तेल उसी लगाया। सीता देवी को चिंता होती है, अरे कहीं हनुमान जी की पूंछ में बहुत जलेगा, बहुत गर्मी होगी। सीता देवी प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि जब अगर मैंने राम के सिवाय किसी का चिंतन भी नहीं किया है, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाए तो उसको हाँ उसको गर्मी नहीं लगे, ठंडा लगे। यहाँ पे पूंछ में आग लगाई जा रही थी, हनुमान जी को लग रहा था कोई आइसक्रीम लगा रहा है या आजकल इस्कॉन कुल्फी, दिल्ली में कुल्फी बेचते हैं ना स्टॉल पे, गोविंदा में, वो भी दिल्ली में रहते हैं सभी। यहाँ पे 64 माला, वहां पे 64 कुल्फी। मैं सबको नींद आ रही, इसलिए मैंने टॉपिक चेंज किया, अभी जाग गए ना। फिर हनुमान जी जब समाचार देते हैं भगवान राम तुरंत ब्रिज बनाते हैं, पहले और कोई तरीका ट्राई करते हैं जाने का, प्रार्थना करते हैं समुद्र से। हाँ, समुद्र से कितनी देर प्रार्थना करने के बाद समुद्र रास्ता देते हैं? 3 दिन के बाद रास्ता देता है वो नहीं देता। तब हनुमान जी बहुत गुस्से रहते हैं, लक्ष्मण बदमाश लोगों के सामने नम्र रहने से फायदा नहीं, आज मैं समुद्र को पूरा सुखा दूंगा। और ऐसे भगवान बस अपनी दृष्टि डालते हैं, उनकी दृष्टि से क्या होता है पूरा समुद्र और सारे जानवर छटपटाने लग जाते हैं। मुझे भी गुस्सा आता है जब डिवोटीज लेट आते हैं प्रवचन, पहले आता था, अभी तो इसलिए यहाँ पे तो क्या है, जैसे प्रभु जी को बता रहा था, उनका केमिस्ट का बिजनेस, केमिस्ट के पास वो दवाई लेने आते हैं, लेकिन इसका उतने पैसे में दुकान खोलने के एमआर होता है, घर घर जाके दवाई देता है। तो राधानाथ महाराज केमिस्ट है, लोग बोलते हैं महाराज अच्छा कभी होगा कभी होगा, तो महाराज छुपे छुपे रहते हैं, थोड़ा देते हैं, हजारों लोग आते हैं। हम एमआर हम पकड़ के बोलते आ जाओ आ जाओ। हम तो केमिस्ट से सस्ता दुकान में एमआर देते हैं, नहीं तो मैं एमआर हूँ, केमिस्ट। एमआर मतलब महाप्रभु रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल नहीं, वो आपके लिए, मेरे लिए महाप्रभु। तो भगवान राम बहुत गुस्से हो जाते हैं, और जब समुद्र का पानी खोलने लगता है, समुद्र देव खुद आके माफी मांगते हैं। कि भगवान राम बोलते हैं अब मैंने एक अस्त्र लगा दिया धनुष्य के ऊपर, मैं छोड़ूंगा, उस पर छोड़ा जाए। तो क्या बोलते हैं, कहाँ पर छोड़ते हैं? हाँ, कुछ इलाका है जहाँ पर निम्न जाति के लोग, ब्राह्मण अच्छे जाते हैं। ये राग जगन्नाथपुर में बहुत अच्छे महाराज के राधा के शिष्य, भाई राधा कांतो गोपाल के शिष्य मेरे बहुत। जब मैं वृंदावन में जाता हूँ ना तो इनके भाई देखभाल करते हैं, ये देखभाल भुवनेश्वर में हमारे वो सीनियर वैष्णव मालिनी माता राधानाथ महाराज से 25 साल से ज्यादा स्मार्ट हो गए। तो एक्चुअली भगवान राम भी कभी कभी मानव की तरह बिहेव करते, कभी कभी भगवान की तरह। अगर वो भगवान है तो उनको समुद्र से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? भगवान नम्र बनते, लेकिन फिर भगवान दिखा देते हैं कि मैं कौन हूँ। तो फिर समुद्र से बोलते हैं कि आपको तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ब्रिज बना सकते हैं। ये ब्रिज का वर्णन किया गया
कितने सारे वानर होते हैं जो ब्रिज बनाने में मदद करते हैं? 1000, 10,000 की 1,00,000। यस नरेश्वर प्रभु, श्रीधर प्रभु, लॉगिन करके दूसरे काम। श्रीधर प्रभु उठ गए? कोई बताएगा कितने वानर थे? अनगिनत थे प्रभु जी, अनगिनत थे, गिनती नहीं थी। अनगिनत। ये तो बहुत अच्छा आंसर है। रामायण में एक नंबर भी लिखा है, मुझे याद नहीं। और उसके साथ ना अंगूर भी थे। अंगूर नहीं, अंगूर याद आ रहा है यहाँ में अंगूर नहीं, लंगूर मालूम है? काले काले जो नहीं, काले बाल लंबी पूंछ वाले होते हैं। अश्वल नहीं, वो लंबे। यहाँ पे कई बार है ना, इससे बंदर को डराने के लिए लंगूर हाँ, वो हनुमान बंदरों को डराने के लिए उनको लेके आते। तो फिर ब्रिज बनाना शुरू करते हैं और बड़े बड़े पत्थर पे लिखते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई ये बंगाल नहीं है, जोर से बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक बार भगवान राम देखते हैं सब लोग ब्रिज बना रहे हैं, मेरे नाम लेके मैं भी एक पत्थर फेंक के देखता हूँ। भगवान राम कभी ट्राई करते हैं हाँ, कोई चीज करना हो किसी को मालूम नहीं पड़े, रात में करते हैं। और भगवान राम देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, और एक शीला लेते हैं और उसको ऐसे डालते हैं, वो एकदम नीचे डूब जाए। भगवान राम बोलते अच्छा हुआ किसी ने देखा तो नहीं। देखा तो कौन देख रहा था? हनुमान जी। ये बोलते हैं कि आप जिसको आपके नाम से तो लोग भवसागर पार कर लेते, फिर ये पार करना क्या बड़ी बात, लेकिन आप जिसको त्याग देते हो उसके लिए कोई आशा नहीं। तो फिर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो कहानी आती है ना गिलहरी और हनुमान जी की। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं बड़ी सेवा कर रहा हूँ, ये गिलहरी माता जी हटो साइड से। और तो भगवान राम बोलते हैं हनुमान जी जितनी आपकी सेवा मुझे प्रिय है उतनी गिलहरी की भी प्रिय है। ये दोनों अपने कैपेसिटी के अनुसार। कई बार डिवोटीज में ना थोड़ा ये कंपटीशन का भाव आ जाता है या दुख हो लेता है, मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा, मैं कुछ सेवा नहीं कर रही। तो दूसरे माता जी देखो कितना अच्छा गार्लैंड बना रहे हैं, प्रभु जी देखो कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं। वो और कुछ तो ये प्रभु जी देखो कितना अच्छा कल क्या खाया था, पास्ता खा रहे हैं। वही जा रहे हो क्या? एक चाबी किसके पास है? आपकी इच्छा पूरी होगी। कुणाल प्रभु की इच्छा थी कि लेक्चर मिस नहीं हो, अभी भी इच्छा थी कि प्रसाद भी मिल जाए। भगवान ने दोनों इच्छा पूरी की। ओके, थोड़ा फास्ट जाएंगे और फिर ब्रिज बनाने का हो गया पूरा। आपको मालूम ब्रिज कितनी लंबी थी? प्रदीप प्रभु, हाउ लॉन्ग वाज द ब्रिज? ब्रिज की लंबाई कितनी? 18 योजन। 100 योजन यानी कितने किलोमीटर? 1200 किलोमीटर, 800 माइल। और चौड़ाई कितनी थी? 10 योजन यानी 80 माइल, 120 किलोमीटर। बॉम्बे से पुणे है, खाली ब्रिज की चौड़ाई थी। और कभी कभी क्या होता, बंदर जब जा रहे थे ना, छलांग लगाते, बीच में दूसरे बंदर आते, दूसरे बंदर ऊपर से उड़ के जाते। जैसे अभी आता है ना, कभी हम पुणे में ट्रैफिक मिलता है, ऐसा होता है कितना अच्छा ऊपर उड़ के जा सकते। अभी रिसेंटली मैंने पेपर में पढ़ा
एक यूरोप में एक कार बनाया है जो हवा में जमीन में चलता है और जब भीड़ ज्यादा हो तो हवा में भी छोड़ा सकता है। ज्यादा नहीं है, 3.5 करोड़ का आप एक बुक कर ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर सबके पास वो कार आ गया तो क्या होगा, ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। पता नहीं लोग बुद्धि क्या क्या लगाते हैं ना, कभी संतुष्टि नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो तात्पर्य। तो आप उनको भी देंगे, माता जी को भी वो श्लोक का फॉरवर्ड करके देंगे, या क्या करो आपका मोबाइल उनको दे दो और आप तीनों इधर हो जाए, ये वाला उनको दे दो, वो निकाल के दो। ये जो परपट है ना, भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। देखो मिला, तुम इधर आ जाओ, आपको मिला ये लाइन। भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। उदाहरण, जब वे रामचंद्र जी के रूप में उत्पन्न हुए, तो ये गलत लिखा, उत्पन्न हुए नहीं, प्रकट हुए, जब उन्होंने समुद्र पर पुल बनाने का असामान्य कार्य किया। इस प्रकार जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और क्योंकि मूर्ख और धूर्त दिव्य पद को प्राप्त नहीं होते, वे भगवान के इन असामान्य कार्यों को पौराणिक या काल्पनिक मानते हैं। किंतु जब मुक्त व्यक्ति या भक्त भगवान के इन कार्यों के विषय में सुनते हैं तो तुरंत ही आनंद विभोर हो जाते हैं, कीर्तन करने, नाचने, जो प्रसन्न होकर रोने लगते हैं। भक्त और अभक्त में यही अंतर है। अभी आज मैं जयानंद प्रभु के बारे में बोलना चाहता हूँ। खाली एक श्लोक और पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर जयानंद प्रभु के बारे में। नेक्स्ट श्लोक दिखाई पड़ रहा है, 35 नंबर। यदा ग्रहग्रस्त इव कचिद्वसा व्याक्रांदते ध्यायति वन्दते जनम् मुहुश्वसाना भक्तिर्हरे जगत्पते नारायणेतातिमतिर् नारायणयात्मतिर्गतत्रप। जब भक्त प्रेत ग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो हंसता भी है और उच्च स्वर में भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है, कभी वो ध्यान करता है, प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते प्रणाम करता है, तेज श्वास लेते हुए सामाजिक शिष्टाचार को परवाह नहीं करता, पागल की तरह जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हे भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी को उच्चारण करते हैं। तात्पर्य, जब कोई बाहरी सामाजिक रीतियों की परवाह न करते हुए हर्ष से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तो समझा जाता है तो आत्ममति है। दूसरे शब्दों में उसकी चेतना भगवान की ओर मुड़ जाती है। एक और श्लोक पढ़ेंगे। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधना तद्भावानुकृत शयाकृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेन समेत चोक्षम। जब भक्त सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है क्योंकि निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में सोचता है, उसका मन और शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका ज्ञान, भौतिक चेतना, सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती है। यही वो अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण की शरण प्राप्त कर ले। मैं सोच रहा था मैं इतना सीनियर और एडवांस्ड हो गया, तो 40 साल हो गए इसको, लेकिन कभी ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसे ना अपने सारे भगवान के लिए रो रहे हो, पुकार रहे हो। यहाँ लिखा है निरंतर भगवान की लीला के बारे में सोचने से मन शुद्ध होता है। तो मन शुद्ध होने का तरीका क्या है? बार बार लीलाओं का सुनना। कल आप बोलते ना प्रभु जी आप लीला बार बार क्यों बताते हैं, वही लीला बार बार क्यों बताते हैं, है ना? आप बोलते ना क्यों इतना लंबा लेक्चर देते हैं। तो ये है कि उस स्टेज पर पहुंचना है कि आप निरंतर भगवान की लीला को याद करें। तो कौन सा श्लोक गीता में बताया गया है? मेरे भक्त मेरा कीर्तन खाली आधा घंटा करते हैं। पढ़ा आपने? सततम, सततम मतलब खाली दिन में 1 घंटा ना, पूरे दिन भर।
जैसे आप कर रहे हैं अभी 3 दिन से आप यहीं पर हैं, तो जब कर रहे हैं तो भी 64 राउंड जब किया कोर्स, 1 साल भी नहीं हुआ इस्कॉन में आके, उसको महाराज को देखा इतने प्रभावित हो गए। लग में रोज कितना, रोज 20 माला, 16 तो कर ही रहे हैं, 2 माला एक्स्ट्रा जो मैं जिनको मैं लेके आ रहा हूँ, कमीशन देता हूँ। कुनाल भी, कुनाल तुम तो 18 पहले से ही कर रहे थे, 20 अभी 21 हो गया महाराज के लिए। और एक चैतन्य करुणा प्रभु का तो 32 हो रहा है ना, 32 ट्राई करिए। यदि आपका एक बार 50 उम्र क्रॉस हो गया ना तो 32 का क्रॉस हो गया, 60 हो गया, लगता है इतना यंग बॉडी लगता है भगवान की दया से। 32 करिए आप, अभी में कर रहे थे 32 मेरे ख्याल से, फिर कम हो गया तो आपका 32 हो जाता है। मैं एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता, फिर क्या होगा, आप उनके बच्चे बन जाएंगे। भगवान के सामने बोल रहा हूँ, आप रिस्क मत लीजिए कि आपका जो है इससे ज्यादा, मैं तो चाहता हूँ आप 100 साल रहे। ये कली में 100 साल कितने लोग रहते, और आपका 50 हो गया ना, 50 64 मतलब मैक्सिमम 20 साल हो गए। 84 से ज्यादा तो बहुत मुश्किल है, और 84 के बाद जी के भी फायदा क्या, ये आप आज से 32 का देखो। अगर माता जी हम चाहते नहीं है, लेकिन समय आ गया समझो आपका, तो क्या बच्चे बड़े नहीं होंगे? तो ग्रैंड मदर है, तो कई कहते हैं बच्चा जन्म होते माता पिता दोनों चले जाते हैं, फिर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, ऐसे हुए ना केस, जो जिसके भाग्य में लिखा है। ये भी कल भी वहाँ जो माता जी आए थे ना निगड़ी से, तो वो भी अभी बता रहे थे प्रयाग जा रहे हैं, वहाँ बच्चे लोग क्लासेस अटेंड करेंगे मेरे बेटे, और उनके बच्चों का मैं ख्याल रखूँ। ये गलत चीज है जो बच्चे, जैसे जवान लोग बच्चे पैदा करते हैं और अपने माता पिता को बेबी सिटिंग में लगा देते, आपका ये कर्तव्य नहीं है। शास्त्र क्या बोलते हैं, एक बार 50 हो गए तो भगवान में ध्यान, फिर भी रिलेशन मेंटेन करो, ठीक है। मैं सही बोलूँ कि दिन में मैं तो ऑलरेडी आप भगवान के लिए 4 घंटे दे रहे हैं, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा मांगता, 20 तो हो ही जाता होगा। क्या था ना, मतलब ये क्रीचर के लिए कोई थोड़ा रास्ता रखिए आने की। ये प्रीचर में क्या, प्रीचिंग में क्या होता है कि दूसरों को हेल्प करने में हमारा प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। अभी हमारे ग्रुप में कोई ड्यूटीज है ना, ये नरेश्वर प्रभु है, पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में भक्ति निष्ठा माता जी निगड़ी में, ये लोग सुबह जब शुरू करते हैं दोपहर 1 बजे तक 64 पूरा करते, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को छोड़ दिए। मैं ये नहीं बोला टोटल निग्लेक्ट करिए, ऐसा नहीं क्या बोले कृष्ण नहीं, लेकिन एक बाउंड्री में देखो, दिन में 4 भगवान के लिए मुझे 24 में से 5-6 घंटे तो देने ही, बाकी टाइम परिवार के लिए हो गया। तो ये आपका 32 होता है ना, भगवान की दया से आपका तो कोई ये नहीं है, बॉन्डेज ही नहीं है, बेटे बेटी ये बॉन्डेज बन जाते हैं, बॉन्डेज ही है। मैं भी ऐसे नहीं बोल रहा, मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि आपने इतना सेवा की है ना, जिसका सेवा की उसके प्रति ऋणी महसूस, मैं सबको ऐसे पब्लिकली नहीं बोलता, मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरे को भी ऐसे ही हुआ, मैं पहले नहीं करता था, पहले मैं 16 ही करता था। ये 2006 में मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ, आप लोगों ने प्रे किया, हार्ट ऑपरेशन। तो जब मेरे को महाराज मतलब डॉक्टर बोले थे 50% चांस है कि वापस आएंगे या नए शरीर में आएंगे, नया सेंटर ज्वाइन करें। जब मेरा हो गया तब महाराज बोले कि आप समझो नया जन्म है, पूरा भगवान के समय। मेरी एज 44, मेरा भी 60 हो गया ये साल। कल जब यज्ञ किया तो इसलिए किया कि मतलब बताने के लिए बेटे 60 हो गया, अभी दिन गिनती करो कितने बचे हैं। 60 के बाद कोई 90 100 तो जाना नहीं, 70 बहुत हो गया। आपको बोलो, लेकिन मैं खुद, मेरी भी कमी है, मैं 32 कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 40 तक जाए। यहाँ पे बताऊँ धाम में तो इजीली हो जाता, जितना हो सके धाम में आइए, पैसा भी खर्च हो कोई बात नहीं, इतना थोड़ा। जैसे अभी कभी किसी का मृत्यु का समय बहुत तबीयत खराब होती है, बोलते हैं 1 लाख 5 लाख भी लगे आदमी बच जाए, इम्पोर्टेंट। इसलिए अभी थोड़ा पैसे में मुझे ज्यादा भी खर्च हो गए, बच्चे की थोड़ी गलती भी कर रहे हो, तो अपना दिमाग बचाओ। सॉरी, मेरा बोलने का इरादा कोई नेगेटिव नहीं। ओके, परपट पूरा करते हैं, फिर जयानंद ठाकुर के बारे में। कहाँ तक हो गया परपट पूरा?
निरंतर भगवान की लीलाओं में सोचता था। हाँ, अभी परपट बाकी है। yes. तो निरंतर इम्पोर्टेंट है। जब तक निरंतर चैंटिंग नहीं होगा ना, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तनीय सोमवारी हरि, नहीं रविवारी ना, वीकेंड हरि, रोज नहीं, एवरी मोमेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रसिक रमन प्रभु जी, रसिक रमन प्रभु, मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है ना? आपका कोई ओपिनियन? आप भी बहुत शास्त्र का ज्ञान है, बड़ी जरूरत है। डेली नित्य हमें डेली नाम जप करना चाहिए, डेली करना चाहिए। यस, रसिक रमन प्रभु जब दिल्ली में थे तो मेरे को अपने साथ में बिठा के जप कराते थे। कई बार 64 किया, नोएडा के पास रहते थे। अभी आप हैदराबाद में ना? यस, हैदराबाद में मुझे मैं भी मिस कर रहा हूँ काफी कि वो उत्साह नहीं आ रहा फिर से जप करने के लिए, जैसे आपके साथ में था पहले। पांचों वाड़ा में आपके लिए कमरा बुक किया है मैंने, प्लीज कम, यू आर वेलकम। अंदर से इच्छा काफी आने वाड़े पर आ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं। आप प्लीज प्रार्थना करिए। आपको इच्छा तो मेरे को बताना, मैं सब अरेंजमेंट कर दूंगा। यस प्लीज। ओके, तात्पर्य पढ़ के हम दयानंद प्रभु के बारे में बोलेंगे। जब भक्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, अन्याभिलाषिता शून्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी सारी इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती है। भगवान के दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में रहने लगता है। निरंतर सोचते रहने के कारण उसके शरीर और मन आध्यात्मिक बन जाते हैं। उसे भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। यदि लोहे को आग के साथ रखा जाए तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। मुझे पास में आ जाना थोड़ा। और जब वो पूर्णतः लाल हो जाएगा तो शलाका नहीं रहती, आग ही बन जाती है। इस प्रकार जो भक्त निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अपनी मूल कृष्ण चेतना में भगवान का चिंतन करता है, सारे भौतिक कार्यकलाप समाप्त हो जाते हैं, तो शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति अत्यंत शक्तिशाली होती है। इसी जीवन में ऐसे भक्त को भगवान के चरण कमल इसी जन्म में करना चाहिए, 2 जन्म में। हाँ, जैसे स्लो चलाना अच्छा बोलते हैं ना, एक बार डिवोटी बोलते प्रभु जी आप जल्दी क्यों कर रहे हो ना? हाईवे पे बोलते हैं स्लो चलाना अच्छा। मटेरियल हाईवे में एक्सीडेंट होता है, स्पिरिचुअल में कभी एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअल में स्लो चलाने पे एक्सीडेंट होता है। और लास्ट लाइन देखिए क्या लिखे, भक्त की यह दिव्य भाव विभोर स्थिति चैतन्य महाप्रभु में पूर्णतः प्रकट हुई। मध्वाचार्य लिखते हैं, तद्भाव भाव तद यथा स्वरूपम भक्ति केचित् भक्ता वृत्यन्ति गायन्ति जयसितम केचित् तृष्णेत केचित् शोभयकारिणम। भक्ति के आनंद में स्थिति भगवान चैतन्य महाप्रभु में पूर्णतः प्रकट थी, जो कभी नाचते, कभी चिल्लाते, कभी गाते, कभी मौन हो जाते, कभी नाम का कीर्तन करते, यही पूर्ण आध्यात्मिक। तो ऐसे महान भक्त का आज तिरुभाव दिवस है। मेरे पास खाली 20 मिनट बचे हैं, मैं उसमें जयानंद ठाकुर के बारे में बताऊंगा। कितने भक्तों ने सुना है जयानंद का नाम? बोलिए हरि बोल। व्हाट्सएप खोल दो। तो जयानंद ठाकुर, इनका पहले नाम जिम था, कर्मी नाम। ये अमेरिका में पढ़ाई करते थे। कौन से कॉलेज में थे, किसी को मालूम है? सही है, ऑन ही नहीं कहते कैसे। कौन से कॉलेज में थे? कॉलेज का नाम था ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। वहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और फिर भी वो खुश नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था, एक मिनट है, फोन कौन सा? इंटरनेट किसके पास है? मेरे पास हाँ, लेकिन जियो का जल में क्या हो रहा है? हरी बोल, आवाज आ रही है? यस प्लीज, आ रही है। वीडियो नहीं आ रहा, आवाज आ रही है। अभी वो आपका नंबर बताइए। 7 नहीं, अच्छा नहीं, लेकिन वो व्हाट्सएप वाला वो जियो से लिंक नहीं है
में नहीं आया। ऐसे करो, अब इंटरनेट इनके इसमें ना जूम आईडी लॉग इन करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। यस हरे कृष्ण। हाँ अभी वीडियो आ रहा है? नहीं वीडियो नहीं आ रहा मुझे। हाँ मैं ना एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ, क्या हुआ है ना जो ठीक हाँ अभी आ रहा है। नहीं क्या है, जो मेरे को जो फाइल भेजा है ना वो उसी मोबाइल पे है और अच्छा नहीं वो खोलेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा मुझे वीडियो। हाँ नहीं मैं दूसरे पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ जूम ज्वाइन कर, इसमें है सिग्नल है। हरि बोल प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। नहीं वो क्या है जो आपने भेजा है ना मुझे वो उस मोबाइल पर नहीं, मेरा एयरटेल का नंबर है उस पर भेजना है, और एयरटेल का वो काम ही नहीं कर रहा सिग्नल ऐसा। अच्छा ठीक कोई बात नहीं, दूसरा हाँ प्रभु ये दूसरा स्पॉटलाइट करना है श्रीधर प्रभु। यस प्रभु जी कर रहा हूँ। हाँ यस प्रभु जी। हाँ जरा इस पर स्पॉटलाइट करना। हाँ हो गया प्रभु जी। तो स्पॉटलाइट तो क्या है? दयानंद प्रभु के बारे में। हाँ अभी आ रहे, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो जैन प्रभु के बारे में बताया गया कि वो इतने पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, लेकिन पता है क्या जॉब सुना उन्होंने, क्या नौकरी क्या करते थे? क्या? ड्राइविंग, टैक्सी चलाते थे। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि मटेरियल लाइफ थी। फिर उनको किसी ने बताया कि प्रभुपाद जी का प्रोग्राम है, तो वो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने के लिए गए और बस प्रभुपाद का कीर्तन सुन के और वो बोले कि मैं भगवान की शरण में आना चाहता। और प्रभुपाद इतना प्रेम करते थे, तो प्रभुपाद से मिलने आते ना तो प्रभुपाद अपने हाथ से प्रसाद पकाते थे और जैनंद को खिलाते थे। उस समय क्या था, बहुत कम डिवोटी थी। तो जैसे अभी आजकल के महाराज बोलेंगे महावन में कितने 6-8 आइटम हो गए, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो प्रभुपाद खुद बनाते थे। और जैन लोगों का इतना विश्वास था, अगर कोई प्रसाद होता ना, प्रसाद में इतना विश्वास था, प्रसाद में गिर जाता ना तो हाथ से उठा के चाटते थे। बोलते थे भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के प्रसाद में अंतर है। विश्वास प्रसाद में जब कोई बाहर से व्यक्ति आता ना नया, तो इतना प्रेम से प्रसाद खिलाते, इतना खिलाते कि उसको उठने की शक्ति भी जानी, फिर वो भक्त बन जाता। थोड़ा सा इधर में तो ना थोड़ा सा जैसे जनरली जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है ना उसके सामने ही बैठना, इनको भी निकट नहीं करता बोलने जाएगा। तो वो इतना प्रसाद में इतना ये करते थे। और वो खुद सीनियर भक्त होने के बाद जो जूनियर उनके बाद आए हुए भक्त हैं उनको पोस्ट देते थे प्रेसिडेंट का, और खुद गार्बेज कचरा फेंक के आना, ये सेवा करते थे। तो प्रभुपाद जी ने एक बार एक किताब छापने की इच्छा थी, ठीक कौन सी किताब थी, भक्ति रसामृत सिंधु। तो पैसे की जरूरत थी, दयानंद लोग $5000 दान दे। उस जमाने में कृष्णा बुक था, $5000 उस जमाने में, यानी आज से 50 साल पहले की बात। तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए उनकी सेवा से। तो जयानंद लोग 10 घंटे कीर्तन करके लौट के आते, फिर वो सो जाते, जयानंद और जप करने बैठ जाते। जब बहुत फोकस था, उनका एक गुण था कि वो हर एक अक्षर को हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 ध्यान पूर्वक जप पढ़ते, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो और नम्रता, वो कोई प्रश्न नहीं चाहते। अगर प्रशंसा करता है कभी नहीं जाता, मेरा उल्टा है, तुम्हें प्रशंसा करे, आप अच्छा लेक्चर दो, अच्छा हम खुश रहते हैं। लेकिन जयानंद प्रभु का ऐसा नहीं,
ज्यादा पसंद करते हैं, कभी एक बार एक नया लड़का कोई आया सेवा करने के लिए, उसको बोला कि कचरा उठा के ले जाओ। तो दयानंद प्रभु जो है वो मैं लेके जाता हूँ। नया लड़का सोचने लगा कि यहाँ पे कचरा उठाने वाले लोग भी इतने महान भक्त हैं, ये मंदिर कितना महान है। वो फुल टाइम ज्वाइन किया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तृणादपि सुनी छेन, वो उनको बहुत प्रिय था। इसलिए वो कुकिंग करना भी जानते थे, प्रचार करना, डीडी वर्शिप भी करते थे, और स्पेशली बिजनेस में हेल्प करते थे। जो मंदिर को चलाने के लिए अगरबत्ती बेचने का बिजनेस, इंसेंस, हमारे गोपीनाथ में मिलते हैं, अगरबत्ती बेचने में भी हेल्प करते, फूल लेकर आते भगवान के, कभी कभी सब्जी काटने के चले जाते। और जब कोई बोलता है कि प्रसाद वितरण कर रहे हैं, तो एक 4-5 लोग एकत्र करते सब्जी काटने के लिए, खुद ले जाते, प्रसाद वितरण करते। तमाम कृष्ण महाराज का पार्टी था, उनको ड्राइवर की जरूरत, तो ड्राइवर बनने को भी तैयार हो। तो विष्णु पुराण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपके पास है लेक्चर चला पूरा। भगवान क्या बोलते हैं, हाँ वो भी तैयार है। भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरे कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरा महान भक्त है ना, वो मेरा भक्त नहीं है। फिर कौन मेरा भक्त है? हाँ, जो मेरे भक्तों का भक्त, दासानुदास। और श्रवण कीर्तन में तो बहुत रुचि थी। और एक गुण था, तो कभी किसी दोष नहीं देखते भक्त में। कोई दोष होता तो कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, भगवान ठीक कर दे। भक्ति रसामृत में बताया, उपदेश अमृत में, कि वो भक्तों का संग करना चाहिए जो अदोषदर्शी। अदोषदर्शी मतलब दूसरे के दोष में नहीं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उत्तम अधिकारी, और सबको बहुत प्रिय थे। जो मार्केट में आते हैं सब्जी लेने वाले, वो मार्केट दुकानदार भी उनको बहुत प्रिय होते हैं। और एक बार एक शराबी आया मंदिर में, और उसने युवती को देखा, पहचान लिया कि भगवे कपड़े, मेरा दोस्त कहाँ है? और कौन? दयानंद। शराबी भी उनको दोस्त मानते। वो षड गोस्वामी के बारे में बोला गया ना, क्या करो, देर इसमें है ना, तो अच्छा होगा। सुना है वो बोलते हमको पता नहीं आगे बुक्स में क्या लिखा है, लेकिन दयानंद अगर उसमें है। मैंने अब जीवन में इनसे बढ़ के कोई अच्छा व्यक्ति देखा नहीं। एक बार तो एक माता जी थी, वो भक्तों को बहुत तकलीफ देती थी रथ यात्रा के समय, परमिशन के लिए, गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल। तो एक दिन वो आई, दयानंद प्रभु जस्ट शरीर छोड़े थे, मई 77, जो मई का महीना आज है, नरसिंह चतुर्थी के एक दिन पहले 77, मतलब आज 40 साल हो गए, 45 साल हो गए। तो प्रभुपाद जिस साल गए थे, प्रभुपाद के 4 महीने पहले गए। बड़े अच्छा माना था कि शिष्य गुरु से पहले शरीर त्याग करे। हरि बोल। चलिए, आप दोनों का दोष नहीं, मैं ही रात को आपको लेट किया सोने में, इसलिए व्रत आता है। लेकिन अब इसके बाद सोमवार के बाद 5-6 दिन में 6 घंटे, रात को 6 घंटे नमी जाने के बाद दुकान में आए। वैसे भी आपके इनके स्टाफ में एक व्यक्ति कृष्णा की होगी, कृष्णा ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहे। तो जब वो आई पूछने लगी
जयानंद कहाँ पे है? फिर जयानंद मदद करूं क्या? बोले हाँ क्या चाहिए? बोले कोई रिकॉर्ड खिला दो, खिला दी, तोड़ा दो और ठोको ठोको, हो गया। और क्या करूं? और एक खिला दो। 3-4 बार किया, 2-3 दिन किया, और एक ही बोला मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं। और वो भक्त का नाम हो गया है परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी। ऐसे भक्त बन गए। इलेक्शन इस खाली क्लियर होके भक्ति में सरलता इम्पोर्टेंट नहीं है कि तो जो भी बोलते हृदय से बोलते। एक बार वो जैसा देखते हैं, कई बार कोई कार में जैक लगा के उसमें रिपेयर करते। हमारे ड्यूटी मेरे साथ आए थे ना, कई वो कि वो उनका कार में गड्ढे में गिर गया था, तो जैक लगा के ऊपर किया, जो मदद करने आया फिर कार उसके ऊपर आ गया। पूरा ये उंगली ऐसा, लेकिन 4 लोगों ने बचाया, पूरा ये नाखून निकल गया। लेकिन जैन को ऐसा कर रहे थे कि एक बार जैक कार के नीचे जाके रिपेयर कर, और उधर एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, वो रिपेयर करते गाड़ी। वो आपको मालूम है शरीर आत्मा में क्या अंतर होता है? नहीं मालूम। तो देखो शरीर जो है कार की तरह और हम आत्मा है, और साथ में रिपेयर भी करो। जी आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है इस पे। ठीक है, कोई बात नहीं। आवाज तो आ रही है ना? नहीं भैया आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। ओके ओके। इसलिए मैं क्या सोचा था ना, वो फॉरवर्ड। अभी आवाज ब्रेक हो रही है मुझे। हाँ यस प्रभु। अच्छा ठीक है, फॉरवर्ड कर। आपका नंबर बता सकते हैं मुझे? इसका नंबर जिसमें फॉरवर्ड कर दो। मोबाइल नंबर याद है? व्हाट्सएप नंबर बताना। लेकिन वो व्हाट्सएप इसमें लेगा कि नहीं? हॉटस्पॉट जनरेट करना। तो आपको व्हाट्सएप नंबर वही है जो नंबर पे आपको फोन नंबर चाहिए। हरी बात प्रभु जी, अभी ठीक है? बैंड में सीधा प्रभु। हाँ यस प्रभु जी, अभी थोड़ा आवाज आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, वीडियो ठीक है? हाँ वीडियो भी ठीक है प्रभु। ऐसे आपको भी होता है ना, बस 10 मिनट और है प्रभु जी। 10 मिनट में फास्ट बता रहा हूँ कि 10 बजे प्रोग्राम शुरू होने 10 में शुरू नहीं। हाँ यस प्रभु जी। नहीं पूरा। हाँ अरे वो मैंने कौन सी कहानी बताई लास्ट? आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो वो वीडियो दोनों ही। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, मेरे पीछे, कृष्ण शक्ति बिना तार प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता है। और पिछले इसके ना कुछ समय के लिए गृहस्थ आश्रम में भी गए। तो गृहस्थ आश्रम में जब थे तभी कुछ पैसा रखते नहीं अपने लिए। एक बार प्रभुपाद जी को जरूरत थी, तो मैंने कितना बोला था? कितने डॉलर बोले? $5,000। इसमें नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद लिखते
एनओडी छापने में पहले एडिशन में मदद, 12 घंटे टैक्सी चलाते थे, 12 घंटे इंजीनियर थे। अभी जब आखिरी दिन आए ना शरीर छोड़ने की, तबीयत खराब हो गई तो पैसे नहीं थे, लोग पैसे डोनेशन देते दवाई के लिए, वो पैसे लेके बोले रथ यात्रा के लिए यूज करो, मेरे शरीर के लिए मत यूज करो। और कभी कभी सोचते थे उनको एक्चुअली कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर लिम्फ, और शरीर बहुत कमजोर हो गया, तो हॉस्पिटल से ही लेक्चर देते, हॉस्पिटल से ही प्रचार करते। मुझे देखिए बहुत शरीर जो है इतना आसमान, जितना शरीर में शक्ति है उतना भगवान की शक्ति में लगा दो। तो कौन सा है वो मुकुंद माला सूत्र में है ना, श्रील प्रभु आवाज आ रही है अभी? हाँ ये तो जा रहा है मुझे, आवाज क्लियर है। वो कौन सा श्लोक है ना, कृष्णा त्वदीय पद पंजरंतम अद्यैव मे विशत मानस राजहंस प्राण प्रणाय समये कफवात पित्ते कंठावरोधन स्मरण। जयानंद का मतलब यह है कि जब अभी हमारा शरीर अच्छा है, भक्ति कर लेनी चाहिए, जब प्राण जाने का समय आएगा तब तो कफवात से डिस्टर्ब हो जाएगा। सारे रथ यात्रा में वो फूल बिना खरीदी नहीं करते थे, भिक्षा मांग के ले आते थे रथ यात्रा से जाने। प्रसाद भी कभी होते ना, जयानंद मानता ना, लोग नहीं देते, हमको इसका मालूम नहीं, लेकिन जयानंद आपकी मूवमेंट है तो अच्छा ही हो। और जिसने मदद की है उनके लिए केक लेकर आते, तो केक खिलाते। गलत नहीं, मैं आपको डांट रहा था कि आपको समोसा अच्छा लगता था, वो भी करते थे, उनको चीजें आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। चीज पटेटो पनीर आलू, कल खाना पनीर, मैं बोलेगा ना क्यों खा रहे पनीर का, करेक्ट कर, कल खाया था ना, दोनों परंपरा नहीं। लेकिन करियो क्या था, क्लास में साथ में नहीं जाते थे, रात को ही सोते थे, ये भी परंपरा। लेकिन कोई श्लोक पूछा था ना, तो बिना सुने भी उनको श्लोक पता था। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद को पिकअप कर रहे थे टैक्सी में, और प्रभुपाद को देखते भी नहीं थे, जैसे ना कि हम मिलने जाएंगे, इतने नंबर थे, प्रभुपाद सामने आए ना तो झुका देते। कार चला रहे थे, प्रभुपाद पीछे थे, प्रभुपाद बोले कौन चला रहे कार, तो किसी ने बोला आपके जयानंद, वो जयानंद जिन्होंने अपना पूरा लाइफ मेरे को अर्पण किया। जब कोई भक्त आप प्रभुपाद से मिल सकते हो, प्रभुपाद में बैठ के ऐसे झूम जाते, कोई बात भी नहीं करते, प्रभुपाद बस आप ये क्या सेवा करना है वही बताओ, क्योंकि जो गुरु की सेवा करते हैं तो अपने आप ज्ञान देवे ज्ञान मिल जाए। वो बोलते थे वाणी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वापस गुरु से पर्सनली मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके अज्ञान। देखने का प्रयास मत करो, सीधा करो, सुनाई पड़ रहा है, इतनी सेवा करो। हाँ क्या लिखा है वो, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण आपको देखना चाहिए। तो जस्ट ये 1967 से वो ज्वाइन हुए, 10 साल रहे मूवमेंट में। और ऐसे बोलते हैं ना, जब भगवान आते हैं
भगवान राम आए तो साथ में लक्ष्मण, भरत, कौशल्या, कैकेयी सब आ गए। फिर भगवान कृष्ण है जो वसुदेव, देवकी, नंद, ऐसे प्रभुपाद आते हैं। प्रभुपाद के साथ ही भक्त हैं, रघुनाथ महाराज, जगन्नाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, किशोर महाराज या विजयानंद प्रभु। ये प्रभुपाद बोलते हैं ये सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, भगवान ने अलग अलग जगह पे रखा। और लास्ट में आप सबको दिखाई पड़ रही है फोटो सीधा टू? हाँ दिखाई दे रहा है प्रभु। हाँ दिखाई दे रहा है। फोटो जयानंद गुरु का फोटो है। समाचार मिला तो जयानंद ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कितना किया था मेरे लिए। तो बोले कि अगर उनके अंदर भोग करने की इच्छा रही होगी, हरे कृष्ण, तो थोड़ा वो जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहां पे अच्छा उनको फैसिलिटी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का अच्छे अफसराएं सब मिलेंगे, भोग करेंगे, फिर भक्ति में। लेकिन लास्ट में प्रभुपाद ने सुना कि भक्ति में एब्जॉर्ब थे, तो प्रभुपाद बोले मेरा निर्णय है कि उसी जन्म में भगवत धाम चलेगा। तो भगवान पर्सनली चैतन्य महाप्रभु लेकर, तो हम भी आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे बड़ी चॉइस है, अगर हम भक्ति करते हैं, थोड़ी करते हैं, थोड़ा रह जाता है तो फिर जन्म मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जयानंद गुरु की तरफ आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु जी आ अभी आ यस प्रभु जी आ रही है। भगवान से जयानंद ठाकुर के पद चिन्हों में चले और हम बिना किसी भौतिक कामना के तृणादपि सुनिश्चित भाव से भक्ति कर सकते। मेरे पीछे बोलिए, न धनम न जनम न सुंदरी, न धनम न जनम न सुंदरी, अवतार भक्ति रहे, भक्ति कि अपने आप को घास के तिनके से भी छोटा मानना, जो जयानंद प्रभु के अंदर था, सहनशील होना, किसी को भी शहादत देते थे गुरु भाई। राधानाथ महाराज का यही गुण है। देखो प्रोग्राम महाराज अपने आप को लास्ट कर, सबको ज्यादा चांस दे। एक प्रार्थना करें, हम भी छोटी सी सेवा करें जितना कर सकें, और जयानंद प्रभु की तरह गुरु महाराज और कृष्ण को समर्पित होकर हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी को या कुछ कमेंट्स है? अभी 5 मिनट में वो YouTube चालू होगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, अभी इसी लिंक पे कंटिन्यू रखिए आप। श्रीधर प्रभु सुन रहे हैं क्या? हाँ मैं इसी में वो यूट्यूब इसीलिए प्रोग्राम 15-20 मिनट बाद शुरू होगा, लेकिन यूट्यूब शुरू हो जाएगा तो स्क्रीन शेयरिंग करना। हाँ ठीक है प्रभु। खाली 2 मिनट बोल देते हैं। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम दयानंद ठाकुर की जय सतोबाद परम पूज्य रामदास जी महाराज जय His Grace कृष्णन प्रभु जी की जय 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 जय। श्रीधर प्रभु वो यूट्यूब पे लगाएंगे वो लिंक। हाँ ये सूरज में लगा रहा हूँ फिर। हाँ ये चालू रखिए, इसी पे फिर महाराज का लेक्चर भी इसी पे होगा। 4-5 यूनिट है, शायद महाराज लास्ट में बोलेंगे या बीच में बोलेंगे, पता नहीं। हाँ ये सूरज। चलिए आपको उधर गौशाला गौशाला की क्षमा करना। She's 20. एक दो महीने तो चलेगा, लेकिन एवरेज 32 मतलब यहाँ पे 32 करें ना। बोला तो फिर आपको क्यों यार अभी मालूम पड़ा कि आप 32 नहीं करें, आप 30 शुरू कर देगा, आगे आपके साथ चलता हूँ। गुरुजी अभी तक शुरू तो हुआ नहीं गुरुजी, ये रख दूं क्या शेयरिंग करके? अभी वो ना 2-3 मिनट में शुरू होगा। हाँ ये गुरुजी। गौशाला में जाने को
हाँ हरि बोल प्रभु जी। यस प्रभु जी। इधर प्रभु यस प्रभु। यूट्यूब का लिंक मिल गया आपको? लिंक मिल हाँ गया? मिल गया प्रभु जी, मैं ऑन करके रखा हूँ प्रभु जी, शेयर कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरे पे करता हूँ। चलेगा प्रभु जी। हरि
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इको विलेज में आज उपस्थित ग्रीन पिलग्रिमेज कॉन्फ्रेंस के ओकेशन पर यहाँ उपस्थित श्री राधानाथ महाराज एवं मेरे अग्रज श्रद्धेय श्री श्रीवत्स जी गोस्वामी, श्री रेवती रमन प्रभु जी, श्री गौरांग प्रभु जी, श्री माधवानंद प्रभु, श्री अनूप चक्रवर्ती जी एवं श्री किशोर चक्रवर्ती जी और पुरी से पधारे हमारे श्री राम कुमार जी। यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृवर्ग एवं भक्तगणों, यह अपने आप में एक अनोखा सुअवसर है जो श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से और श्रील ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से श्री राधानाथ महाराज और गौरांग प्रभु और उनके अनुयायियों के द्वारा एक अद्भुत और अकल्पनीय ब्रिज के बाहर एक ब्रिज मंडल की स्थापना हुई। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम अमर तरो प्रिय नाम, शाखा रूपान भक्तगणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के उन सभी प्रिय भक्तों को नमन करता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के शाश्वत वृक्ष हैं। ये पेड़ की सभी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जो फल बांटने वाला भक्तगण यहाँ पर भगवान के उपस्थित हैं, उन सभी को मैं आदर सहित सम्मान देता हूँ। वैसे तो श्री राधा कृष्ण के द्वारा ब्रज में अनेक स्थानों पर अपनी माधुर्य लीलाएं की गईं और समस्त ब्रजमंडल भगवान श्री राधा कृष्ण की विभिन्न लीला स्थलों से उनके माधुर्य, उन लीलाओं से भरा हुआ है और यह बहुत बड़ा विश्व का एक आस्था का केंद्र है। जैसा कि गौरांग प्रभु ने कहा, द्वापर के बाद कलयुग में वह लीला स्थल लुप्त हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस कलयुग के भक्तों को वह अवदान दिया गया जो आज
हम उन भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली का अवलोकन, दर्शन, भ्रमण सब करते हैं। श्री वृंदावन धाम एक चिन्मय अनंत है। ऐसे तो वृंदावन को देखने के लिए चक्षु भगवान की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हैं, किंतु यह जो चक्षु हैं, यह जो आँखें हैं, इनसे भगवान की वह लीला स्थली और वृंदावन और ब्रजमंडल का हम लोग जो दर्शन करते हैं, कलयुग का जीव होने के कारण कहीं कहीं भूल और चूक हो सकती है, किंतु वास्तविक वृंदावन और वास्तविक ब्रज का वह दर्शन करने के लिए हमको दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। अर्जुन जो कि भगवान कृष्ण के प्रिय सखा थे, किंतु उस भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को वह उस अवतार और उस भगवत स्वरूप में नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए भगवान को अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए अपने दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए, तब उसको वह ज्ञान हुआ। इसी प्रकार वृंदावन और ब्रजमंडल को देखने के लिए बिना गुरु कृपा के वह दिव्य चक्षु भक्तगणों को प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरु की वह शक्ति, गुरु का वह ज्ञान हमको उस वृंदावन के स्वरूप का ज्ञान करा सकता है। यह हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है कि उस वृंदावन और ब्रजमंडल के दिव्य तत्व को, जो मुख्य तत्व है, उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता हो, जिसके मार्गदर्शन में शास्त्र अनुसार हम उस ब्रज और वृंदावन का ज्ञान प्राप्त कर सकें। श्री प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा वृंदावन महिमामृत का वर्णन किया गया है, जो कि अपने आप में एक अतुलनीय ग्रंथ है। उस ग्रंथ में वृंदावन का जो वर्णन है, ऐसा वर्णन विश्व में कहीं भी देखने को प्राप्त नहीं होता है। वृंदावन का जो स्वरूप है एवं जो महत्व है, वह सर्वोपरि धाम के रूप में है। जितने भी इस पृथ्वी पर तीर्थ स्थल और धाम है, उन धाम में अगर जो सर्वोपरि धाम है वह वृंदावन है। वृंदावन से अगर अलग हटकर देखें तो वृंदावन के स्वरूप को बड़ा सूक्ष्म और स्थूल रूप में बताया गया। उसमें जो अनूठा है और जो वैकुंठ धाम के रूप में है, वह द्वारिका है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य स्वरूप, राजा का, महाराजा का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। उस द्वारिका से भी जो विलक्षण धाम है वह मथुरा मंडल है, जहाँ पर ब्रह्मांड नामक परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ। मथुरा मंडल से भी जो सूक्ष्म ब्रज का जो गोष्ठ प्रदेश है, वह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं और अपने कौमार लीलाएं ग्वाल वालों के साथ की,
वह गोष्ठ प्रदेश विलक्षण ब्रज के वो तीर्थ स्थल हैं। उस सबसे भी जो विलक्षण है वह रास स्थली है वृंदावन की, जहां भगवान कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ रास किया। उस महारास को देखने के लिए देवता और देवी भी ऊपर से लालायित रहे। उस महारास का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी उस वृंदावन में गोपी का रूप धारण करना पड़ा। अब उस वृंदावन से भी जो सूक्ष्म स्थल है, वह सूक्ष्म स्थल है वह राधा रानी का निकुंज, जो राधा की कुंज है, जहां एकमात्र परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश है, वह राधा रानी की वह स्वयं की निकुंज है। उस राधा रानी की निकुंज जो तीनों लोकों में के नायक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जहाँ राधा रानी के साथ उनका विचरण है, वह अद्भुत वृंदावन का एक दृश्य है। वृंदावन में और ब्रजमंडल में वन उपवन लगभग 1000 से ऊपर विभिन्न कुंड वहाँ पर हैं, जो भगवान की राधा कृष्ण की और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के आज कलयुग के हम भक्तगणों के लिए वो साक्षात लीला स्थल दर्शनीय है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा विश्व में कोई पर्यावरणविद नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण, मैं कहता हूं, विश्व के सबसे बड़े पर्यावरणविद थे। भगवान कृष्ण के द्वारा वन उपवन की जो महत्वता बताई गई, वह विश्व में किसी ने नहीं बताई। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत का जो महत्व बताया गया शास्त्रों में, वह किसी के द्वारा नहीं बताया गया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही नंद बाबा और यशोदा माँ और ग्वाल वालों से कहा गया कि इंद्र की पूजा करना बंद कर दो, इंद्र से हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारी जो गाय हैं, हमारी जो खेती है, हमारी रक्षा करने वाला वह गोवर्धन है। इंद्र का प्रकोप भी सहा और उस गोवर्धन को धारण कर कर ब्रजवासियों को, भक्तगणों को प्रेरित भी किया कि इस गोवर्धन की आप पूजा करें। ये गोवर्धन हम लोगों का अन्नदाता है, इस गोवर्धन से ही हमारी रक्षा है। तो एक तरफ गोवर्धन की महिमा का वर्णन किया, दूसरी तरफ गोवर्धन में से स्वयं प्रकट होकर समस्त पूजा और भोग स्वीकार भी किया। ये गोवर्धन मुझसे अभिन्न है, मेरा ही स्वरूप गोवर्धन है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया, यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र नो जमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में मनः सुखा। जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ जमुना नदी नहीं है, वहाँ मेरा मन सुख को प्राप्त नहीं करता है। भगवान कृष्ण ने यह बात अपने स्वयं के मुख से कही।
जमुना में कालिया नाग था। कालिया नाग के विष से समस्त जलजीव भयभीत थे, जमुना को छोड़ दिया। जमुना प्रदूषित हो गई और वह प्रदूषण हुआ भगवान कृष्ण के समय। गौरांग प्रभु ने कहा कि जमुना अभी भी बहुत प्रदूषित है। मेरे मन में आया कि जब भगवान कृष्ण के समय भी प्रदूषित थी, तो इस समय कलयुग में प्रदूषित है तो क्या है। किंतु आवश्यकता है कि भगवान कृष्ण ने उस कदम्ब के वृक्ष से छलांग लगाकर कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया और उस कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर कर उस कालिया नाग से कहा, जब उसकी पत्नियों ने जीवन दान मांगा तब कहा कि जमुना को छोड़कर तुम अन्यत्र चले जाओ, इस जमुना का प्रदूषण समाप्त कर दो, जमुना को प्रदूषण रहित कर दो। तो कालिया नाग ने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज, आपने तो मुझको दया कर कर जीवन दान दे दिया, मुझको छोड़ दिया आपने, किंतु मैं अब यहाँ से जाऊँगा तो वो है आपके गरुण महाराज है ना, वो मुझको दबोच लेंगे और वो गरुण जी जो है मुझको पकड़ लेंगे, वो गरुण जी मुझको नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मस्तक पर मेरे पैरों के, मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, और जिसके मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह बन जाते हैं, विश्व की कोई ताकत नहीं है कि उसका कोई अहित कर दे। तो उस कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए गरुड़ महाराज ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जहां चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं, विश्व में किसी की ताकत नहीं है कि वह उसका कुछ बिगाड़ सके। कल इस इको विलेज में श्री राधानाथ महाराज और गौरांग प्रभु के साथ उस वृंदावन के सप्त देवालय और पूरे ब्रजमंडल का भ्रमण किया। वृंदावन का एक प्रतीकात्मक भव्य दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, समस्त देवालय के दर्शन हुए, मान मंदिर का भी दर्शन हुआ, राधा रानी का भी दर्शन हुआ, जमुना नदी का भी दर्शन हुआ, राधा कुंड श्याम कुंड का भी दर्शन हुआ, गोवर्धन की परिक्रमा भी बहुत जल्दी लग गई। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जहाँ चरण चिन्ह पड़ते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह यहाँ अंकित होते हैं, दिखाई देते हैं, उस स्थान का कोई कुछ विश्व में बिगाड़ नहीं सकता। इस इको विलेज का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान के चरण चिन्ह दृश्यत हो गए। साक्षात गोवर्धन शिला जहाँ मौजूद है, साक्षात यमुना नदी का प्रतीक रूप यहाँ विद्यमान है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वो है, वास है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी होने के नाते एक बात कहते हैं, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, इसलिए क्षमा प्रार्थी पहले हूं, कि हम ब्रजवासी कहते हैं कि कृष्ण अगर पूर्ण ब्रह्म है तो वह पूर्ण ब्रह्म वृंदावन और ब्रज में है, वृंदावन और ब्रज से बाहर पूर्ण ब्रह्म नहीं है। अब आप कहेंगे कैसी बात कही कि अगर पूर्ण ब्रह्म है तो वो ब्रज में और वृंदावन में ही है। वो ब्रज में और वृंदावन में इसलिए पूर्ण ब्रह्म है कि वहाँ राधा रानी उनके साथ है, बिना राधा रानी के कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इसलिए राधा रानी जो है
वह कृष्ण के साथ वृंदावन में है और ब्रिज में है, ब्रिज के बाहर। हमने द्वारका में भी कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म नहीं माना, हमने गुरुवायूर में भी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म नहीं माना। क्यों? क्योंकि वहां राधा रानी उनके साथ नहीं है। तो राधा अगर है तो वह वृंदावन में है, वहां भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के रूप में हम लोगों के मध्य विराजमान है। शास्त्रों में पर्यावरण के बारे में पर्याप्त उल्लेख और वर्णन आता है, किंतु शास्त्रों से वह शिक्षा हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि देवताओं और राक्षसों के बीच भी समुद्र मंथन हुआ। देवताओं ने और राक्षसों ने भी समुद्र में, क्षीर सागर में वासुकी नाग को बांधकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन का अगर सीधी भाषा में हम अर्थ लगाएं तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया। उस समुद्र मंथन में लक्ष्मी भी प्राप्त हुई, ऐरावत हाथी भी प्राप्त हुआ, कामधेनु गाय भी प्राप्त हुई, धन्वंतरी भी प्राप्त हुए, अनेक रत्न प्राप्त हुए। अंत में पर्यावरण में, उस समुद्र मंथन में अमृत भी मिल गया। अब वो अमृत मिल गया, तब देवताओं ने भी मोहिनी का रूप धारण करवाया, मोहिनी भी प्रकट हुई, जो राक्षसों को चकमा देकर अमृत जो है देवताओं को दे दिया। किंतु समुद्र मंथन चलता रहा और अंत में उस समुद्र मंथन से विष निकला। वह विष उस पर्यावरण का दुष्प्रभाव जो है वह प्राप्त हुआ। अब जब विष निकला तो उस विष को ना तो देवता लेने को तैयार, ना राक्षस लेने को तैयार। उस विष को जो है कोई भी लेने को तैयार नहीं। अंत में भगवान शंकर को याद किया गया। भगवान शंकर को याद कर कर भगवान शंकर से उस विष को धारण करने के लिए कहा गया। भगवान शंकर ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया, तब भगवान शंकर नीलकंठ बने। उनका एक नाम नीलकंठ है। किंतु आज इस कलयुग में हमें वह नीलकंठ के दर्शन नहीं होते। आज हम लोग जो प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, वह पर्यावरण हमको उसके बदले वह विष दे रहा है। उस विष की हम लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन किस प्रकार इस पर्यावरण में अपने आप को शुद्ध रख पाएगी। यह जीवन का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वाटर लेवल प्रत्येक वर्ष जो है वो डाउन होते जा रहे हैं, वन समाप्त होते जा रहे हैं। हम लोग एक भौतिक जगत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं पर्यावरण से हटकर। इस भारत का प्राचीन इतिहास यह है कि यहाँ का मनुष्य का जीवन पर्यावरण के साथ ही व्यतीत हुआ। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत बहुत बड़ा पशुओं का पालक देश है। बिना जंगल के, बिना जल के, बिना पर्यावरण के यहाँ के लोगों के जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसलिए पर्यावरण हम लोगों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ श्री राधानाथ महाराज और गौरांग प्रभु के लिए कि आपके द्वारा ब्रज के जो लुप्त कुंड हैं, वह कुंड जहाँ पर कि जल समाप्त हो गया कुंडों का धार्मिक महत्व भी है और पर्यावरण का भी महत्व है, और वाटर लेवल जो है उस पूरे एरिया का जो है वो मेंटेन होता है। तो उसकी महत्वता के लिए गौरांग प्रभु के द्वारा अभी कुछ महीने पहले वृंदावन में आकर अपनी पूरी टीम के साथ सर्वे किया गया, और वह कुंड अब समाप्त हो गए, बल्कि कुंड के साथ जो हम लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया कि उस गांव के, उस कस्बे के, उस नगर के जो ड्रेनेज थे, वह ड्रेनेज भी उस कुंड में गिरने लगे। मतलब जो एक पर्यावरण का भयंकर जो रूप है, उस भयंकर रूप का परिदृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है। कई कुंड एंक्रोचमेंट हो गए, कई कुंड लुप्त हो गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि वास्तव में गौरांग प्रभु को गौरांग महाप्रभु ने ही प्रेरणा दी है। जो गौरांग महाप्रभु की प्रेरणा से 500 साल बाद गौरांग प्रभु में यह स्फूर्ति श्री राधानाथ महाराज की प्रेरणा से यह आई कि इन कुंडों को दोबारा से रीस्टोर किया जाए, इसका जो वाटर सिस्टम है दोबारा से रिचार्जेबल हो। जो बरसात का पानी है ये अमूल्य है। इस बरसात के पानी की ये भगवान की देन है। जो पंचभूत हैं, जो पृथ्वी के पर्यावरण के पंच आधार हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि आदि, तो ये सब भगवान की देन है। मनुष्य ने कुछ नहीं किया है। हम लोग इस हवा का आनंद लेते हैं, ये भगवान की है, देन है। इस वन का जल का आनंद लेते हैं, ये उस परम ब्रह्म की कृपा है हमारे ऊपर। किंतु हमको यह दायित्व बनता है कि हम उस पर्यावरण को शुद्ध रखें, उस जल को भी शुद्ध रखें, उस वायु को भी शुद्ध रखें, उस पृथ्वी को भी शुद्ध रखें। जिन तीर्थ स्थलों के बारे में कल गौरांग प्रभु कह रहे थे कि भारत में के करीब 700 तीर्थ स्थल हैं, उनको इस पर्यावरण के द्वारा हरा भरा करना, इस पर्यावरण के द्वारा उन्हें पुनः उसके मूल स्वरूप में स्थापित करना, यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ा कार्य है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की इस छोटी उंगली से गोवर्धन को उठाया, किंतु जो ग्वाल वाल थे उन सब ने अपने अपने डंडे लगा कर रखे। भगवान कृष्ण को ये आभास कराया कि ये हमारे डंडे से रुक रहा है, तुम्हारा इसमें जोर नहीं है, ये हमारे डंडे से है। किंतु भगवान ने एक क्षण के लिए अपनी उंगली नीचे की तो वो गोवर्धन गिरने लगा, उनकी लाठियां चरमराने लगी। तो इसलिए सहयोग तो सबका चाहिए, सबका यह दायित्व भी बनता है कि इस कुंडों का पुनरुद्धार हो, वृक्षारोपण हो, प्लांटेशन हो। बिना प्लांटेशन के जिस तरह की यहाँ हरियाली और यहाँ जो वातावरण है वह देखने को जो है नहीं मिलता, तो वह भी अपने आप में एक बहुत ही आवश्यक है। रसखान की एक बात याद आती है। रसखान एक मुस्लिम कवि थे। उन्होंने रसखान ने एक पद लिखा है जो ब्रज के ऊपर ही है कि वह ब्रज का ही रहना चाहते हैं और ब्रज में ही रहना चाहते हैं।
उनकी वह पद मैं आपको बताता हूँ। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मुसलमान होने के कारण भी रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इस दोहे में उन्होंने यह लिखा, उनके मन के अपने भाव लिखे कि मुझे अगर इस योनि के बाद मनुष्य का भी जीवन मिले तो मैं मनुष्य योनि में भी जीवन वहां चाहता हूं जो गोकुल ग्वाल वालों के बीच में मुझे जीवन मनुष्य योनि मिले। और अगर मैं पशु भी बनूं, भगवान मुझे अगली योनि में पशु भी बनाए, तो मैं पशु उस नंद बाबा की जो गायों का झुंड है उसकी बीच की एक गाय बनूं, जिसको कि कृष्ण और बलराम चराने के लिए वन में लेकर जाते हैं। और यदि पत्थर बनूं तो पत्थर भी उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया। और अगर पक्षी बनूं तो पक्षी उस पेड़ का बनूं जो कालिंदी जमुना के तीर पर कदम्ब पर मैं वहां बैठकर, जिस कदम्ब के नीचे भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं, अपनी बंसी बजाते हैं। भाव यह है कि किसी भी प्रकार किसी भी योनि में जो जन्म मिले, किंतु वह ब्रज का और कृष्ण का संग नहीं छूटना चाहिए। चाहे किसी भी रूप में हमारा जन्म हो योनि में, किंतु हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहें। आज श्री राधानाथ महाराज का 40वां संन्यास वार्षिक उत्सव है। शिकागो से एक नवयुवक ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। शिकागो से वो यात्रा कहीं भी जा सकती थी, किंतु जब भगवान की प्रेरणा होती है और भगवान किसी से जो अपना कार्य कराना चाहते हैं, तो उस नवयुवक को 1971 के लगभग वृंदावन में लेकर आ गए। और वृंदावन में लेकर आकर वृंदावन और ब्रज का भ्रमण करा दिया। और वह नवयुवक उस ब्रज और वृंदावन का भ्रमण कर अपने आप को वहां उन्होंने खो दिया। He lost his heart. He lost everything in ब्रज मंडल। प्रारंभ में राधा रमन मंदिर का जो मुख्य द्वार है, उस राधा रमन मंदिर के मुख्य द्वार पर राधानाथ महाराज और इनके एक मित्र थे श्री असीम कृष्ण, दोनों रात्रि को वहां अपनी रात्रि बिताते थे। प्रातःकाल उठकर जमुना स्नान कर श्री राधा रमन की मंगला के दर्शन करना नित्य का उनका नियम था। ठाकुर ने, कृष्ण ने, राधा रानी ने स्वयं उनको प्रेरणा दी। आज जो एक परिवर्तन हम इस जगत में देख रहे हैं, जो एक विजन है, जो चिंतन है, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वह पर्यावरण का हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे हरिनाम के प्रचार का हो, चाहे वो बुक पब्लिकेशन का हो, राधानाथ महाराज के द्वारा वह सोच, वह विजन अपने भक्तों को दी गई। ये
आप लोगों के लिए मैं कहता हूं कि स्वर्ग से ज्यादा और स्वर्ण से भी ज्यादा है। यह एक अतुलनीय निधि आप लोगों को राधानाथ महाराज से प्राप्त हो रही है। अगर यह वातावरण, ये आध्यात्म का जीवन, ये पर्यावरण का जीवन, ये मनुष्य का जीवन हम लोग अगर नष्ट कर देंगे तो इस जन्म के बाद हमको नहीं पता है कि हम किस योनि में जाएं। किंतु 84 लाख योनि में यह अपने आप में सत्य है कि हम इस एक योनि में, मनुष्य योनि में हैं, जिस मनुष्य योनि में हमको बुद्धि भी प्राप्त हुई है, विवेक भी प्राप्त हुआ है और हृदय में भावनाएं भी हमको प्राप्त हुई हैं। तो मैं आप सभी भक्तों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वह राधानाथ महाराज की कृपा से आपको जो भक्ति, एक पर्यावरण की सोच, एक आध्यात्म का जीवन जो प्राप्त हुआ है, अपने इस लौकिक जगत में, इस भक्ति के स्वरूप में, एक भक्त के रूप में हम उनके उस विचारधारा को, उनकी उस कल्पना को जो भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति समर्पित है, उसे सार्थक बनने में एक चींटी का भी योगदान होता है, एक गिलहरी का भी योगदान होता है। जिस प्रकार से वो किसी भी रूप में वो अगर योगदान होता है तो वह योगदान हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंकुरा। ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, किसी को नहीं पता, और ये क्षण भंगुर है। कभी भी किसी क्षण जो है वो मनुष्य देह हमारी समाप्त हो सकती है। तो जितना हमारे जीवन का समय है, हमें उनके मार्गदर्शन में, गौरांग प्रभु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह जो इको विलेज का जो प्रोजेक्ट है, वास्तव में मेरा प्रथम बार यहाँ आना हुआ। I am really very grateful and thankful to Gaurang Prabhu and Radhanath Maharaj that they show me a real Vrindavan, जैसा वृंदावन होना चाहिए उस वृंदावन के परिदृश्य की एक कल्पना करा दी। हम वृंदावन में जन्म हुआ, वृंदावन में पले बढ़े, बड़ा हुए, किंतु आज वृंदावन की और ब्रजमंडल की स्थिति को देखकर मन में दुख और कष्ट, आत्मग्लानि होती है। इसको कहने में मुझे यहाँ जरा सी भी शर्म नहीं है। कष्ट होता है कि हमने जो बचपन में वृंदावन का थोड़ा बहुत स्वरूप देखा, जो वृंदावन का थोड़ा बहुत जमुना नदी का स्वरूप देखा, जो वन का स्वरूप देखा, वह बहुत अधिक तेजी के साथ लुप्त होता जा रहा है। और गौरांग प्रभु ने अभी कल बताया चर्चा में कि नो प्लास्टिक जोन, यह भी एक हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यह प्लास्टिक एक कलयुग में राक्षस के समान है। यह राक्षस बहुत जल्दी नहीं मरता है। इस राक्षस को, जैसे भगवान बड़े दयालु होते हैं, राक्षस को जैसे हिरण्याकश्यप, कल नृसिंह चतुर्दशी का है, हिरण्याकश्यप को सबरे उन्होंने वरदान दे दिए, ना रात में मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, कभी नहीं मरेगा वो। तो इस प्रकार का भगवान तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने सब वरदान दे दिए कि किसी प्रकार से कुछ नहीं मर सकता है। तो ऐसे ही भगवान ने इस कलयुग में इस प्लास्टिक को भी वह वरदान दिया हुआ है। वह किसी से मरने वाला नहीं है, किंतु उसको मारने के लिए भगवान को नृसिंह का रूप धारण करना पड़ा, तब हिरण्याकश्यप का वध हुआ। तो इसलिए
उस गौरांग प्रभु के रूप में भी नो प्लास्टिक जोन के रूप में हमारे मध्य ये उपस्थित हुए हैं, एक अवतरित हुए हैं कि जो है उस प्लास्टिक को इस पृथ्वी से हम नो प्लास्टिक जोन बनाएं। यह प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा भयंकर राक्षस है। तो अंत में मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी आगे वक्ता हैं। मैं पुनः राधानाथ महाराज श्री राधा रमण देव के चरणों में निवेदन करूंगा कि श्री राधानाथ महाराज को और शक्ति और प्रेरणा और स्वस्थ लंबा जीवन दें, जो उनके मार्गदर्शन में गौरांग प्रभु और सब आप सभी भक्तगण इस ब्रज के भाव को, इस पर्यावरण के भाव को, इस भक्ति के भाव को विश्व के मानस पटल पर इस प्रकार स्थापित कर दें कि यह ब्रजमंडल समस्त विश्व में इस प्रकार व्याप्त हो जाए कि एक जो भगवान कृष्ण के समय और चैतन्य महाप्रभु के समय जो ब्रज का स्वरूप था, जो कुंड के स्वरूप थे, जो उपवन के स्वरूप थे, जो वन के स्वरूप थे, जो यमुना का स्वरूप था, वह पुनः हम लोगों को उसी रूप में देखने को मिले। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पुनः मैं गौरांग प्रभु के लिए जो भी मेरे लायक ब्रज में सेवा होगी मैं तैयार हूँ। जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैं जहाँ भी मुझे ये उपयोगी समझें मुझे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटी जीव की तरह से, छोटी चींटी की तरह से इनके लिए समर्पित हूँ। इस कार्य को, ब्रज के पूरे कार्य को संपन्न कराने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मनाभ गोस्वामी जी। Thank you very much for sharing your heartfelt emotions on the state of Braj and how it is so important to create a transformation at this very moment. So I'll just call upon a very good dear friend and well-wisher, Dr. Nawaljit Kapoor, who is the Principal Secretary for Ministry of Tribal Affairs. We got connected through Yudhishthir Govind Prabhu from ISKCON Delhi almost an year and a half back. And Dr. Kapoor has been very encouraging to various NGOs and organizations who are doing very positive work in various tribal areas and rural areas. And in fact, he was a very successful bureaucrat for many years in the income tax. But he really wanted to do something positive in the tribal affairs space. So this was a posting which he really was looking forward to. And in the last few years, he has completely transformed the scope of, how things are done in the tribal ministry. And in fact, he was sharing with us yesterday that in spite of the COVID and severe crunch on budgets, he just presented a 4-year budget, 4 to 5 year budget for 28,000 crores for starting 700 new schools in various tribal areas across India, and ultimately it got successfully passed, and it is going to be implemented over the next few years. So he has come here on a visit to support some of the initiatives which Govardhan Eco Village is doing in both rural development, healthcare and skill development, and we are working closely under his guidance and supervision. He was on a tour with Honorable Minister to Nasik, so on the way back he said, I'll just stop over and see some of the initiatives which all of you are doing, and it just happened to coincide with today's conference.
So I request you to please come forward and speak for a few minutes your message to everybody. Respected Gurang Prabhu ji, Padmanath Swami ji, all esteemed dignitaries who have come from across the country. In fact, I was more keen to listen than to say something. But since I have a flight in the afternoon, so Prabhuji has asked me to speak first. I represent the Ministry of Tribal Affairs. As all of you know, the tribal areas are God-gifted areas. There are not only forests, there are medicinal plants, the rivers, the oxygen, and everything which environment needs are available in tribal areas. What Padmanath Swamiji was telling about Vrindavan, in fact, our ancient India, every area was representing Vrindavan only. Vrindavan was because Bhagwan Krishna was there, river was there, and all the upvans, sarovars, everything was there. But I would say, till today, tribal areas are the only areas which have not yet been affected by the commercialization, by the fertilizer, by the pesticides, or by the these genetically modified seeds. As a Ministry of Tribal Affairs, though we are working at the government level with the help of the state organizations, but the organizations like ISKCON, Art of Living Foundation, Patanjali, RK Mission, Bharat Seva Ashram, and all these organizations which are not only rooted to the grassroots level, but basic principles of ancient India, Ayurveda, yoga, spiritualism, these are being maintained by them. So, as a ministry, we are not complete unless until organizations like you, and not only the blessings of your organizations, but the vast team which is present with you people. So I always request Gurang Prabhu ji. Yesterday I was requesting him, if it is possible, why don't we give the entire Palghar district to this mission so that the entire district, and not only the district but the country, can become Bridge Dham. So we are not only working in education, health. In fact, I was telling that the allopathy has its advantage also, but has more disadvantages. So I was requesting that Panchagavya, cow-based programs can be initiated, and Ayurveda also. And likewise, our Western education system, we are daily noting that lot of anxiety is there in the people, stress is there, divorces are happening. India was one country where divorce was virtually unheard of. Now it is coming to 30%, 40% divorce is there. So at the education level, in the IITs, education institutes, organization like ISKCON, they have a very important role to play, so that the youth, they get associated with our ancient systems. I will like to listen more to the people who are present here, and with these few words, I convey my sincere gratitude to Gurang Prabhu ji and all the dignitaries who are present here, that it was my pleasure to be here. And I would request that any of your organizations, wherever you are, whatever projects, it may be health, it may be education, we have a scheme of Center of Excellence.
So we take innovative projects also, and from our side, this is a very, very small contribution which we are making towards this Palghar district projects also. So anywhere in India, wherever you feel, you can work with us. You can take my number from Gaurang Prabhuji or the entire team here, and directly you can communicate with us. And we can take similar projects which not only save the environment, tribal areas also slowly the deterioration is happening because more and more people are now going there with road, with construction. So they are also under a lot of stress. So there are so many areas we can work together. With these few words, because time is also limited, I once again convey my sincere gratitude to the entire team, and Hare Krishna. Thank you very much, Dr. Nawaljit Kapoor Saab, and your words mean a lot to us, and definitely we are all there to support in every possible way. In 2015, there were almost 2.51 million deaths due to air pollution in India. Globally, there were 9 million deaths, and India contributed almost 28% of those deaths purely because of air pollution. 70% of the surface water in India is not worthy of consumption because of pollution, and almost 40 million liters of sewage water is dumped into rivers across India every single day. On the other hand, India is a country which has almost 630,000 villages, almost 5,000 towns and 400 cities, but also the 2011 census indicates that there are close to 2 million temples. And in the government records, 108,000 prominent temples have been mentioned. Interestingly, Tamil Nadu and Karnataka have almost 34,000 temples. Andhra Pradesh and Kerala have 43,000 and 28,000 temples. One of the major chunk of temples in India, almost more than 100,000 temples, are from South India itself. We have with us one of the most prominent ISKCON leaders from Tirupati, the current Vice Chairman of GBC and Temple President of ISKCON Tirupati, His Grace Revati Raman Prabhu. He joined ISKCON way back in 1988. He did his engineering from Bangalore, and then he was working there, and he connected with ISKCON devotees, and in 1991 he took initiation from His Holiness Jayapatak Swami Maharaj, and then he joined initially ISKCON in Bangalore, and then just after 1995 he moved to Tirupati, and he had a revolutionary way of constructing this ISKCON Tirupati temple. It is an example of innovation and entrepreneurship. He saw that there are 60,000 to 100,000 pilgrims who come for darshan on an average day. So almost you have 30 to 40 million pilgrims who come every year. So he thought that ISKCON can contribute by distributing Bhagavad Gitas. So there were stalls set up in collaboration with TTD, and ISKCON's book distribution stalls in all of these locations in the TTD temple resulted in massive distribution of Bhagavad Gitas, and with the revenue which was generated from this, a beautiful massive temple was inaugurated in 2008. So this temple, we can say, has been completely built on the foundation of Bhagavad Gita. So Tirumala, which sees almost 23 to 40 million visitors every year, also has to deal with almost 240 million tons of sewage and garbage every single day. But
It is very impressive how Tirumala has managed their waste. One of the greenest, I would say, temple town in India, and lot to learn for other places. And on behalf of today's conference, we would like to invite His Grace Revati Raman Prabhu to come and share his experiences and his vision and wisdom with all of us. Let us welcome Revati Raman Prabhu with a round of applause. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो वेंकटेशाय। राधे राधे। It's a practice in Tirupati. Any lecture we go and give, we got to say Om Namo Venkateshaya. Then the TTD, they recognize us. As we say Radhe Radhe, Vrindavan. So my humble obeisances and respects to the dignitaries present here. His Holiness Radhanath Swami. By his blessings, I am here today, taking advantage of being with so many wonderful exalted devotees from Vrindavan, Puri, and His Holiness Padmanabha Goswami, my humble obeisances. Shivasaji Goswami, my humble obeisances. Anupama Chakravarti Prabhuji, my humble obeisances. Kishore Chakravarti Prabhu, my humble obeisances. Shri Ram Kumar Prabhuji, Pandayji from Puri, my humble obeisances. And Mother Chitra Iyer, my humble obeisances. And Gauranga Prabhu, my dear friend, and a very nice guide. Such an exalted, wonderful devotees. We can see what they have done here. Radhanath Swami and Gauranga Prabhu and the team of devotees, they have done an amazing job. Cannot imagine. My first experience here, GEB, in the year 2015, I came here for GBC college. 15 days I was here. And again, after a few months, 6 months, again 15 days. It was an amazing experience. Even today, I cherish those days. 1 month time here, attending the college, learning the subjects, such a beautiful atmosphere, move around, be with the devotees, have nice prasadam. Wow, what a relief from management. We all know what is management, right? It was like, I got my strength back. I was hankering the first 15 days. Again, I was hankering the next batch. Again, 15 days. I came here, had a wonderful time. How this has manifested? It's only the skill and the talents. It's the instruction from the higher authorities, from the parampara. As we heard from Gauranga Prabhu, how this manifested. How it came out from Radhanath Swami's heart. This is the whole thing, Echo Village. Is nothing but it's come out from his heart. Dharmasya tattvam nihita guhayam mahajanayana garsa pantaha. These kind of things cannot happen just like that. Of course, you have a lot of money, crores of rupees, millions of dollars. Anybody can do this. But one element is not possible, that is devotion. Dharmasya tattvam nihita guhayam mahajanayana garsa pantaha. Because Prabhupada wanted this kind of a setup in West Virginia. Somehow it never happened. That instruction Radhanath Swami carried in his heart, and it happened here. This is a secret. When we hear from Mahajana
miracles will take place. Anything can be done. It's not by tarko pratishta, not by logics, not by simply having a lot of skills and talents. No. Tarko pratishta, sutyo bhinna, simply studying the scriptures, no, it will not work. Knowing all the Vedas, no. It's all dominated by modes. Naso risheshya matam na bhinnam. Saying yes to all kinds of philosophy will become a great saint? No. How? How to get this bhakti and give bhakti to others? Dharmasya tattvam nihita guhayam mahajana enagrasa pantaha. Mahajana, Prabhupada, we all know that. He had the desire. That desire, Radhanath Swami took it very seriously in his heart. And this whole project manifested. Here is the main thing is that devotion, bhakti to Radha Govinda, Radha Madan Mohan, Radha Shyam Sundar. And see so many devotees. Anybody can create, but not the devotees. Not the devotees. To make devotees is not an easy thing. It's only the devotees. It comes from the heart. You know, Krishna, ultimately Lord, Krishna is the one. The pure devotee, he carries Krishna in his heart. What Krishna was, Krishna is the order giver. And the pure devotees, and in the parampara, they are order takers. Then miracles will take place. We see the development here, so nice, so wonderful. In 2015, when I was here, there were 2-3 buildings were there, very nice. Now so many buildings have come up. That is so nicely, eco-friendly. Why? Facilities, caring. It's nothing but caring, caring for people. Bring them here. Let them have a nice time. Ultimately, how to get connected to Krishna, Radha and Krishna. How to go back home, back to Godhead. This is a facility, how to go back home. And Radhanath Swami, we all know, such a caring devotee he is. He shows a lot of love to me, though I am not qualified. You know, once he told me, we are sitting on the banks of Yamuna. Then he told me, Revati Prabhu, now and then you come here to GEV, you come here. Don't think it's somebody's project. It's our project. And he said, it's your project. You should come. That really touched my heart. Touched my heart. Look at that magnanimity. The magnanimous nature. Let's involve everybody. Call everybody. Receive everybody. Let's care for them. Because these devotees, these pure devotees, they carry a love in their heart. We can feel that. You know? Because he took the instruction of Srila Prabhupada, we all know that what he has done to the world, what Prabhupada has done to the world. And how is that? They're so pure. The activities are pure, no defects. Brahma pramada vipralipsya karna patva arsha vignavakya nahi dosha sabha. Their words are pure. It's without any kinds of defects. They don't commit mistakes. No cheating propensity. They will not get illusioned. Senses are perfect, not imperfect. So this Arsha Vignya Vakya Nahi Dosha Sabha. When these people speak, it pierces the heart. Things change. That's the beauty of Srila Prabhupada and his disciple, exalted devotee Radhanath Swami. And his heart he gave to Gauranga Prabhu. Gauranga Prabhu, such a wonderful devotee, he's from IIT, mentally super intelligent. You know, at the same time, taking the instructions, respecting the instructions, following the instructions very carefully, and building a team and creating such a beautiful dham. Is a simple thing. I was just moving around yesterday, so cool and calm, so wonderful. I was understanding, but cool and calm for me now. Behind, what's the job? How tough it is. Such a big headache it is. Who knows that? Like one day Srila Prabhupada was holding his head like this. A devotee walks into the room. Prabhupada, how come you are holding your head? Prabhupada says, headache. Prabhupada, you are a transcendental person. You get a headache?
Then Prabhupada says, you don't know what is management is. You don't know what it is like to manage the whole world. So like that, sacrifice. For what? People like us can go back home, develop devotion towards the Lord. So this is the green revolution actually. Caring for everybody, human beings, plants, trees and shrubs, every insect, every bird is taken care. He is a devotee, cares for everybody. Like Srila Prabhupada, one day he was having his prasadam, then he saw a small insect crawling. Then he called his secretary and said, I think this insect is very weak. Give some prasad. Give something to eat. He brought some leaves, flower petals, and put it in front of the insect. And this insect started nibbling. Then Prabhupada, seeing that, he started harming his prasadam. Tell me, who will do that? Anytime I never did that. Before eating, just to see any ant is there, any creature is there, hungry. No. But the pure devotees means they care for everybody. They're caring. And what Mahaprabhu has given us is Sankirtana. What is Sankirtana? I, you, and we. Together, let's call Krishna's name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Sankirtana itself is a caring movement. And we see in our parampara, always chanting Hare Krishna. Sankirtana, come together, let's chant together, I, you and we. Let's chant together, care for each other, and Lord is present there. Our movement is caring movement. Coming to Tirupati, I saw Lord Balaji's photograph. I became very happy, And Tirupati, very beautiful. So beautiful it is. Go to Tirumala Hills, as said by Gauranga Prabhu, it's all green, clean and green. So nicely maintained. When Srila Prabhupada saw Tirupati temple, the management, the atmosphere, he told all his people, his disciples, all the temples in ISKCON should be maintained like this. But they struggled. It's not easy. It was controlled by different managements, different kings. So many unlimited problems they all faced. Only in the 60s, it came to some shape. Things started changing after so much of suffering. They made a committee. Then they made an executive officer, a proper structure. Then things started changing, started developing very nicely. And we know it's the richest deity in the whole world. Per day, the undi money you get, something like 2 crore rupees. Undi alone, 2 crores. What it means? Huge. And they have 16,000 employees. Apart from so many thousands of brahmanas to take care of the deities. How this happened? Again, a pure devotee. Acharyas. Ramanujacharya. His kindness, his caring, and his humility. Humility is the main thing. Humility and tolerance, these two things are there, things will happen. That's what I see here. I see in Radhanath Swami's humility. So sweet and so humble he is, always. And Gauranga Prabhu, with all his talent, he is so humble. So wonderful. When these qualities are there, things will manifest. Once, when Ramanujacharya comes to Tirupati, down Tirupati, then Sri Shaila Purna, one of his guru, he comes down to receive Ramanujacharya. Then Ramanujacharya says, why you have come? You have sent some junior devotee. Then Sri Shaila Purna says, I am the junior most in 4 Mada Street in Tirumala. That's the humility. I am the junior most, but he was the senior. He's an Acharya. Actually, Ramanujacharya came there to learn Ramayana from him. What is there to learn in Ramayana? It's only a story. What to learn? Hear from a pure devotee.
hear from a qualified devotee. Miracles happen when hearing is good. When Krishna Katha is heard properly, things will change. As Srila Prabhupada says, all the problem one faces is due to lack of hearing. I got a problem with my mind? Lack of hearing. Relationship problem? Lack of hearing. Spiritual problems? Lack of hearing. Problem with the body? Lack of hearing. What is this? What body has got to do with the lack of hearing? My previous birth, I never heard properly. So I have this body. If I had heard properly, I wouldn't have had this body. I wouldn't have suffered so much. My case. Not any one of you is my case. So like that, you see. So, I'm so happy to be here. And by the blessings of Radhanath Swami and Gauranga Prabhu, I got the opportunity to be with Padmanabha Goswami, Shivasa Goswami, Anupama Goswami. I had that association. As we spent some time evening with them, so qualified, so exalted. Just imagine, Radharaman temple. Radharaman, the most beautiful deity in the world. Radha Madan Mohan temple. Sanatana Goswami's heart. And Jagannath Puri, Jagannath Swami. You know, all these exalted devotees are here. Being with them, I've been purified. First I was thinking whether I can make it. But Gauranga Prabhu pushed me. You should come. you know, as a vice chair of the GBC, unlimited things to do. So many small things, many things, But he said, you should come. You should come. Your tickets we are booking. Then I thought, yes, I should go. I remembered Radhanath Swami, yes, I should go. I remembered his instruction, come here whenever it's possible. And I came here, and I've been benefited very much by these exalted devotees and all of you. Thank you very much. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Thank you very much, Revati Raman Prabhu, for sharing your wisdom and experiences from Tirupati. And for anybody who visits Tirupati from ISKCON side, they always connect with ISKCON Tirupati devotees for helping them for the darshan. Shivaram Maharaj has written a book called Navabraj Mahima, and in that he mentions about 5 types of Vrindavan. We speak about it all the time here at GV. Golok Vrindavan, Bhauma Vrindavan when Krishna was personally present. Drishyamana Vrindavan after Krishna ended his pastimes, the current Vrindavan what we see with our limited spiritual vision. 4th is Vrindavan in the heart of the devotees, and 5th is Vrindavan created on the instruction of the devotees. In the 5th type of Vrindavan, there are 10 Vrindavans which have been enumerated. First is Krishna himself created a Vrindavan in Dwarka. It is there in Sanatana Goswami's Brihad Bhagavatamrita description in 2 chapters. Second is Vrindavan created by Rupa and Sanatana at Ramakeli. Third by Srinivas Acharya, who created Vrindavan in Banbishnupur. Fourth is Vrindavan created by Rasikananda in Balasore. Fifth by Jai Singh Maharaj in Kanak Vrindavan outside of Jaipur. Sixth is a beautiful Vrindavan created by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in Sri Chaitanya Mutt. Seventh is by His Divine Grace Srila Prabhupada in New Vrindavan. Eighth is by Shivaram Maharaj himself at Hungary. Ninth is here at the Govardhan Eco Village. And the 10th is an interesting project called Uttar Vrindavan created in Almora. And we have with us Srimati Chitra Iyer, who joined the Himalayan Heritage at the age of 17, and it's a place where the overriding theme is harmony,
It is a farm centered on Vaishnava worship based on temple seva, introspection and meditation. Chitraji is also working closely with Nainital Nagarik Association for resolving civic issues and with Cedar Dehradun, University of Kalamazoo in Michigan, working on research on apple production and pollinator diversity. She is herself a very deep spiritualist, researcher, and deeply involved with trying to understand the 360-degree harmony as described by the Acharyas of Sri Vrindavan Dham. Her name was recommended to me by Srivatsji, and we are very honored to have you, madam, here for our conference. And on behalf of all the assembled devotees, let us welcome her with a round of applause. Hare Krishna. Pranams to the gurus who are always present and to the gurus who are present here and to the devotees and sadhaks of GEV. Jai Radhe. I owe everyone an apology. I did not want to reveal the place I belong to because we are fairly isolated and we abhor publicity. So I did not mention that we are Uttar Vrindavan, established by Yashoda Ma in 1929, along with her disciple Sri Krishna Prem. And Krishna Prem's Shishya Madhavashish is my guru, and I've spent a total of 21 years at the ashram. So my apologies for calling it a Himalayan hermitage. It is not something I started, but it is a life I love. I'm going to read out something. Whatever I say, anything good that I say belongs to my gurus, and all the mistakes are mine. My village looks out into fold upon fold of the Kumaon Hills, stretching to the horizon, where the flat line of Nainital China Peak marks the beginning of the plains. And again, beyond the 7,000-foot ridge that backs the village, the hills of the middle Himalayas stretch northwards for another 50 miles, ending abruptly where they meet the towering Himalayan snow range. On the western horizon stands Badrinath and Nilkant. On the eastern, the distant mountains of Nepal, and in the center, Trishul and Nanda Devi rise above the foothills, sometimes seeming to float on a mist as blue as the sky. This is the mighty barrage that checks the northward bound monsoon, and these hills that collect the rain and send it out as perennial streams southward to water and Sincho, the Gangetic Indian plains. Rajans Prabhu took me day before yesterday, on a brief tour of GEV to see your project. We are at the cusp of India's decision to ban single-use plastic from July 1st, 2022. And every act of ours generates plastic. And I believe that nothing will change until we look at our own consumption patterns, how we deal with the plastic that comes into our homes. The effort to reduce must also involve the producer. Plastic is actually a wonderful material in itself. It's a valuable invention, but it is disaster for the earth. Govardhan Eco-Village is an oasis. Your large water bodies, I mean, that's just amazing. It reminds me, the seeping of the water into the surrounding land to nourish the greenery that you're also lucky to have is rather like bhakti, I feel, which must infuse every aspect of our lives. For the most part, I mean, and the challenge always is how to spread the awareness. We don't think about water until there is a water shortage. And as was pointed out earlier, we don't notice the air we breathe until hit by respiratory diseases.
or notice the earth that we stand on. I call myself a gardener. I'm a Malin, not a Malkin, a Malin. I love growing things. I love seeing the magic of a seed turning to a flower or a fruit or wheat or barley or maize. It's a magical world. And I read that when a plant root pushes into the soil, it triggers an explosion of activity and bacteria, like when we are happy and endorphins fill us. We depend on soil for 99% of our food, but we hardly know it. A zoologist, on examining a kilo of mitti under a microscope, found more branches of the animal kingdom than a week-long safari in Africa. Bacteria, fungi, plants, and soil animals work unconsciously together to build an intricate, coherent world. It's like the architecture another Chitra is building, which is interconnected, harmonious, and cohesive. The connection between soil and plants is equally complex. Each releases chemicals. But they are so complex because the plant does not alert bacteria in general, but only that particular bacteria which will help promote its growth. How fantastic is that? It's like the relationship between a mother and child, lover and beloved, guru and disciple. Like GEV, our gurus built a small community of men and women pursuing one common aim, the spirit of mutual help and loving service to all. We are taught not to draw too sharp a distinction between our inner and outer life. We are instructed to be watchful and not be content to drift along, carried by unconscious tides. So if one has to put it as a system, then, to make the living use of a thing and not to make a dead use of it, which means to develop its efficiency to the highest degree possible. In other words, with life, creatively. A simple example might be, the water sitting in a dirty pot in your sink, which you just chuck down the drain. Well, water your plants with it. But there is a wonderful story by the Buddha on this issue, where a disciple went to him and said that my choga is torn and tattered. May I have a new choga? And the Buddha went up to him and looked at his choga, and sure enough, it was tattered. So he said, all right, and he instructed some other disciple to get this disciple a new choga. A few days later, he visited him and said, do you need anything else? Is the choga comfortable? And the disciple said yes. So he said, by the way, the Buddha said, by the way, what did you do with the old choga that you had? Tathagat, I use it as my bedspread. Then what did you do with your old bedspread? I turned it into curtains. But you already had curtains hanging there, so what did you do with your curtains? I sent it down to the kitchen to use to handle hot pots. So then what did the kitchen helpers do with the cloths that they already had to handle the bartans? They turned them into mops. And what happened to the mops? For the floor. And this is where us Vaishnavas will find it very difficult, but the disciple said, there was no more use we could make of those tattered mops. We turned them into wicks, which are burning in the oil in your room, Tathagat. And India has always been a country of recycling. We always recycled. We seem to have forgotten it all. Mysticism, which is the inner life of religion, in whatever way we understand it, must not be pushed to the background. Without it, there can be no true feeling of reverence for nature or any true understanding of man as a strand only in nature's web. We did not weave the web of life. We have exploited our rights. And we forget that whatever we do to the web, we do to ourselves. Would you like to know a little bit about our ashram? All right, okay. So Mirtola was founded in 1929 by Yashodhama, who was the wife of an Indian the first Indian vice chancellor of Lucknow University, Gyanendranath Chakravarti. Sorry, oops. Okay. Gyanendranath Chakravarti, and
She had her disciple with her, Ronald Nixon, who was an Englishman, who became Sri Krishna Prem, and he's well known for his commentaries and the book by Dilip Kumar Roy. And when they first came to Mirtola, I don't think Ma realized how cold it was going to be. This was 1928 and 29 when they found the property. And there was hardly any wood. The villagers had cut the trees down, the oak trees, there were shrubs, very few trees. And so, 6 feet of snow, and so she started rationing wood, and we call her our first environmentalist, someone who was very aware of cordoning off the property, planting trees during the monsoon, rationing wood, what is it called? We fell oak leaves for fodder. So doing it judiciously, not just hacking away at the tree. And this work has been continued by each one of our gurus who saw the interconnectedness between the inner life and the outer life, and they strove to build a world where everything sang with that spirit of seva. The seva begins in the temple. Everything is connected to the temple, which is the center of the ashram. The physical work gives us dignity of labor. You cannot grow a stalk of wheat for one person. So inevitably, when you farm, you grow for the larger family, you grow for the community, you grow for your country. But physical labor has a challenge. When you're asked to do something in the ordinary sense, which might be offensive, can you do it willingly? Can you do it without inner murmuring? And this leads us to the second aspect that we look at, which is introspection, because physical work will bring up all kinds of negative emotions, the entire gamut of them. So what introspection and self-reflection does is it helps us become aware of someone who can look at this also when we can step back. The third aspect that we work with is psychology, which is dream analysis. And the reason we do this is because when all these emotions come up, you need to find an emotional focus. And so we use this as a tool for understanding ourselves, not to become well-adjusted creatures in the world, but to understand ourselves. And when we understand ourselves, inevitably, everything changes in our responses. The fourth is meditation, which helps us find the still point. And every sadhak and devotee over here and anywhere in the world, this is what meditation is meant for, to find that still point. Yes. We attempt to live through the center, the heart. For only through that can the circumference of our lives find a focus. Without that center, all attempts at harmonious living can only find horizontal connections. The center raises the interconnectedness vertically, giving wholeness at every level. So we say, when you are suffering, you go, now there are only two ways you can go. You can either go down, you can call it prayer, or you can go up, connect with the buddhi, and we call that shreya. And each time you make the choice, you strengthen something in here. So the center raises the interconnectedness vertically, giving wholeness at every level. This is the effort of every sadhak, to find that center within him or herself, transcending the little concerns of every day. When we begin to align ourselves through loving seva to everything around us, we become part of the cycle of reciprocal maintenance, like the plant and soil. And we do this consciously. Our challenges are different from dhams, as we are not so easy to access. But even we in our mountain fastness must understand and adapt to a rapidly changing world fueled by technology and easy knowledge at our fingertips. Jageshwar, one of the 12 Jyotirlingas, is only a few kilometers from us, and it has been impacted by unbridled tourism. We have the disaster at Kedarnath in 2013 as a case in point. Sadly, memory is short, and the pressures and strains tremendous.
Waste disposal is a rising problem with hillsides strewn with plastic. Energy and water consumption on pilgrim routes are the other critical issues. We talk of low impact tourism, but what are the ways to implement this? We don't have end solutions. I mean, I would be interested to talk to you about how Tirupati does it, because our local school on the roadhead, it's a primary school, and there's a huge garbage dump next to it. I mean, it's really sad. I believe education is the key. But educating children below 10, educating a whole generation to understand not just their rights, but also their responsibilities, civic responsibilities as well. And that is the only thing that can close the gap, practical environmental education, which can close the gap between knowing and doing. Radhanath Swamiji, thank you so much for having me here, and congratulations on your 40th year of dedication. It's wonderful. And thank you, Gaurangji. And thank you, Haripriya, and Anup, I don't know where he is, and Rajhams, who took me around. Thank you for your time and generosity. Thank you to all the gurus. Pranam. Jai Radhe. Thank you very much, Chitraji, for sharing your vision and sharing your experiences from the beautiful project. Indians travel 4 times more for religious reasons than for business, as per data from NSSO. In 2018, the UP government released statistics that 29 crore 290 million tourists were recorded in UP, out of which almost 28.5 crore tourists were domestic and almost 38 lakhs were from abroad. Out of this, in the 4 most prominent religious places in UP, Prayagraj got 4.5 crore, Ayodhya got almost 2 crore tourists, Govardhan got 1.6 crore, and Vrindavan got 1.4 crore tourists. One of the most prominent tourist places now also happens to be one of the most exalted and worshipable holy place, especially for the Gaudiya Vaishnava community, which is Sri Jagannath Puri Dham. In 2019, 600,000 visitors came during the Rath Yatra period. In the Nava Kalevar year, we got almost 3 million tourists. In 2006, a 900-year-old well, 2 wells called Ganga and Jamuna, from where water for Jagannath's worship was being fetched, both of these wells became dry. Almost 24 million liters of water per day is being pumped from 2 aquifers, Balia Panda and Alabana, and the aquifers are drying up pretty fast in Jagannath Puri. Orissa lost almost 28%, which is 154 kilometers of its coastline, due to erosion over the last 20 years. Strong tidal waves were experienced in Jagannath Puri in 2006, 2016 and 2018. And so, Jagannath Puri is a very, very important holy place, but now fast under attack thanks to tourists, mainly from some of the prominent cities in Bengal. We have with us His Grace Madhavananda Prabhu, who joined ISKCON way back in the early 80s at LA, and he came to Bhubaneswar in 1993.
He is a disciple of His Divine Grace Srila Gaur Govinda Swami Maharaj. Madhvananda Prabhu has been active in publications of Vaishnava literatures, especially the Gopal Jiu publications, the Krishna Kathamrita and Krishna Kathamrita Bindu magazines are very, very popular amongst the Vaishnava community. His academy, and very recently, on behalf of BRC, he has very kindly accepted the responsibility of leading the Bhaktivedanta Research Center at Jagannath Puri. On behalf of all the assembled devotees here, we would like to welcome His Grace Madhvananda Prabhu to present his wonderful realizations with a round of applause. Guragraganya Ganagotra Goloduharam Goranga Gudatama Gopyada Kopa Briksham Gopala Gadharatidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Pancha Kalpatarubhischa Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. A few weeks ago, my wife and I had the good fortune of being at Govardhan, and one of our friends who's a local Dambasi there suggested to us that they have a custom, the Brijbasis, when you have a problem or if you have a strong desire, you take a box of sweets and you put it to the foot of Giriraj and you tell him what your desire is. And so we did that. We put a few boxes, and our desire was that we would get some association with some special saintly devotees. And yesterday, Krishna Kun was telling me, do you remember those boxes? And we feel very, very grateful to be here. I want to offer my pranams to Radhanath Maharaj, who's been a great well-wisher and wonderful example for all of us. And Srivatsa Goswami, who's also one of my great heroes for so long, and Padmanabha Maharaj, and Radhika Raman Prabhu, and Mother Chitra. Thank you very much for your wonderful talk. I feel very, very humbled and embarrassed to be here. Maharaj welcomed me, and a few days ago, and I told him that this is your quality of being a Mahatma, because you see everyone very equally, and even you welcome the mosquitoes, because I'm less significant than the mosquitoes. At least the mosquitoes are Deshis, but I'm a Videshi mosquito. So I'm a little confused what I should speak about Gauranga Prabhu, who's given such a wonderful project here and has given such nice talks, and I really appreciate how in between each person you're giving so many relevant statistics and facts and things. What can I offer to everyone here? Perhaps the best thing I can offer is a little bit of my own personal experience. Maybe that's the most relevant for everyone. Before I came to this movement, I wanted to find a sacred place. And I was living in a cave in Mount Lemmon in Arizona for some time because I wanted to find something spiritual. And then, it's a long story, but somehow I met the devotees, and I was living for many years in the Los Angeles community, and I always heard about India and the holy dhams, and I was so eager to try to come. I grew up in America in a family. We did a lot of hiking and spent a lot of time in the outdoors. And I was trained from a very early age
to whatever you carry in. When you're backpacking or hiking, you carry the same thing out. In fact, we'd carry extra things out if we'd find any garbage. Before I came to Krishna consciousness, I thought I wanted to be spiritual. I wanted to be like a sadhu. So I decided I would just go out on the road and just walk and just see where God took me. And I went all over America and different places, and I had one habit I would do at that time, which I felt was spiritual. I would pick up garbage. And I'm still picking up garbage something today. Sometimes we ask people, what is the number one product that's created in the world? And it's an interesting question. Many different people answer in different ways. They'll say cars, they say computers. They say make. We create in the world today is garbage. And I grew up humble way. And then I came to India very, very excited to come to the Dham and come to this very pious place. And it hurt. Some when I came to the Dham and I saw the situation. But I was able to appreciate the Dham, something because, as Srila Prabhupada would sometimes say, you see the Dham with your ears. And I had the good fortune of associating with saintly persons who were speaking about the Dham. I remember hearing a story how one ISKCON devotee in South America, his father was a mayor of a small town. And somehow this devotee convinced his father to come to Vrindavan. And the devotee glorified Vrindavan and said, Father, this is the most spiritual, wonderful place. In the world, and you have to come. Unfortunately, he didn't have such a good experience. And he told his son, he said, you know, our public toilets are cleaner than the streets in this place. So as Gauranga Prabhu was mentioning earlier, there's different types of darshan we may have. One is Drishyaman darshan, which he mentioned. We see the external things. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati once, there's a story, he was walking with the devotees in Mayapur, and there was some dead animal or something by the road, and it was a bad smell. And the devotees were all covering their faces when they went by. And Srila Bhaktisiddhanta suddenly stopped. And he said, you don't see that Sri Chaitanya Mahaprabhu is dancing here, the Panchatattva here? All that you experience is a bad smell. So that's our Drishyaman darshan. Rather, we should have Shabda darshan. We should take Chittapata, the pathway of seeing through the ears, as the Bhagavatam, 3rd Canto describes. We want to hear from saintly persons. We were discussing yesterday in a very wonderful meeting, Radhanath Maharaj spontaneously evoked by the Samadhi of Rupa Goswami here. And I was mentioning how a few weeks ago in Jagannath Puri we had a group of devotees, and someone was asking the question, how is it that so many pandas, they have a impersonalistic idea of Jagannath? And then I mentioned to the devotees, I said, we just did Harinam. We were sitting in the middle of a forest glade,
one of the few forests that we're able to take devotees to in Puri. And I asked the devotees when we were doing Harinam on the way here, how many of you noticed all the Tulsi Stambhas on the way? And everybody noticed that. And I asked how many of you noticed the writing in Oriya language under the Tulsi Stambhas. None of them had noticed that. But I said there's 16 words. That's the Hare Krishna Maha Mantra. And here in Orissa, it's the place of Chaitanya Mahaprabhu and Jagannath. And you'll find Tulsi outside everyone's home and the Hare Krishna Maha Mantra. But at the same time, there's some problems there. Once our friend Bhaktadas Prabhu, Prabhupada's disciple, was once in Puri, and one of our friends brought the tourist minister of Orissa to meet him. And the tourist minister was told, this man's a big businessman, he's very knowledgeable. And the tourist minister asked him, what can we do in Jagannath Puri to attract more tourists? And Bhaktadas told him, well, that's very easy. You should make it cleaner than Singapore and Switzerland. And then so many people will come. And the tourist minister kind of stammered, well, that's a very difficult thing. Why is it such a difficult thing? This is something I've been contemplating something about. When we speak about the vision of the Dham, there's Drishyaman Darshan, there's Shabda Darshan, but we want to come to the point of seeing Aprakat Darshan. We want to see the pastimes of Radha and Krishna going on right then. It depends on our consciousness. And I like to see Jagannath Puri, we call it the Jagannath Puri University of Braj Prem. It's a place where Sri Chaitanya Mahaprabhu went to do bhajan, to teach us how to enter into Vrindavan. And in that university, all the different tirthastalis are different classrooms, teaching us different lessons. And the first classroom is the Jagannath Mandir. And one of the major instructions there is about organized religion. Because the Jagannath Mandir is a very big place with so many millions of people coming every year, as Gauranga Prabhu was pointing out. But Mahaprabhu, he was going there 3 times a day, according to Lochandas Thakur and Chaitanya Mangal, and thereby teaching us that we should support organized religion. But at the same time, Sri Chaitanya Mahaprabhu was staying in another place close by, which is a Gambhira. And there he was with just a few devotees, Srup Damodar, Govinda, his servant, Roy Ramananda, Raghunath Das Goswami was there sometimes. And thereby he's teaching us that we should learn the art of living alone in the crowd. We should live in the crowd, and we have an obligation for this world, but we should also live alone, and we should focus on keeping our own private world pure. And that begins with our consciousness. So we have so many different devotees we bring to Puri over the years. And I've always had kind of a conflict coming to India because I'll tell you a little story. A few years ago, I was asked to speak at an international conference at Utkal University. It's the biggest university in Orissa, on business and ethics. And you can ask my wife, I'm a terrible businessman. I can't do banking or anything with money. And so I stood up there in front of all these people from all over the world, and they're mostly Deshis, mostly Indian people. And I told them to begin, I said, this is a little funny. Here I am, I'm a Bideshi, but I'm standing here in Adodi and Kurta going to speak to you about Bhagavad Gita. And here all of you are Deshis, and you're wearing pants and shirt, and you're here to talk about business. So it's a matter of consciousness, and living in Puri, it's always a confusing thing for me because I was a Jagannath Pujari long before I came to India. But one of the few things I know how to say in Bengali and Odia and Hindi is Bideshi Prabesh Nishad, living so long in Jagannath Puri. But I've learned something over the years, who's really a Deshi and who's really a Bideshi. Who's really a Dambasi and who's not a Dambasi. You may know that Putana and Kanks are Dambasis, right? They're born in Braj, but they're not Dambasis. As Thakur Bhaktivinoda describes in his book, Navarita
in his writings, he says that there's a proto-Maya energy of the Lord which covers the Dham. And some people are on top of the Dham, but they're not really in the Dham. So I came here to this conference. I'm very grateful to Gauranga Prabhu and the other devotees for bringing me here. I'm a little embarrassed. I don't feel like I have so much to contribute. But I wanted very much to hear these topics because it touches my heart. In Jagannath Puri, we bring devotees from all over the world, and I'm so excited because we love the Dham there. But when I bring them and you see sewage on the street and garbage and things there, and there's a terrible smell. And I've been to Jerusalem. A few years ago, we had the opportunity of going. It's spotlessly clean. And I've heard in Mecca, it's spotlessly clean. And how is it that the most important places in the world are so very, very filthy? So we want to have a positive attitude about it. We want to try to do something helpful. So I speak to the devotees who are coming, and I encourage them that we're not coming here for tourism. We're not coming here for sightseeing or to take pictures or to have prasadam or to take bath in the ocean. But the reason I'm facilitating this is I want to facilitate Dham Seva. We should come here to serve the Dham. You can come here like a tourist, and it's a very wonderful thing. You'll still get so much benefit. And please, people should come to the Dham, even for that motivation. But if you want the best benefit, then you please come and do Dham Seva. And what's the best Dham Seva we can do? Is Nam Seva. Because we have to create a consciousness. We have to revive the consciousness. We have to keep alive the consciousness, the sanctity of that place. And that's why I'm so happy being here, as so many of the speakers have been mentioning. This GEV project is so wonderful. And I like very much the signs I've seen in a few places that this is not a place for tourism. This is a place for chanting and for prayer. And I hope that we always keep that kind of mood. In Jagannath Puri, I see sometimes what can happen, even to our own ISKCON society, our Vaishnav community, if we go too much in the direction of just seeing everybody as I sometimes tell the Pandits, I ask them, is it Jagannath Bhagavan or is it Paisa Bhagavan? And it used to be people who wanted to go to at least once in their life to Jagannath Puri or Vrindavan or Bhadrak Aksham. But now the new and they would want to go there and collect some dust and bow down before Thakurji. But now everyone wants to go to New York City. And they want to go to Wall Street and they want to collect some dust and bow down. And that's the perfection of their life, if they can do that. We need so much to change the consciousness here. So when we bring devotees to the Dham, we try to encourage them to do Dham Seva. And one of the things we've done over the years is we try to have a Dham Seva day, which generally is collecting garbage. And I can just tell you one little story of that. One year we decided to go to the Gambhira. And now Krishna Gopal Maharaj, the Mahant there, they're building some Bhagavat place for Katha behind the Gambhira. But at that time there was a big field and it was full of garbage. So we had about, I don't know, maybe 50 or 100 devotees, Bideshis mostly, white-skinned people like myself. In the back of that field, we were all collecting all kinds of garbage. And after about an hour or so, all of a sudden you started seeing different sadhus showing up from the Gambhira. And they were just standing there and looking at us. And a few of them began to cry. And it really touched my heart very, very deeply. Because for the Bideshis here, you don't understand what it means to be a bungi. If you want to get in a fight with someone in India, that's a good word to use. If you call someone by that name, it means someone who's cleaning the streets. And it's considered to be the lowest occupation. And the highest occupation is to be a sadhu. Their face really melted my heart. So I don't know how many answers I have for these problems before us today. Just this one humble suggestion. Let's remember the Bhagavatam. In the it's described in which is a Purana, the Harivamsa Purana. It's described Shiva Jalasaya, that the Jamuna was the life of Vrindavan. That water is the life.
And Kavi Karnapurna is a Namdad Vrindavan Champu. He describes further that Jamunasya Hridrogaha, that Kaliya was a heart disease in the Jamuna. So Kaliya, it's a big subject matter. I'm going to finish in just a moment. We won't go in that direction. But what is the meaning of Kaliya? Kala iya iti Kaliya. It's a compound word, kala and iya. And what does the suffix iya mean? It means to belong to something. We have Gaudiya. It means someone who belongs to Gaudadesh, roughly. So Kaliya means someone who has these qualities of kala. And according to the Sanskrit dictionary, kala has a number of meanings. It means black, but kala also means a black snake. But kala also means censor or criticism. And it indicates selfishness to the insane degree that we want to try to criticize other people. So we need just the opposite of that. In Bhaktivinoda Thakur, he comments that although Kaliya received so much mercy from Krishna, that he's an example given of great mercy. Krishna put his feet on Kaliya's head, but still Kaliya was driven out from Braj. Why? Because Kaliya didn't take shelter of any of the Brijbasis. Because to enter Vrindavan means we have to learn to love the Brijbasis. So it means we need to have an attitude of service to the world. So today we're also observing the 40th anniversary of Radhanath Maharaj's sannyas. And I think he's the most wonderful example of this, the opposite of Kaliya. When I saw Maharaj the first time here, this was my first visit to the GEV, I told Maharaj, I said, Maharaj, I'd always wanted to know what does the heart of Radhanath Maharaj look like. And now I think I have some vague idea by what I can see here in this place. So Maharaj, thank you very much for dedicating your life and giving everything in your sannyas. And I see that you're such an example that causes pain sometimes to our heart. That you're always traveling and moving about and just giving everything that you have. But this is a solution that we need today. We need to become selfless. We need to stop thinking of ourselves and think of other persons. So thank you very much, Maharaj. You're the best example of holistic eco-living that I can think of in the most natural way. So thank you all very much. Hare Krishna. Thank you so much, Madhvanand Prabhu, for sharing your beautiful story, which was very moving, and for someone who has lived in Holy Dham like Jagannath Puri for so many years, your observations were bang on spot. We have with us Acharya Srivatsa Goswami Ji, who's done his Masters in Philosophy from Banaras Hindu University, and he has been teaching religion and philosophy at BHU, a recipient of the Sangeet Natak Academy Award, and contributing as a scholar and visiting professor at Harvard Divinity School in USA and Heidelberg University. Is also the director of Sri Chaitanya Prema Samsthan, an institute of Vaishnava philosophy and culture. And he has several books published by University of Princeton Press, University of Berkeley Press, and others. And most importantly, a very, very close friend, well-wisher of ISKCON and Govardhan Eco Village and His Holiness Radhanath Swami in particular, and also a mentor for our Bhaktivedanta Research Center, a person who is deeply committed to academics in Gaudiya literatures and who's very much instrumental in creating a fantastic collaboration between India and the Western academic universities with respect to scholarship. A person who's very, very deep and exalted in his realization of what Sridham Vrindavan needs for the future to retain its sanctity. Let's welcome Acharya Sri Srivatsa Goswami Ji to the podium with a round of applause.
नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाईर करि चरण बंदन जहा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। राधे राधे। Please accept my pranam, all the gurus present in this room and all the Rasik Bhaktajan. This event is built around an event happening 40 years back. It is about giving up. So in the beginning, I request you to give up something. With due respect and apologies to Gaurang Prabhu, whatever he said about me, you have to give up. If you are willing to give up, then I can continue. I am really grateful to my fellow pilgrims, the gurus, for showing me the path to travel today. So that when we travel to leave a positive footprint, or when we travel to reach our destinations, pilgrimage centers, can they become models for care for environment? And enough light has been shed on these two focal points since this morning, and I'm grateful to them for that. These 2 points, as the agenda of our deliberation, is a huge challenge, huge challenge. But it is also a dream for creating a harmonized living. And I said, I'm grateful to the gurus. I had nothing to say on this because I have not accomplished anything on this, despite the generosity of Gaurang Prabhu's description. But one thing I have, that I live in Vrindavan in a place called Bhramar Ghat. The ghat which is dedicated to the Lord as a bee, a bumblebee, Brahmar. And what does the Brahmar do? Brahmar doesn't have any honey in it. So it moves from flower to flower to flower to flower and takes the others' pollen and nectar and produces as its own. So in that blatant spirit of a Brahmar, whatever I have collected this morning, I am going to present it back to you. I remember someone, as I said, these 2 points, not only challenges, but it is also a dream. And I remember someone having such a dream. And I have come to know that Mataji Chitraji, their ashram has very solid understanding of the consciousness and the analysis of dreams as reality. So what was the dream? The dream was
temple to be a center of spiritual education. It was a dream. The dream was the ashram should cultivate pure living. That was the second layer of the dream. The third layer was the hospitals that treat patients with modern and traditional methods of medicine was part of the dream. The dream was that the schools should impart academic, moral, and spiritual education. The dream did not end there. It continued. It was a long dream, although it was dreamt long back. The farms to practice and demonstrate environmentally sustainable farming. The dream continued. There should be a kitchen for the hungry and the deprived humanity. A great dream, a wonderful dream, but dreaming alone will not translate into a reality, however deeply you analyze it. Analytical awareness of dream is not going to translate that dream into a reality. Something more is required. Something more is required. One has to undertake a journey, a pilgrimage from dream to reality. And that journey is pilgrimage, is a pilgrimage. To deal with the challenges linked to pilgrimage, we have to look for the pilgrims who have left positive footprints and those who have created centers of environmental awareness. Such a pilgrim, interestingly and also intriguingly, are those who undertake the route of sannyas as a necessity. As a necessity in the process of translating dreams into reality, the journey is, the pilgrimage is through sannyas, is through sannyas. For our dreamer, whoever dreamed that big dream, he's not a mystery to you, but to me he is still a mystery. Whoever dreamed that, which I reported to you. For our dreamer, he has a model pilgrim, a sannyasi pilgrim, who is well known as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. The model dreamer and a pilgrimer. For our dreamer, Mahaprabhu is the eco-teacher. Eco-teacher. His green pilgrimage, Mahaprabhu's pilgrimage, was towards fulfilling a dream, and the dream was every corner of the earth should be vibrant with the green consciousness. Prithvite ache jote ko nagaradi gram. Every nook and corner of this globe should be lit with the green consciousness. Green consciousness. He said, I have dreamt it, that hoibe, this will happen. He is saying this in 15th century, 16th century. Doesn't matter, it took 500 years to happen. But it has happened. It has happened. Why did he dream that? And why did he say that with such a conviction?
because he understood that the idea of the green pilgrimage, the green consciousness, the green philosophy, that idea is rooted in one word: seva, service, or bhakti. Bhakti. That is the essence of green consciousness or green philosophy. So bhakti is the upaya. If you want to sustain our globe, because that has been the major concern of every speaker, and those who are not speaking, it is their concern. How do we sustain our planet? And if we do not sustain our planet, how do we sustain ourselves? So this pilgrim, this sannyasi, 500 years back, he said, if you want to sustain yourself and sustain the planet and sustain the universe, the creation and everything, there's only one thing: serve. Bhakti bina jagater nahi avasthan. This world will not sustain even a moment without bhakti, without service. Without service. So bhakti is the only upaya, only means, only solution, where one is aware of the other, whether the other is a living being or a natural phenomena. A bhakti is one who acts for the good of the other. Good of the other. And that is the way of a green pilgrim. That is the way of the green pilgrim. And to teach the knowledge system of seva, because seva hi paramo dharmaha, that is fine. But seva dharmo paramagaheno is the most mysterious element out of all the three yogas: Jnana Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is the most difficult to understand and most difficult to practice. Bhakti karat kathinai. Tulsidas, he says, it is very easy to travel on the path of Jnana, very easy to travel on the path of Nishkama Karma Yoga and Vairagya, but impossible to travel on the path of bhakti. Bhakti karat kathinai is the most difficult path. So we need a knowledge system for bhakti. How to serve, whom to serve, when to serve, and what not to serve. We need a total and a complete knowledge system for serving if we want to make a green pilgrimage. So to teach that knowledge system of seva, Mahaprabhu entered into sannyas. It was a logical next moment in his dream of Prithvite Hoibe. To fulfill that dream, he entered into sannyas. Vairagya Vidya Nij Bhakti Yoga Sikshartha Mekam Purusha Purana. That being, that absolute consciousness, who is Purana Purusha. Purana means who never becomes old, who is eternal. So that being, he took a human body to teach this knowledge system of service. Sikshartha. Only purpose of his taking a human body is to teach us. What? The knowledge system of Nija Bhakti Yoga, the path of bhakti. But what is the Vidya? What is the knowledge system of bhakti? Vairagya. Sannyas.
If you understand sannyas, the wisdom of sannyas, you are on the path of bhakti. You can serve. Otherwise, a distant dream. Only a distant dream. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari Kripam Buddhi. Is an ocean of compassion. Ocean of compassion. Tamaham Prapadya. We all bow down to him for his favor done to us. Favor done to us. So to teach the path of Bhakti Yoga, he practiced the knowledge system based upon Vairagya, non-attachment. He also believed that Vairagya is the instant product. Instant product. You have not to make an effort. The Vairagya is the instant product of Bhakti. Bhakti to the divine. Bhagavati Bhakti Janayati Ashu. Instantly, the whole system of bhakti will, or service will start operating in your being. So bhakti leads to vairagya. If we can put in simple words. Or vice versa. Vairagya leads to bhakti. If you have the knowledge system of vairagya, if you move on the path of vairagya, it generates bhakti in you. But if you have bhakti in you, you're automatically detached. It's a mystery. It's a coin. It's a Zen coin. But Sri Mahaprabhu's pilgrimage from Golok to Bhulok, from the eternal domain to the suffering domain of humanity, from Golok to Bhulok, was not so green. It was not an easy pilgrimage. Golok was a green field where there are no constraints for you to work on. You are free to implement your will and anything. So it was not a green field movement for Mahaprabhu from Golok to Navadvip Dham, to Bhulok. Here, to propagate bhakti, Chaitanya Mahaprabhu had to work in the constraints of previous ignorances, prejudices, orthodoxy, etc. Huge challenges, huge. Even at the cost of physical life for him and his company. So for making our life a green field, religious environment, we require several green tools and systems. This is what Mahaprabhu is telling us. It will come through a very hard-working path. So what are the tools? The tools is, first we need a green God. God is the problem. Problem is the God. Problem is not the world, not us. Problem is the God. So what do you need? You need a green God. All right? We have God. Krishnastu Bhagavan Swayam. No doubt. And we subscribe to him. All right? But Krishna worships whom as God? As his God. Do you need so much of time to respond to that? Who is Krishna's worshipped God? The roof should be having a hole in it. You should say, Bol Giriraj Maharaj ki. Krishnastu Bhagavan Swayam. But Swayam Bhagavan is worshipping whom? Giriraj. 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 One who sustains life, is practical religion. It's a very selfish religion. So Giriraj, who sustains life
by providing so many, but one of the things which he provides generously is water. And what is life? Jalam vai jivanam. Water is life. The Vedas have proclaimed. Jalam vai jivanam. And Giriraj, through his green cover, brings us water and harvests that water through its innumerable kunds. So, that provider is our Giriraj Maharaj. Shri Giriraj is our God. And that's why the Brajvasi says, Krishna is not our Devta. Giri Govardhana Deva Hamaro. This mountain, the king of the mountain, is our God. They thump their 56 inches chest like this. Giri Govardhana Deva Hamaro belongs to us. He is our God. He is our God. And worships. But what is the path of worship? You need a green path for a green God. The green spirituality is the path of bhakti. And the path becomes the parikrama, becomes the discipline, becomes the spiritual enlightenment, which embraces the Lord in its full natural manifestation. Because He is on your right hand and you are completely encompassing and having it inside your being. So if somebody said that Boond Samana Samud Bich, that is understandable, that the drop can merge into an ocean. But he says immediately back, he said, Samud Samana Boond Bich. The ocean is also contained in one drop. So in the path of bhakti, that agama agochara buddhi par agama abhigata akatha apar, so that Purana Purusha, you can contain it. You can circumambulate it and you can contain that into your own being as the ansha of them. But it's possible. But in bhakti, it is also an inclusive parikrama. Because it includes jnana and bhakti, jnana and karma together. Jnana is objective, karma is subjective, a will factor. Jnana is cognitive factor, will is cognitive factor. But feeling, emotions, bhakti, seva, needs both, needs the subject and object both together. In knowledge, any subjective is denied, and any relationship with the subjective is also denied. In the path of willing, Paramahanta, the cosmic ego of the Lord, is supreme. The will is the creation. So the objective is negated. So there's no possibility of relation. But relation is the key of human experience and survival. So what do you need for relation? Two relata, and subject and object. So aswadya, aswadak, and swad of rasa. All the three are there. So that's why bhakti includes and transcends jnana and karma. So that green path of bhakti, and that bhakti is our Mother Ganga, which includes the karma stream Yamuna and the knowledge stream Saraswati in it. But still it is called Ganga. Ganga. But that parikrama may go haywire. There may be difficulties and pitfalls. So you need a goddess, a protective goddess for the green path. And who is the protective goddess? To be a good God, a good pilgrim,
We need to be empowered on the path of selfless love and devotion. Selfless love. So who will protect us in that path so we don't fall short of completing our journey, the parikrama? The embodiment of Shakti or Bhakti, the power of Bhakti, the total potency of Bhakti is embodied in whom? Who is the goddess? Vrinda Devi. For green pilgrimage, Radha Rani will not work. For green pilgrimage, the green goddess only will work. Vrinda Devi. And that is the unique contribution of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Before him, do you find any reference to Vrinda Devi in any Shastras? She was always there, always there, always there. But nobody had courage to accept the green goddess, Vrinda Maharani. She is the Purnamasi Devi, under whose guidance the theatre of Radha and Krishna's Leela is conducted. She is so powerful. She has power over Radha and Krishna both. If she says something, then only the Sakhis can move to help the divine. Otherwise, no possibilities. No possibility. So who does not patronize this Vrinda Devi, does not patronize any worldly vested interest and desires. In worldly terms, it is very komal by nature, but very vulnerable. If there is a 40-degree temperature, it vanishes. If it is a almost 0-degree temperature, it vanishes. If there's too much of water out of your love for Vrinda Devi, it vanishes. So komal, so tender, but absolutely powerful. So in the physical world, what is value? What is economic value of Vrinda Devi? Can you make some good furniture and roof and structures with the wood provided by Vrinda Devi? Forget my heresy and my heretic language, please pardon me for that. But I'm trying to see, can Vrinda Devi with its fuel make a cup of tea for me? No. No. No worldly value, but it's the most valuable, most powerful goddess ever available to humanity, or aesthetically even. In our beautiful decorative pots made of metals and marbles and things, we will bring erica palms, money plants, this. Have you ever seen, even in a Vaishnava's house, Vrinda Devi used for the sake of decoration? It is the force of the Lord that Vrinda Devi has found a place in every Vaishnava's home, but not as aesthetics. Not even aesthetics. If you search yourself within, you will say, oh, I must get a rose flower, I must get chrysanthemums, I could get this, I could get that. Will be put, even as a gardener, because we have a great gardener sitting with us, will be put as a decorative value, Vrinda Devi on the top of the list? Vrinda Devi says nobody does that. No one does that. Even the Vaishnavas do not do that. So, however, whatever is the case, Vrinda Devi can empower us for enjoying Premmayi Seva without any expectation in return. Because Vrinda Devi cannot fulfill any of your worldly desires, but still she can fulfill your highest desire. Highest desire. So what do you need then? If you have a goddess like this protecting you, then you have to have a green religion, full of green rituals. Green rituals.
And I cannot go in detail. My time is already over, but you are patiently listening, so I'm encouraged to steal few more moments. That this religion is based on offerings. Whatever best in the creation, go for the best. Do not settle, do not compromise in producing the best. Do not go for genetically treated seeds. Go for the best. Sustainable seeds. Because the genetic seeds cannot give you fertile seeds. They are impotent. So offering the bhog, it should do the best out of the creation. Then when you make the bhog, it becomes the prasad. Because the happiness of the Lord of the universe is mixed in it, it becomes prasad. So the second dimension of green religion, sharing. And if we see in our temples, say in Radharaman or many other places, the chief priest will get the prasad only when every single devotee is fed, every single attendant in the temple household is fed. Whatever remains goes to the chief sevaka, not before that. Sharing. The green religion. How we deal with the gross elements, the physical elements. Say, for example, water. In our temples, water from the natural bodies should be used for temple functioning, temple usage. Underground water, pumped water, is impure. Scientifically speaking, modern scientific point of view, the water coming from natural bodies have algae, have bacteria, have this, have that. And the water coming from 500 feet below is pure crystal water. But why these mad Goswamis prescribed कि ये नदी का पानी, कुएं का पानी, झरने का पानी, ये ठीक है. Pump water is impure. Pump water is impure. What was it? It was a very subtle understanding which the science cannot understand, but the green science can understand. The category of sacredness and purity. The water from the water bodies is sacred. वो पवित्र है. Water from the earth, वो शुद्ध है. तो शुद्ध में पवित्र में बहुत फर्क है. If we go for the Shuddha, then the water as an element will become Ashuddha. I give you an example. If you go to Srirangam, what is happening first thing in the morning? What is happening first thing in the morning? What is the first ritual? An elephant with umbrellas, with Nadaswaram, going to Kaveri. Although poor Kaveri has no water today, but doesn't matter. The ritual is still performed. Every day, every single day. Only when the water from Kaveri will come, only then the Ranganath can be woken up. Otherwise, he'll be in perpetual sleep. Same thing was with Radharaman in Vrindavan. Same thing with Ranganath temple in Vrindavan. Same thing with Srinathji in Nathadwara. Unless the bus brings the pitcher of Yamuna water to Udaipur every day, there will be no ritual performed. What was this stupidity that the dirty water is sacred and the pure water is impure? It was very simple thing. Till we linked our religion to the water from the natural bodies, we cared for it. We cared for it.
The moment we linked ourselves with the mechanical water, the water comes from push of a button, Yamuna got defiled, the tanks got defiled, the wells vanished. Secondly, mechanical water is a violation of water body. Whereas the natural water bodies, wherever you bring your water, there may be some people sitting here who have spent their childhood drawing water from the well and taking bath. I have done that for many years. Even hot summer, 45 degrees, if I want to continuously take bath, I will pull 10 buckets, 5 buckets, 15 buckets, but not one extra bucket of water I will pull, which I will not use. Whenever you are using water from a water body, you are using just whatever is enough for you. But today, you just press a button and the water is overflowing everywhere. It's a huge exploitation of the life source of humanity. And temple is telling you to come back to the natural water as a pure water. It's a huge challenge though, but we have to do that. Fire. Why are they mad? They have a matchstick. They can light match fire every morning, but they are mad. They are preserving fire since 1542. They are preserving fire since 1542 because fire is also our life element. Care for it. Don't misuse it. Respect it. It is your life. Then you have to have a green architecture for the religions and rituals to take place. Eco-friendly materials were always used in our temples. If you go to Rajasthan, there are certain varieties of stones. Still the Muslim community, they say, this is mandir ka patthar. This is mandir ka patthar. This is not for your home use. That kind of sensitivity and purity. It is not some stupid or miser act that the Srinathji is still in Nathadwara in a hut. The king could have made a marble stone structure for him. No. That Giriraj is a forest green god. How can he live in a marble structure? Even today, Srinathji, who is a billionaire himself, still lives in a hut. Because the Lord's rituals can be performed only in the green architecture. Green architecture. Environmentally friendly structures. And if you see, even today in Vrindavan and other places, moved with Mahaprabhu's vision, the temples are called kunj. They are called groves. They are solid stone, sandstone structures. But they are called groves because what is there? All the embellishment is flora and fauna. Either some creepers, some flowers, some parrots, some other cows or some animals or birds. So it is a forest recreated in sandstone or marble stone. It's a green architecture theme. We never deviate from that. But all this have to be supported by green aesthetics. We all know what architectural disaster we are doing today on the name of religion, just because of lack of green aesthetics. The green aesthetic says all the ritual and practices is a rasopasana, is a rasamaya aradhana, is for getting the taste of the sublime. And it is an offering of love.
offer it in the same aesthetic way as you offer to your master, or in your family context, or with your friend, or with your sweetheart. You choose the offering, the way of offering the love. But that is the aesthetics which will never make you wrong in the green rituals and religion. All this Chaitanya Mahaprabhu warns. He said, nothing will of this happen unless you have a green metaphysics. You have to have a green metaphysics. It has to be foundation of the green religion, green everything. The reality is fully actualized only when it is with all its potentialities. All the potentialities. Like fire is complete only when it has its potency of heat and light in it. If you take away the potency of fire, it is a dead wood. It's nothing else. Similarly, the absolute reality of being, consciousness and bliss, Sachidananda Rupaya, Shri Krishnaya Vayam Numa, is a dead wood. It's a dead being, dead consciousness and dead bliss. If he is not in the company of Sandhini Shakti, Samvit Shakti and Alhadini Shakti. So that green metaphysics of these two coming together harmoniously and organically. But that metaphysics has to be supported by a green logic. The logic also should be green. The logic of, we all know, Achintya Bheda Bhed. Achintya Bheda Bhed is the green logic. The fire and the power of fire, are they one or are they different? We cannot decide. This is beyond the realm of the logic of binary opposites. Binary opposites. The binary opposite has divided our ecosystem, hugely divided and damaged our ecosystem into exploiter, exploited nature, exploiter humanity, consumer, consumed, and so on. It is the gift of the binary opposites logic. We see the results today is a total disaster. But if we follow the green logic of Achintya Bheda Bhed and not obsessed by the binary opposites logic, then we have room for the seeming opposites to play together freely. There's no contradiction. So let us return to our dreamer who undertook his pilgrimage on the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, but with one difference. Chaitanya Mahaprabhu's destination of pilgrimage was Vrindavan, but our dreamer's pilgrimage started from Vrindavan. From Vrindavan. But for both of them, Vrindavan was the key. It was the meeting point. Chaitanya's destination was Vrindavan because Vrindavan became, as per the wish of Chaitanya, the Pathshala, the education center, training ground, workshop of Bhakti. Bhakti Pathshala, and he appointed 6 major professors there. Shri Rupa Sanatana Bhatto Raghuna. Bhakti Pathshala. So, for the new dreamer in the 20th century, has to come to the Pathshala and begin the pilgrimage from there. From there. So, who is that dreamer? Do you know him? I don't know him. He also doesn't know. If you ask him, are you somebody? He will say, I'm nobody.
And I'm serious about it. He has no ID because he has taken sannyas. Sannyas is possible only when even your biometric identity is given up by you. The ritual of taking sannyas in the orthodox way is to do your cremation rites. That's why the sannyasi becomes preta, a walking dead man. No ID. If any ID is remaining, even if your name is remaining, you are not a sannyasi. So the Guru kills the name and gives a new ID, creates a new ID. So all the IDs have become irrelevant and he has lost them. Is he a Brahmin? No. Is he a Kshatriya? No. Is he a Vaishya? Or is your challenging Bhangi? Shudra? No. All right. Is he a Brahmachari? No. Is he a Grahastha? Is he a Vanaprastha? No. And is he a sannyasi? Sannyasi cannot say, I am a sannyasi. Na ham vipro na chanarpati na vaishyo na shudro. When the ID was asked in Jagannath Puri by the great knowledgeable scholar, he says, Na yatirva, I am not even a sannyasi, but you look like a sannyasi. Mahaprabhu said, I am not a sannyasi. I have no ID. Which this world supports, I have no ID. I transcend the Varna and Ashram tradition. Total giving up. Renounced all for real and real ID. So what is your real ID? He says, Gopi bhartuhu charan kamalayoho das dasanudas. I am merely a servant of the servant of the servant of the feet of the Gopinath. If that ID works to you, take that ID from me. I have no other ID. And that is what sannyas is. The real ID of sannyas. So what you become? You become Krishnadas. All your names are taken away. You become Krishnadas, just Krishnadas. And our dreamer is known as Krishnadas initially. But who is Krishna? Whose das he is? Krishna himself is a das of somebody else. And Raskhan found it. रसखान बताए उन लोग लुगायन देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में. What Krishna was doing? What is Krishna's only commitment? To massage the feet, the holy feet of Radharani in the groves. देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन. That is the only thing. That is the only identity of Krishna. So finally, the Krishnadas has to move in the direction of Radha. And you may call him Radhanath Swami. You may call him. But Radhanath Swami, not Radhanath Das. I am intrigued. What is this blasphemy? How can Jivar Shwarup hoy ki রাধানাথের স্বামী? আরে বলুন বাবা, আপনি বলুন বাবা, আপনি বলুন। জীবের স্বরূপ কি হয়? দাস, not Swami. But here we find some contradiction. The Leela is Adbhut.
Radhanath Swami. Because Krishna himself said he has to be Swami. Because aham bhakta paradhina. I am slave to my bhaktas. My bhakta are my mukutmani. Bhagat mere mukutmani. मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि. They are my crown of respect. So the name was correct and is correct and will remain correct as Radhanath Swami. Our sannyasi took a holy dip. After taking sannyas, Chaitanya Mahaprabhu took a dip in Katwa, and our sannyasi also took a dip. In which river? He wanted Yamuna, but Yamuna was not there. It was Ganga. Where his physical and his spiritual mother merge in one body. One body. The journey, the flowing mother is the stream of bhakti. And Lord Krishna, despite his tremendous love for Yamuna Maharani, because Yamuna Devi is the only female who is present in Braj Leela, in Mathura Leela, in Dwarika Leela, in full embodied form. Only female in Krishna Leela, who is in Trisargo Mrisha, all three domains of Leela. She is there. But when he is telling that which river is my ID, he is not talking about Yamuna. Shrotasam Jannavi. Among the flowing streams, I am Ganga. Why is he saying that? Is he fallen out of love of Yamuna? Can we even question Krishna's love for Yamuna? But he is identifying himself with Ganga. Because he knows Ganga is not just a water body. Is a stream of bhakti. Ganga is bhakti. Yamuna is karma. Saraswati is jnana. So Ganga takes our pilgrim. Where does Ganga go? It goes to the ocean. And who is the ocean? Anand Sagar, Shri Krishna. So Ganga takes his true home, and our sannyasi's lost love, he finds it there. Thanks to Ganga. Thanks to Ganga. Ganga made him realize the true sannyasi nature. Samyak and sampurna nyas. Proper and total giving up. What does it mean? Ganga explained to him. The nyas also means, the Sanskrit word nyas means conscious appropriation or assignment of the divine in our body. When we do Anganyas, Keshavaya Namaha, Narayanaya Namaha, Madhavaya Namaha, Govindaya Namaha, this is nyas. Assigning divinity to your own body. That is nyas. So you have to do proper and total assignment of the divinity into your physical body. That is sannyas. Sannyas. Another meaning of sannyas. So our sannyasi appropriated, but also committed to bhakti. Realizing Chaitanya Mahaprabhu's words that bhakti bina jagatir nahi avasthan. The physical body will not survive without bhakti. Not survive. But bhakti karat katnai, difficult. When Ganga flows, it has nothing but obstacles in its path from Gangotri. When it comes down from Gangotri, only obstacles and rocks and obstacles and rocks. No easy path for Ganga to flow. But as Ganga resolves to keep flowing, so does our 40-year young sannyasi. He also pledges. Another meaning of nyas, pledging, committing. So this 40-year young sannyasi, he also pledges to the life of service through prem and seva,
but it was not a greenfield journey pilgrimage of our sannyasi. It was not a greenfield pilgrimage. But our Gangaputra sannyasi revolted, another meaning of nyas, to rebel. And fully revolted, he revolted against the concept of war and violence. He revolted against prejudices. And he revolted against the subtle demon called superficialities in life. On the name of anything, superficialities. He rebelled. He started his journey with one conviction, and I quote him, "Whole world is irrelevant in absence of love." The whole world is irrelevant. What Mahaprabhu is saying, Bhakti vina jagater nahi avasthan, there is a commentary on the same sentence by our sannyasi. The whole world is irrelevant without love, without prema. His pilgrimage continued like Ganga, not removing the obstacles or demolishing the stones or the mountains, the oppositions, but rather finding a way around them, gently flowing. That is our sannyasi's way. That is our sannyasi's way. Our sannyasi's Tirth Yatra was empowered by one knowledge system. Jnanam paramaguhyam me yat vigyan samanvitam. The knowledge system should be a mixture, a synoptic understanding of wisdom and modern science together. Otherwise, the Premmayi Seva is an unsolved mystery, what Chitraji said, the mystical element of reality, and it will remain unsolved. Why do we need Vigyan? Why Gyan is not enough? Or why do we need both? Because we need our body and our soul both. We need this world and we need the Lord of the universe. We need the Jagat and Jagannath both. We cannot do one without the other. The soul cannot survive without the body, and the body cannot survive without the soul. So the Vigyan, which looks outside, takes care of the body, the world, the physical. But when you look inside, you are looking for the soul, the Paramatma within. Our sannyasi Yatri knows this well. When he reunited with his friend after 18 years, his friend was his co-traveler of the green pilgrimage, but fallen off somewhere. When he met him again after 18 years, this friend of his was a physical wellness trainer for the most affluent people in the American West. So in their conversation, our sannyasi told his friend, and I quote him, "You teach people how to improve the temple," and I add human body, "and I will try to teach them what to do inside," unquote. True to his nyas or conviction or pledge and commitment, our sannyasi moved on the pilgrimage. Surely it was a journey home, not just for him, but for all of us, because we all are Krishnadas. We just followed him. Journey home. Having reached home, Sri Krishna Pada, another Tirth Yatra begins for him, and that is the journey within. The journey within, which is more important. Because his model pilgrim said, "Nij na achorile bhakti shikhano na jaye." If you have to siksharth mekam purusha purana, if you want to teach, you have to live it.
Without living, you cannot teach it. That's why our pilgrim, after reaching home, he is traveling within and taking us also for this inward journey. So this inner working, if I can borrow this word from saint called Gurdjieff, this inner working, journey within, is more necessary from the journey outside. Journey outside. Sannyasi has to keep moving by definition. Charaiveti, charaiveti, charaiveti. Don't stay in one place. Don't stay in one place. And our sannyasi, 40 years younger, keeps moving at a vigorous pace. Vigorous pace. Only little comma came because of the Corona grace that he could meditate a little peacefully and be in one place. He can do his chaturmas within 2 years. Keeps moving, reaches home, and reaching home, he moves within, and moving within, connecting to himself and his own source, he moves, but he moves nowhere. He doesn't move. He moves nowhere. But he reaches out everywhere. Without moving anywhere, he reaches out everywhere. It is an eternal yatra. It is yatra to everywhere, without going anywhere. And that is the essence of the total renunciation, total vairagya. Total vairagya. We have rag, attachment to our home, wealth, name, loved ones, etc., etc. In fact, the vairagya is a journey to be more attached than detached. There is a misinterpretation of the term called vairagya as a detachment. But vairagya means intense attachment. Visheshataha anuragaha iti vairagya. Intense attachment you need. So attachment to life, the body is attached to soul. If we do not have attachment, we will not live. And the soul will not live if it is not attached to Paramatma. It is source. So attachment is a must. So this rag or attachments, what happens in sannyas, gets deeper and larger. Larger. Love to ours becomes the love for all. The way I used to care for my home, the way I used to care for my people, the way I used to care for my village, for my country. Now I care for everyone in the same way. The lesson of attachment which I have learned in my world, when I cross over from the world, the same attachment grows but takes infinite form. Infinite form. The whole Vasudha becomes the family. Vasudhaiva Kutumbakam for a sannyasi. So this virag, vairagya, vishishta rag is giving up of limits. Be unlimited. That is sannyas. However, this vairagya or the attachment, if it is possible only when you are ready to give up. And give up your most precious belongings and attachments. What are they? What are they? The precious belongings are dambha, arrogance, intolerance, ego. These are our most precious things. We cling to them as human beings. We cling to them. It is very easy to acquire dhan, jan, sundari, kavita, name, fame. Easy to acquire in this world. And it is also easy to give up them. So if sannyas is only merely giving up the worldly possessions, no. It is something else.
the real sannyasi, our green sannyasi says, the most difficult thing to attain is bhakti, and that too, unselfish bhakti is the most difficult thing. Because the Lord has never shared this with the humanity. Chirokala ami nahi kori prema bhakti dan. It's the secret most asset of the Lord. So it is very difficult to attain. Very difficult to attain. But our true sannyasi does not desire dhan, jan, sundari, kavita, etc. But he desires for the almost impossible thing to attain, the prema bhakti. Prema bhakti. But what is the way? Lord Chaitanya says, if you are willing to totally and truly give up, then something will happen to you. Trinadapi sunichena taro riva sahishnuna amanina manadena. If you can attain this state where you do not care for the satisfaction of your ego, and you can give up your arrogance and respect the other under any challenging condition, then only the melody of bliss will sound in your ear. The flowers of delight will bloom. Kirtaniya tada. Then only, if you fulfill these four conditions, if you give up these four possessions of yours as a human being, then only the dance of love will take place. Otherwise it's not. But when it takes place, tada hari, then it becomes sada hari. If it once happens, it never stops. Never stops. If one can renounce in this way, you can undertake a pilgrimage on the footsteps of Chaitanya, a green pilgrimage, who had compassionately participated in our history to meet the challenges of our times, Kali Yuga. Brave are those who want to give up totally and properly. 40 years back, a brave young man committed to sannyas. His pilgrimage began. GV is the holy place he reached. GV is the place he did not create. He did not create. Pardon my language. He has reached GV. Because GV, it is a creation of the ontological, existential, rasamaya leela of the divine couple. If that leela is not there, there is no GV. No GV. Possibility is not there. Existential possibility is not there. Krishna as Rasraj and Radha as Mahabhav. Krishna as Rasraj, as per our scriptures, is blue. And Radha Rani, golden, molten gold, yellow. And if you mix the blue and the yellow, which color will come? It is the union and the dance of love of the divine couple, the blue and the golden ones. Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari, with their merciful dance, GV emerges in front of someone who is able to see it. We all are not able to see it. Only a sannyasi can see it because he has given up all the cataracts. We have cataracts of egos and arrogance and ignorance and whatnot. But sannyasi is one who has surrendered to the feet. Das, dasanu, dasa. No cataracts. It is their Leela Bhumi. GV is the divine couple's Leela Bhumi. When they come together, they manifest as green. Yellow and the blue come together. It is a Nitya Leela. The pilgrimage is continuing.
It is a Nitya Yatra with newer manifestations like JV. More JVs will be visible to the sannyasi. He will not create. He will be just watching them and seeing them as a Sakshi Cheta Kevalo Nirgunascha. So, my prayers and my pranam to the first sannyasi, and my special pranam today to my dear sannyasi. Because we share a physical space of Chirghat. I live in Chirghat, and he only knows what Chirghat is all about. We also share a common friend who is the infinite Krishna. But what we are blessed with, you are not just blessed with a Radhanath Swami. You are also blessed with a Krishnadas who is a Rathin Krishnadas, who is a charioteer and who can become the charioteer to our world. And with these prayers, let us sing the glory of Sri Radha Vrindavan Bihari Lal ki, Radha Raman Lal ki, Govardhan Maharaj ki, Yamuna Maharani ki, Apan Guru Maharaj ki, Nidai Gaur Hari Bol. Hare Krishna. So, how many of you are feeling speechless after Srivatsa Goswamiji's presentation? So, we must confess, Srivatsaji, that all of us, many of us had cataract. And many of us, including myself, had severe doubts about what GEV is going to be and all about. But thanks to His Holiness Radhanath Swami Maharaj's nature flowing like the Ganges, many of the rocks were presented by us only in the form of doubts. What is the purpose behind this project? Why we are here? Because many of us were not used to being in rural India. So the whole concept of coming and creating something within a village was very daunting. And I have my friend Anand Gopal Prabhu sitting right there. In 2009, when we were coming back from Bangalore, at that time he was, just finished the first meeting with the architect. And then all of us were just wondering, what is Radhanath Swami Maharaj up to here? But as Srivatsaji beautifully described, what an amazing way in which you have presented the entire philosophy and how you have done justice to the topic of the green pilgrimage by bringing the concept of environmental conservation, the concept of Gaudiya Vaishnava ontology and philosophy, along with the concept of sannyas, because it's a fact that today we were inspired to have this conference on the occasion of His Holiness Radhanath Swami Maharaj's 40th sannyas anniversary. And you weaved all of this together. And the way you were speaking, I was wondering whether you are a philosopher, an artist, a musician, a scientist, and ultimately, the way you concluded, we realized that you're nothing but a mad lover. Maddened by love for Krishna and Sri Vrindavan Brajbhumi Dham. We are so honored by
the diligence with which you have prepared, true to a scholar's credo, you have put each and every word, you know. And a few years ago, he had written an article, he was sharing with me, Shivaji. He had written an article on Lord Chaitanya Mahaprabhu, a transcendental politician who changed the history of India. And when he sent it to the, editor of the journal, the editor got totally bewildered, and he kept that article aside. And when he said, "Hey, why you have not published?" he said, "I don't have the guts to publish with such a title." But I suggest that the article which you have written today and which we shared with all of us, I'm sure if you send it to this journal again, Lord Chaitanya Mahaprabhu, the transcendental environmentalist, definitely he's going to publish this. And we are so honored that you took this effort to pen your thoughts and share it with so much of emotion. And we are very highly touched. Let us offer a round of applause to Shivaji for this amazing presentation. Thank you. We also have a couple of very special guests whom we would like to honor. We have with us from Sri Madan Mohan Temple in Karoli, Sri Anup Kumar Bhattacharya ji, who has come with us. I'll request Srivats ji to honor him with a gift. Anup Kumar ji, please. He is one of the main priests in Madan Mohan Temple, Karoli, who has been doing seva for Madan Mohan Dev for last several years. And thanks to his help and guidance, the Madan Mohan deities at Govardhan Eco Village could manifest. Bahut bahut dhanyawad. And his son, Kishore ji, please come forward. We would like to also honor Kishore, who has done his MBA and was working when he came with his father to help us with the Madan Mohan deities. And when Kishore saw so many brahmacharis with degrees and BTech and MTech and MBBS, now brahmacharis, he gave up his job and now he is full-time serving Madan Mohan deities at Karoli. Also we have from Jagannath Puri, Sri Ram Kumar Panda. And I request His Holiness Radhanath Maharaj to gift Sri Ram Kumar Panda this. And also we have a special gift for Ram Kumar Panda, is a beautiful written handwriting of Thakur Bhaktivinoda Thakur's song Kibo Joyo Kibo Gaura Chander, original, published by the Bhaktivedanta Research Center. As you know, in Jagannath Puri, we have Thakur Bhaktivinoda's house, and Jagannath Puri is a place where we have been going for Rath Yatras for many years, and Ram Kumar ji has been our main point of contact. So at this moment, all of us are very eager to hear from our sannyasi, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, the person who has conceived of the whole concept of a green pilgrimage, because we had never heard the word green, till actually Maharaj started speaking about the Govardhan Eco Village. And truly, Srivats ji, I must say, I take the liberty of confessing on behalf of many here that none of us had any clue what he is conceiving or speaking about 14 years ago when he was speaking about this Govardhan farm and what it should be like. So, in spite of so many doubts and skepticism from many of us, true to his nature like flowing Ganga, he continued on and still continues on, following
the instructions of Srila Prabhupada, the sixth purpose of ISKCON being simple living, high thinking, and to establish holy places of pilgrimage. We are very honored that His Holiness Radhanath Swami Maharaj has spent almost last 25 to 26 years in Mumbai, founding Shri Shri Radha Gopinath Temple, ISKCON Chowpatty, and so many satellite centers, more than 35 to 40 satellite centers associated with this Chowpatty temple. And now this Govardhan Eco Village has been such a wonderful, amazing revelation of how in each of the 748 districts of India, a holy place centered around sustainability and social impact can be created. This is a model for the Government of India to follow, and we congratulate Radhanath Maharaj for this vision. Previously, we were thinking of having this conference in the auditorium, but then seeing the responses which were coming and RSVPs which we received, we realized that auditorium would not suffice. And ultimately, Krishna had his plan that we organized it here, and Maharaj has called this hall as Goloka. So, on behalf of all the wonderful devotees who are very eager to hear from you, we invite His Holiness Radhanath Swami Maharaj on the podium. Om Jnantimidandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschyatyate Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On behalf of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, my beloved Guru Maharaj, and the founder Acharya of Govardhan Eco Village and our worldwide community, I welcome each and every one of you. The wisdom, the knowledge, the inspiration, and the love that all of you expressed through your kathas was
truly overwhelming. Thank you, Padmanabh Goswami ji. Thank you, Chitra. Thank you, Revati Raman ji, Anup Chakravarti ji, Goswami. Thank you, Ram Kumar Panda. Thank you, Madhavananda Prabhu. Thank you, Srivats Goswami ji. And thank you to each and every one of you who are here today. Srivats Goswami ji, after whatever you said at the end of your brilliant talk, I'm quite speechless. But since I fully know that nothing good you said is really about me, it's about my Guru Maharaj and all the devotees who tolerate me, I'm able to speak something. Thank you very much. I was wondering what to talk about. And something just came to my heart as each of you were speaking. There was a devotee. He lived approximately 450 years ago. His name was Dukhi Krishna. And his guru, Hriday Chaitanya, sent him to study under Srila Jiva Goswami in Vrindavan. His classmates were Narottam Das Thakur and Srinivas Acharya. He was such a great scholar. He was such an enlightened being. The service he was given throughout the day was to sweep the little forest paths of Nidhiban, Sevakunj. And how grateful, how precious he considered that service. Now in those days, Vrindavan Dham was very secluded. There were no tourists, there were no dharamshalas, there was no hotels or restaurants. There was hardly any temples at that time. It was forest, very lonely. So who was he sweeping the pathways for? Some Brajabasis. He was throughout the day with tears of love and gratitude sweeping the paths of Vrindavan. None of them were paved. They were all just earth. This was his seva. He was never thinking, why is Jiva Goswami giving me this service? And after so many years, he still has me doing this service. Why doesn't he make me a pujari or something like that, manager? Just sweeping. Because he understood so much the very essence of what bhakti is. As Acharya Srivats Goswami ji was saying, das, 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 anudas. Not just in theory, but in heart. He understood that Vrindavan is sacred, not only because it is the place that the eternal pastimes of Sri Sri Radha Govinda Dev take place,
not only because Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu considered the ultimate place of pilgrimage, but because the Goswamis and so many other great personalities, because they recognized the eternal sanctity of every grain of dust in Vrindavan. He worshipped those grains of dust. And his sweeping, he was sweeping paths that even nobody went to. But he was sweeping because he knew that Radha Rani and Krishna and his Guru Maharaj will be pleased. There was no internet. There were no newspapers describing Dukhi Krishna is sweeping the groves of Vrindavan. There was no fame. There was nothing except the joy of serving. And because he appreciated with his tears of love Vrindavan, one day, in a little behind a bush, he found Srimati Radharani's ankle bracelet. She put it there just for him. When he touched it, there was such an ecstasy that awakened in his heart. And as this beautiful historical pastime unfolds, because of his humble service, he was brought to the spiritual world to personally meet with Srimati Radharani. She revealed his eternal identity as a gopi. She personally gave him the name Shyamananda Goswami and gave him her own deity of Krishna. And then sent him back to the Gokula Vrindavan that we see in this world. Sri Chaitanya Mahaprabhu, as a sannyasi, according to the tradition at that time, he did not want to confuse people, so he refused to meet royal people in royal status. The king, Prataparudra, was begging and pleading just to have one audience with Lord Chaitanya. But the Lord, he said, for me to meet with him is worse than drinking poison. If you ask me again, I will leave this place. And when Lord Chaitanya says that, it's louder than any sound system could possibly reverberate. But then when Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the king Prataparudra with a broom sweeping the pathway of Jagannath Puri at the time of the Ratha Yatra, sweeping for Lord Jagannath, sweeping for each and every devotee, Lord Chaitanya's heart, like Sri Radharani for Shyamananda Goswami, his heart reciprocated. And during that same Ratha Yatra procession, Lord Chaitanya
not only did he allow King Prataparuja to personally massage him, but Lord Chaitanya repeatedly embraced him and bathed him with the tears of his affection. And he said, you are bringing me so much nectar. There is no one so benevolent and dear to me as you. Prataparudra Maharaj was actually in disguise. Ramananda Rai Sarvabhauma Bhattacharya told him, just dress like a simple devotee. And when Lord Chaitanya was crying and praising him, he said, please tell me, who are you? Now this is a very difficult situation because you cannot lie to the absolute truth. And at the same time, if he said, I am Maharaj Prataparudra, because during the Ratha Yatra, when Lord Chaitanya was touched by him, Lord Chaitanya jumped away and said, how condemned I am that I have been touched by a materialistic person. What is he going to say? His reply is really the very essence of what Lord Chaitanya came to give the world. He said, I am the servant of the servant of the servant of your servants, and my only aspiration is to be the servant of the servant of your servants. At that time, Lord Chaitanya revealed to him his eternal divine opulences. This idea of cleaning, yesterday we were discussing Padmanabh Goswami, Srivasa Goswami, at Rupa Goswami's, our representation of his Samadhi and Bhajan Kutir. They were speaking about the cleansing of the Gundicha temple in Puri. How Mahaprabhu himself, he's the father of Brahma, Shiva. He's the absolute truth from whom everything emanates. He's the one supreme God of all gods that have ever been worshipped in any religion throughout history of all the universes. And yet he told the devotees, tomorrow I want to clean the Gundicha temple to make it appropriate for Lord Jagannath, Balaram, Subhadra to come. And he personally did it. In Sri Chaitanya Charitamrita we read how Lord Gauranga personally gave a broom to each devotee. And then he personally took a broom and began the sweeping. And what was his example? Everyone was sweeping as best they possibly could. And they were all putting the dust they collected in a particular pile. There was about 200 devotees. And Lord Chaitanya put the dust he collected in another pile. And it was many times bigger than all the 200 devotees' dust. And he would tell devotees, whoever collects the most dust, I will give a very special prize. His mercy. He wanted every devotee to try to inspire every other devotee by how they were sweeping.
And who are these people? Nityananda Prabhu is Balaram, Advaita Acharya, Sadashiva, Mahavishnu, Haridas Thakur. He didn't go in, but he's Brahma. These are the most exalted personalities in the universe. And along with Mahaprabhu, who is Radha and Krishna, the source of all avatars, they're sweeping. And after they swept till the whole temple was immaculate, he gathered everyone together and he said, now we must sweep again to search for finer particles of sand and dust and straw. And then after that, buckets and buckets, thousands of buckets of water from Indradrumana Sarovar and so many other places were being used to wash and wash and wash. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, sometimes he was washing so enthusiastically because he was doing it for Krishna. It was such a joy that he was crying tears, and there was not even need for any external water. He was washing with his tears. He was polishing with the cloth that he was wearing. I remember my beloved Guru Maharaj, Srila Prabhupada. He would say sometimes, it is said that cleanliness is next to godliness. But in Krishna consciousness and Vaishnavism, cleanliness is godliness. Lord Chaitanya gave us the holy names of Krishna. Chaito Darpana Marajanam Bhavapahavi, to cleanse the temple of our hearts. How does this relate to preserving the environment and the ecology of the holy places and all other places in the world? In the Bhagavad Gita, Krishna tells Maya Dyakshena Prakriti. Aham sarvasya prabhava mata sarvam pravartati. That everything is coming from him. All material and spiritual worlds. Krishna tells that this material world is my energy. And sometimes when devotees think that I'm transcendental, so I really don't care about this world, they don't understand the concept of bhakti. Because if we love Krishna, we will love his energy. How much the Lord emphasized this. I saw some of you sleeping, I'm sorry. The source of all energy, his Hladini Shakti, Srimati Radharani. In some yugas, according to Puranas, how does she appear in the world? Vrishabhanu Maharaj is plowing the earth, and from under his plow, she appears out of Mother Earth. And according to Ramayana, Sita, the consort of Lord Sri Ram, how did she choose to appear? From Mother Earth. Bhumi is an expansion of the feminine energy
of Krishna. She's a supreme worshipable goddess. Radha, Sita are the source of Bhumi, Mother Earth, and through the medium of Mother Earth, they're revealing themselves to us in this world. And how did Krishna stage his own appearance? Bhumi. Mother Earth was being exploited. She was being abused. And all of her children were being abused and exploited. And who are her children? All living beings. She's our mother. She nourishes us. We take birth from her elements, and we're sustained through her elements. Mother Earth approached Brahma, the guru of the universe. And then Brahma and the Devatas, along with Bhumi Devi, prayed for God to come. And Krishna appeared. From a spiritual perspective, the earth is our mother. From emotional and material perspective, the earth is our mother. And when we understand this, then material no longer really exists. Srila Prabhupada would explain that actually God only has one energy, but it manifests parasya shaktir vivadaiva shruyate. It manifests in many ways. The material energy and the spiritual energy are both coming from the same source. And what is the difference between material and spiritual from this perspective? If we see, appreciate, and serve the elements of this world as Krishna's sacred property, as Krishna's divine energy, as Sri Radharani, our mother's ultimate grace, then we no longer see material, but we're seeing its spiritual origin. To spiritualize material nature is bhakti. When we offer the arti, we're taking incense, dupe, representing Mother Earth. The quality of earth is especially fragrance. We're offering to Krishna, the source. And then we offer water in a little conch shell or shanka, and we offer it to Krishna. Fire, we put it in the deep and we offer it to Krishna. And with our chamaras or peacock fans, we're offering air to Krishna. And by chanting the holy names and ringing bells, Krishna is the sound and ether, we're offering ether to Krishna. So arti is not just a ritual, it's a philosophy. It's a path. Path of gratitude and love. What we are receiving from Krishna, we're recognizing its divinity because of its connection to Krishna and offering it with love. It is a tradition at Ganga or Yamuna. What do we have to offer? We go in Ganga, Yamuna Mai, and we
we take 2 palmfuls of water, and with a prayer of gratitude, a prayer of love, a prayer begging for service, we offer that water back to Yamuna. Does Yamuna need that water? We're taking it from her. But yet when we offer it back to her, it's not just water. It's our consciousness, our love. And from a perspective of bhakti, the entire creation is facilities to offer love. And this is especially revealed to us in the holy places of pilgrimage. Krishna tells in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. He comes to this world to establish religious principles. And the holy places is where he did that. It's the foundation of religious principles, these holy places. Krishna in Vrindavan established, in Kurukshetra, Ramchandra in Ayodhya, Chitrakoot. These holy places are the places where the Lord has bestowed his supreme compassion upon the suffering souls and inviting us all back to his abode. If we do not honor and respect the sanctity of these holy places, then how will anybody understand the deep spiritual nature of honoring Mother Earth everywhere? It actually needs to begin with the holy places. Otherwise, it's just an environmental thing. To leave the world a better place than you came. That's the mode of goodness. That's nice. But that is not what Krishna is giving us the opportunity to do. He wants us to liberate our souls with with Radharani's grace and his mercy. To honor Mother Earth. To honor all the gifts that Radha Govinda are giving us in every leaf, in every drop of water that falls, in everything. That is the environmentalism that is an inseparable, sacred aspect of bhakti. Because Krishna appears in this world, Karuna Sindhu, out of compassion. And actually, in any way we corrupt or pollute or exploit the resources of nature, which is what every living being on this planet is totally dependent on, we're actually harming everyone. And even the smallest effort to live with honor and gratitude to the energy of Krishna, of what he has given us, we are actually instruments of Krishna's compassion for every living being in creation. That is how we grow. Through the consciousness in which we interact with material nature.
in a spiritual way. If you think about it, that is the only way we have to spiritually grow, is how we interact with the elements. Sound is an element. It's coming from ether. We chant the holy names because we have a mind, which is a subtle element, material element. We chant the holy names because we have a tongue, which is earth, water, fire, air, and ether in a special composition. We chant the holy names and we hear because we have ears. So kirtan is an interaction with God's energy in this world, the elements. We have Ram Kumar Panditji, our very beloved friend. I've gone to Rath Yatra in Puri, and I've seen him, among others, carrying Jagannath. Jagannath is really Jagannath. They're carrying Jagannath from his altar to the chariot, and it sometimes takes an hour or more, because they're... And during the Rath Yatra I was there was approximately 1 million people on the same street at the same time to worship him. The Supreme Lord of the universe, the Lord of Vrindavan. When Lord Chaitanya would look at Lord Jagannath, when he would see him from the Garuda Stamba, he would see Krishna playing his flute. Jagannath is appearing to us in the element of wood. Tirupati Balaji, Shri Radha Raman, Shri Radha Madan Mohanji, they are appearing to us in what appears the element of stone. Is God wood or stone? No. It's not a representation. That is Radha Raman. That is the lover of Sri Radha right before us. Totally, purely, transcendentally, spiritually, but in a way that we could see with our material eyes, and we can offer things with our material hands, and in this way to spiritualize our whole life. It was one of the great wonders when I first came to India, because I studied various other religions and practiced, to some extent. But this was something extraordinary. People are worshiping the divine in mountains, like Govardhan, Kailash, Chitrakoot. Worshiping the divine in plants, like Tulasi. Worshipping the divine in what people consider dirt. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he went to Kumarahata, the birthplace of his guru, Srila Ishvara Puri, he collected the dirt there. And in Sri Chaitanya Charitamrita, he ate it, little piece. And he saved, because he was traveling, he put it in a cloth bag to take it with him. And as he was worshiping this dirt, he was crying, ecstatic tears. And he said, this earth, this dust, what we would say this dirt, is the treasure of my life. This dirt is my life and soul, because it is the birthplace of my guru.
So he's seeing dirt from the perspective of his love for his Guru and God. Yes, in India, I saw people worshiping rivers, offering pujas and offering oblations and offering prayers to rivers as people. Ganga, Yamuna, Godavari, Sindhu, Krishna. So many rivers, Saraswati, at Prayag. So many tens and millions of people come to worship this confluence of three rivers. Where else in the world is this? They're seeing God in water. In stone. Stones. Shalagram Shila, Artramurtis, worshiping the Lord in oceans. In Jagannath Puri, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he bathed the body of Haridas Thakur in the ocean, he said, from this day on, this ocean, all the holy places and all of creation are in this ocean. Trees. Krishna tells in Gita, I am, what is the Ashwata tree? In Vrindavan, how Bamsivat, a banyan tree, is worshipped. How Chirgat, a Kadamba tree, or Ter Kadamba, is worshipped. People embrace these trees. They bow to these trees. They pray for benedictions from these trees. Worship of forests. All the elements of nature. What to speak of fire? When we perform the yagya, the Agnihotra, I remember seeing, they're pouring really nice ghee in a fire, and sometimes they're even putting jewels in the fire. Because seeing Vishnu, seeing the Supreme Being in that fire to receive our offerings, to receive our prayers, and to reciprocally bless us in every way. People who don't understand, who don't have the depth of realizing, of being taught by self-realized souls that Krishna is present within his energy to receive our love and reciprocate with our state of consciousness. They think that, what kind of religion is this? There's one God and they're worshiping plants. They're worshiping birds. They're worshiping water, rivers. But what a higher dimension of consciousness this is. What a holistic. And that is why it is so important what all of our great acharyas, gurus, scholars, and sincere devotees have been speaking throughout the day. How important it is that we remind the world through our example that unless we live in harmony with nature, we're not honestly living in harmony with God. Because
nature is God's nature. You have your nature, I have God's, I have my nature, and God has his nature. So I believe the purpose of this gathering today was to discuss and share with one another the purpose, the passion to clean our holy places, to honor and respect our holy places, and to extend that same principle in our life wherever we are. When you go on in the altar in the morning and you do your puja and your seva and your japa and your kirtan, you're preparing yourself to engage that energy wherever and whatever you do in the world. And similarly, when we visit the holy places of pilgrimage, if we really establish this principle in our lives, together we are going to restore the beauty of Krishna's holy places, of Radharani's holy places. Then we become empowered to apply that same principle wherever Krishna's nature may be. The only thing that's really lacking in this world, it's not money or industry, it's compassion. If we can't be compassionate for our common mother on behalf of our common father, then what is really the extent of our compassion? So I am hoping, I am praying that from today we come to another level together. Srivats Goswamiji was saying last night, there was maybe about 10 people gathered at Rupa Goswami's Samadhi Mandir representation. And he said, if just the people here now take it seriously, we could change the world. And it is that wisdom, that insight, that inspiration that will change the world. So let us all communicate and in whatever big or small ways make plans to be examples of people who really care. Thank you very much. Thank you very much, His Holiness Radhanath Swami Maharaj. As Dr. Aditi comes forward to offer a vote of thanks, I would like to announce that for all the counselors who have come with Baldev Prabhu, registered with Baldev Prabhu, the prasadam will be at Mahaban, along with all the other guests who are staying overnight. Those who have the brown band and come for the day visit, others, it is at Lalita Bhavan prasadam. And for those special guests who are with us, with Haripriya Mataji and Mohan Vilas Prabhu, Prabhupada's disciples and other guests, the prasadam will be at the Satsang Bhavan auditorium. Once again, my deep gratitude to His Holiness Radhanath Swami Maharaj for bringing out the message of harmony in bhakti so beautifully and summarizing the essence of the entire conference. On behalf of today's conference, I would request Dr. Aditi, who heads our Sustainability Research and Education Wing at Govardhan Eco Village, to offer a vote of thanks.
So with a heart full of gratitude and full of self-reflection and intrigued thought of how we can imbibe each principle that we have got today and implement all of that in reality, I stand here to present vote of thanks on behalf of the whole team of GEV and sustainability, particularly Vasudev Prabhu, Ganganarayan Prabhu and Gaurang Prabhu. श्री पद्मनाभ आचार्य जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. You have given important detail that Krishna himself is a great environmentalist and that he showcased it by bringing out the importance of Yamuna and Govardhanji. You have reminded us about beautiful gifts that we have as rainwater and that we have responsibility to keep it clean. You have very mystically brought out the point that plastic is Hiranyakashipu and that we need to really take down this demon. We are very, very grateful to Dr. Navaljeet Kapoor ji, and we appreciate what he has brought to us, the importance of Govardhan Eco Village, and that we have the responsibility of being connected with youth and serving for better world. We are grateful to His Grace Revati Raman Prabhu. Thank you that you reminded that Govardhan Eco Village is the manifested heart of Radhanath Maharaj, and that miracles manifest with devotion, and that hearing can bring out that miracle. We are very, very grateful to Srimati Chitra Iyer ji, how poetically and artistically you shared the detailed observations of how plant gets life from Mother Earth. You brought out the model of your ashram, which was built on the principle of harmony. You shared with us the story of Buddha, the self-reflection where it is needed, and how low-impact tourism is the need of the hour. We are grateful to His Grace Madhavanand Prabhu, very scholarly that you brought out how we have to ensure that the product that we have wrongly made, that is garbage, how we clean out this particular product out of this world. You mentioned that the consciousness matters, and that as Dhamvasi, service is the only way that we can be connected with the Dham. And that the seva is to keep it clean as it was. Very grateful to Acharya Srivatsa ji. In fact, all of Gaurang Prabhu has very nicely summarized how valuable insights you have shared with us. Thank you for sharing with us the importance of a dreamer, a green pilgrimage. You also brought out that we need the green god, that is Giraji. You brought out the importance of the green path of worship, green spirituality, the green religion, the importance of green architecture and green metaphysics, which is foundation for all of these. It's all taken very well, and we would ensure that we follow these principles as we design our projects and programs towards improving the manifested state of holy places. We are very, very grateful to you, Maharaj. Thank you for sharing the story of Dukhi Krishna, who is none other than Shyamanand Goswami ji and Pratap Rudra Maharaj, and how you brought in the parallels between the two of sweeping with love and being reciprocated by Radharani and Chaitanya Mahaprabhu themselves. Thank you for reminding Srila Prabhupada's instructions that in Vaishnavism, cleanliness is godliness. Thank you for sharing again the purpose of that we are
gathered here to honor and clean holy places. Our common mother coming from, on behalf of our common father, that we have to reciprocate to Mother Earth. We are grateful to all of the guests who made it a point to invest time with us today for the Green Pilgrimage Conference. And nonetheless, I thank each and every soul here for being here to celebrate Green Pilgrimage. Thank you. And I also wish to thank the main sponsors for today's conference, Dr. Sumanta Rudra from Bhaktivedanta Research Center, and also Rag Jagannath Prabhu, Ranjit Daspuria from Bhubaneswar. Let us express our gratitude by loudly chanting. Now I request all our 6 speakers to come on stage.
नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी इस हरे कृष्णा टीवी की तरफ से प्रस्तुति में सीधी बात प्रभु जी के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा कंटिन्यूएशन जैसा लग रहा है और जैसा कि आप जानते होंगे कि आज का टॉपिक भी बहुत कुछ हमारे आगे की जर्नी से रिलेटेड है। मृत्यु के बाद क्या होता है और स्पेशली मृत्यु के बाद 1 घंटे के अंदर क्या होता है। तो ऐसा एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुका है और